understanding of that thing and a greater commitment to do that thing if you like doing it, then when you've seen somebody else do it, please understand, then when it is tasty because my friend tells me who's a very credible person. Oh, direct experience. For example, you have first-hand experience with a thing. Direct experience. For example, you have first-hand experience with a thing. Now you have formed an attitude that you know this food item is very tasty because you have tasted it many times. Direct taste. Attitudes formed through direct experience. Attitude congruent behavior. The higher is the likelihood that individual shall display attitude congruent behavior. Or after placing hindi, that is full stop, you write attitudes formed through direct experience. जो डायरेक्ट समान होता है ना सर, वो हमेशा बेटर होता है. Attitudes formed through direct experience are generally stronger than those formed through indirect experience. Attitudes formed through direct experience are generally stronger than those formed through indirect experience. Direct experience. For example, you have first-hand experience with a thing. Now you have formed an attitude that you know this food item is very tasty because you have tasted it many times. Direct experience. When somebody tells you, you know it is very tasty, you will, if that person is a credible source, you will agree to what he says. Yes, he is saying it. He is known to be a culinary expert. ठीक है, इसके टेस्ट बड्स बहुत ही शार्प है, तो ये बात सही कह रहा होगा, ये टेस्टी होगा. I agree it is tasty because my friend tells me who's a very credible person. Okay, but still it will not be as strong when I have done it myself. Point clear or not? If you do a thing yourself, you have a better understanding of that thing and a greater commitment to do that thing if you like doing it. Then when you've seen somebody else do it, please understand, then when you are yourself doing it,
This is point number 1. Attitudes formed through direct experience are generally stronger than those which are formed through indirect experience. ये मतलब है सर. So wherever your chance is, देखो हर जगह तो मौका मिलता नहीं, पर जहाँ जहाँ मौका मिले तो खुद करके देखो. Please try it yourself, because if you work on someone's suggestion, it will not be that convincing as you yourself have done it. The point is this. समझ गए सर बात? Second point. Sir, how they are consistent as cognitive factor, reciprocal relation का मतलब है I scratch your back, you scratch my back. अगर तेरी पीठ में खुजली करूँ तो ये चल जाएगा, और फिर ये भी तो एक्सपेक्ट करूँगा कि तू भी तो मेरी पीठ में क्या एक घर चल दिया आपने करवा के, ये थोड़ी तो बात है. सब जिंदगी में म्यूचुअलिटी होनी चाहिए, ये मतलब है. हमेशा वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है जहाँ आप देते भी हो और लेते भी हो. Where you are, हंसने की बात नहीं. इस रिश्ते को क्या कहते हैं? She will tell us. ये बच्चे ये हंस रहे, पर मुझे पता आप गंभीर इंसान हो. आप बताएं, इसको वो कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है. आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माइन. ये मतलब है जी. समझ गए जी बात? बिलीफ और इमोशन ऐसे ही जाते हैं. जिसका आपका पॉजिटिव बिलीफ है उसके लिए आपके पॉजिटिव इमोशन होंगे. जब आपके पॉजिटिव इमोशन पैदा होंगे तो पॉजिटिव बिलीफ पैदा होगा. अब आपको बताया सर अपने तजुर्बे से क्या आता है, पहले बिलीफ या इमोशन? इमोशन पहले आते हैं. कैसे एग्जांपल बताएं? आपके पहले इमोशन आ गए, उसके बाद वो भी आ गए. ये कहता है जी पहले इमोशन आता है फिर मेरा बिलीफ चलता है. और एबनॉर्मली बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने. एबनॉर्मली कभी कभी दिमाग काम करता है और नॉर्मली वैसे इमोशन काम करते हैं. देखो जो आप कह रहे हो ना, बात जो है आप थोड़ी सी हंसी के फ्रेमवर्क में कह रहे हो और सही है. अब आप मुझे एक एग्जांपल बताएं नॉर्मल और एबनॉर्मल का, और बेहतरीन आंसर दिया आपने, इसमें कोई शक नहीं. देखो इन्होंने बोला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में ये आंसर देने का भी तरीका हो सकता है. जब मैं आपसे कह रहा हूं आई क्रिएट इन यू fear of me. मैंने पहले आपको डरा दिया and then convinced you that why you need to obey the laws. तो इमोशन पहले आया नहीं आया कि यहाँ बड़ी मार पड़ेगी अगर रूल तोड़े तो. If you break the rules, you will be beaten. So I am creating a fear. And then I told the person why rules need to be obeyed. So what has come first? Emotion. दूसरी बात आपके उम्र के हिसाब से ये स्टेटमेंट है ना, लव इज ब्लाइंड, यार अंधा होता है. ये स्टेटमेंट व्हाई लव इज ब्लाइंड इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन. इमोशंस आर रनिंग. समटाइम्स यू टेल अदर्स आल्सो आई एम मेट द बेस्ट पर्सन इन माय लाइफ. ऐसा कभी हो नहीं सकता बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ मेनी मोर पर्संस यू विल मीट एंड दे माइट आल्सो बी बेटर देन दिस वन. और ये क्या हो रहा है इस समय? इमोशन जोर मार रहा है. ये इमोशन है. इन्होंने कहा ज्यादातर लोगों के इमोशन पहले आते हैं, बिलीफ बाद को आता है. इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव नो कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस. द पॉइंट इज
the reasons behind various addictions is poor emotional control. अगर इमोशनल कंट्रोल हो तो एडिक्शन हो गई, इमोशनल कंट्रोल पुअर है। और इसी का एडवांटेज ज्यादातर कंपनीज जो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है वो लेती है। उन्हें पता है यार एक बार ये पीना शुरू करेगा तो 2-3 बोतल खत्म करेगा। इसका क्या है, इमोशनल कंट्रोल नहीं है। आप सोचिए, बोला जाता है फर्स्ट मैन टेक्स द ड्रिंक देन ड्रिंक टेक्स द मैन। पहले आप शराब पीते हो फिर शराब आपको पीती है। वो क्यों पीती है? क्योंकि शराब पीने में इमोशनल कंट्रोल हो जाता है लॉस। तो फिर जब लॉस हो गया तो सर आप तो नशे के गुलाम हो गए ना, ये मतलब है। पर आदमी को होना क्या चाहिए, जो ये नॉर्मल बता रहे वो सुप्रीमली नॉर्मल है। और वो ये है कि द बिलीफ शुड कम फर्स्ट। फर्स्ट आई शुड थिंक एंड देन आई शुड फील। जैसे कि आप कहते हो आई लव माई कंट्री, बट यू मस्ट नो द रीजंस आल्सो व्हाई यू लव योर कंट्री। जैसे आप बोलते हो इंडिया इज अ लैंड ऑफ एथनिक डाइवर्सिटी एंड आई लव मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, सो देयरफॉर आई लव माय कंट्री। तो यहां बिलीव है ना सर? पहले यू अंडरस्टैंड दैट वी हैव गॉट ग्रेट कल्चरल हेरिटेज, अ ग्रेट हिस्ट्री बिहाइंड अस। आई टेक प्राइड इन दैट हिस्ट्री दैट वी हैव। तो ये क्या आ रहा है, बिलीव पहले आ रहा है। और जो आदमी कह रहे नो आई लव माय कंट्री, नो रीजंस टू बी गिवन, love is love. Now this is where emotions are coming and no belief is present right now. Are you getting my point? This is exactly the situation. But eventually some belief will be tied. कोई ना कोई belief associate हो जाएगा। इस तरह से काम होता है सर। और जब मैं बच्चों को बतौर टीचर ये समझा रहा हूँ कि हमें वातावरण को क्यों प्रिजर्व करना चाहिए, क्यों कंजर्व करना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उनका बिलीफ कंपोनेंट चला रहा हूँ। सपोज आई टेल माई स्टूडेंट्स the dangers associated with environment pollution. If I tell them the dangers associated with environmental pollution, okay, then in that case I am creating beliefs in them first, and thereafter the emotion and motivation to carry out action to conserve the environment. But if I tell them, if I scare them, see, an average Delhiite smokes 20 cigarettes a day. His lungs are completely destroyed. So what I am doing here first? I am presenting emotions first, followed by the need to protect the environment. That's how it is. Attitude specificity, second factor. Attitude specificity. 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 Now here you can write specific attitudes are more effective predictors of behavior than general attitudes. General attitude is what would you like to have, something hot or something cold.
And specific is when you say, well, I will like to have something cold, but in cold, I will like to have cold lassi. And that too salted, not sweet. So you are being specific. अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब आपसे मैंने कहा कि क्या पियोगे गर्म या ठंडा, आपने कहा कि मैं तो भी ठंडी चीज पीऊंगा और मैंने आपको लाके कोको कोला दे दिया, तो हो सकता है आप ना पिए क्योंकि आपको लगेगा साहब ये कोको कोला तो एरिएटेड ड्रिंक है, ये तो स्टमक में जहर पैदा करता है, मैं नहीं पीऊंगा। आप समझ रहे ना बात? आप तो मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहिए ना। तो स्पेसिफिक एटीट्यूड्स आर बेटर प्रेडिक्टर्स ऑफ बिहेवियर देन जनरल एटीट्यूड्स। अब थर्ड पॉइंट, एटीट्यूड रेलिवेंस। एटीट्यूड रेलिवेंस, और यहां आप लिख ले एटीट्यूड रेलिवेंस में ग्रेटर is the significance of the given attitude in the realization of the cherished goal object. The higher is the likelihood that we shall display behaviors that are in line with the existing attitudes. That are in line with the existing attitudes. अब देखिए सर, मैंने आपसे बोला था, we hold an attitude because it performs some function for us. The next thing we will undertake is the attitude functions only. But you will not hold anything without functional relevance. अब sir, for things that are useful for us, we will have positive attitude. And things which are less useful for us, we shall have negative attitudes. For the things that are useful for us, we have positive attitudes. And the things which are less useful for us, we have negative attitudes. For example, let us take an example of you wanting to clear civil service examination and become IAS officer. So civil services is a cherished goal for you. The goal you cherish. The goal which you are desperate to accomplish. समझ गए ना? ये वो गोल है जो आप चाहते हो। अब जो सिविल सर्विसेज के गोल को अचीव कराने में मदद करेगा, वो है कोचिंग। Now suppose you think that coaching is important for you to achieve the goal of civil services. Suppose you think so. So you will have positive attitude towards coaching or not? भाई जो हमें अपने लक्ष्य के पास ले जाने में मदद कर रहा है, उसके लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना लाजिमी है। We will have positive attitude towards all those things which will take us towards our goal. The point is this. And now, because for coaching you have positive attitude, so that means you will not miss any class that is held by the given coaching institute. Why? Because you believe that coaching will enable you to pass civil service examination, and civil service examination is one you are desperate to pass. So you will display attitude congruent behavior. You have positive attitude towards coaching, and attitude congruent behavior is attending the coaching class. And you will attend the coaching class because you believe the information which you will get when you attend the class will enable you to reach your cherished goal, and that is to clear civil services examination. ये मतलब है इसका। हर वो चीज जो आपको आपके गोल के समीप या नजदीक ले जाएगी, उसके लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, नंबर वन। और आप कोई ऐसा बिहेवियर नहीं दिखाओगे जो उस एटीट्यूड के विपरीत हो, क्योंकि विपरीत दिखाने का मतलब यह है कि आप कोचिंग, आप जो गोल से महरूम रह जाओगे, आप गोल अचीव नहीं कर सकते। समझ गए ना बात आप? तो इसलिए वो टाइप का बिहेवियर आप नहीं दिखाओगे। दैट इज नॉट एनीथिंग दैट विल इनेबल यू टू रीच योर गोल, फॉर दैट यू विल हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। And since that goal is very valuable for you and you are desperate to reach that goal, so you are unlikely to display any behavior that will prevent you from reaching your goal. The point is this. So we have attitude strength also, attitude specificity also, and attitude relevance also. Now the fourth point, attitude accessibility.
attitude, accessibility. अब ये भी सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इससे आपको मैं तरीका बताऊंगा हाउ यू कैन मैनेज योर फ्रस्ट्रेशंस एंड एंगर. कई लोगों को एंगर की प्रॉब्लम होती है तो गुस्सा बहुत आता है, समझ गए ना बात आप, और हर बात पे गुस्सा आता है. तो साहब आप देखिए पहले इसको लिखिए एटीट्यूड एक्सेसिबिलिटी. द ग्रेटर इज द इंडिविजुअल्स अवेयरनेस, द ग्रेटर is the individual's awareness regarding his underlying attitudes. The higher is the likelihood that he shall bring them into is the likelihood that he shall bring them into focus before the behavior is displayed. He will bring them into focus before the behavior is displayed. And the stronger is the attitude behavior link. Stronger is the attitude behavior link. The best way to control your actions is to think before you act, and not act and then think. There are three varieties in market. One who think before they act, second who think after they have acted, third who act and never think. Third variety is lower order animals, higher order people, lower order animals. But the highest animals are those who think and then act. देखो आपको मैं बताता हूँ, तीन चार चीजें आपको इंटरनलाइज करनी है इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए. नंबर वन, that I will not have any expectations from other people. The worst expectation that you can carry is to assume that the other person will act the way you want. But if you can convince yourself that even you have not acted the way others wanted, so how can you expect that they will act the way you want? So it is always better. Now how to make sure that this type of low order expectation becomes the order of the day? I tell you sir, you become what you think all day long. So you verbalize to yourself time and again. Before meeting any person, you have to verbalize. I am going to meet him with my business proposal, but I don't expect anything coming out of this meeting. And even if it comes out positive, I will neither be very happy or excited. समझ गए ना बात? This is the way it is. For example, I know that there is a person irritating me, and I know his behavior make me lose my temper. But if I tell myself that the world knows me as a peaceful person, and by falling in his trap, by showing aggression, I will only tarnish the image which I built over the years. So even when I feel like displaying aggression, I refrain from it, because I have allowed my beliefs to dominate. Aristotle said once, self-knowledge is the beginning of all wisdom. The problem with the people is that they have very poor knowledge about themselves. देखो इस मामले में आप और मैं दोनों गिल्टी हैं. We are outward focused individuals. We have tried to know what the world thinks about us, but we have hardly tried to analyze what do we think about ourselves. We hardly have in life what is called as me time. The person is never with himself. As a result, he grows up into the individual with very poor knowledge about himself. That is the point. Self-knowledge is the beginning of all wisdom. That is what Aristotle said. So, you see, most of us are likely to die as very unwise souls.
because we have never tried to know ourselves. One very great thinker, a psychologist, is named as Carl Jung. Jung. जंग नाम होता है, जर्मन है, यूंग है, यूंग मतलब यंग। उन्होंने एक बात बोली जो कि मुझे बढ़िया लगी, और वो ये था, anything in you that irritates me, anything in you that irritates me does remind me something about myself. Does remind me something about myself. That means if you can have the ability to irritate me, then it clearly reflects I am not in control of myself. Because if I was in control of myself, I should not have been irritated by you. It implies that I am still work in progress. I am not finished product yet. In the life of yours and as well as mine, there are some unfinished businesses. जिंदगी में ना ऐसा कोई नहीं है जो अपने बिजनेस को फिनिश कर पाए। उसका रीजन है सर्कमस्टांसेस भी बिजनेस को फिनिश नहीं कर रहे थे। कई बार जैसे कोई क्लोज रिलेटिव की अनटाइमली मौत हो गई, कोविड में तो हमने देखा ही था ऐसा। Many families lost their members untimely. So this leaves an unfinished business. Or some of the goals which you have set for yourself, you don't realize. Unfinished business. Some affair of yours which did not culminate in marriage. Unfinished business. देखो, तभी मैं कहता हूँ, whenever you enter into some kind of association with other person, don't expect too much out of it. Why? Because how other person will behave is not completely in our hands. Partially it can be, but not completely in our hands. But an unfinished business is created if the other party leaves you midway. Unfinished business. And this will continue to hurt you, bleed you all life. These are sources of irritation. Whenever some matter comes which brings this unfinished business into action, I lose control over myself. यही reason है control lose कर दिया. And fewer are the areas of unfinished business, the more control the person will have over his life. The point is this. पहला काम तो आपका ये है, आप लोकेट करो कि क्या अनफिनिश बिजनेस आपकी लाइफ में है। दूसरी बात, मैं वो बिजनेस क्यों नहीं फिनिश कर पाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट मी बिकॉज ऑफ माई बैड हैबिट ऑफ पुटिंग माई फिंगर इन माई नोज एंड देन शेकिंग हैंड। देखिए भाई, देखो बहुत ही गलत बात है। अगर अपनी नाक में उंगली डाल के हाथ मिला रहे हो तो बहुत ही बदतमीजी है, और अगर जबरदस्ती दूसरे की नाक में उंगली डाल रहे हो तो और भी बड़ी बदतमीजी है। आप देखिए, मैं एग्जांपल इसलिए इस टाइप का यूनिक बनाता हूं ताकि सारी जिंदगी याद रहे। साइकोलॉजी का पहला नियम है, द मोर बिजार आर द एग्जांपल्स, द बेटर दे विल बी रिमेंबर्ड। इसलिए मेक द एग्जांपल एज बिजार एज पॉसिबल। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल पुट द फिंगर इन योर नोज, देखो इस मामले में हम हर एक ने हरकत की है। यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं उनमें से कोई क्लेम नहीं कर सकता साहब हमने तो अपनी उंगलियों से अपनी नाक को छुआई थी। ऐसा कोई आदमी नहीं है। समझ गए ना बात आप? सर इसलिए आप देखो, ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। बताओ कम, मैं यहाँ क्लास पढ़ा रहा हूँ पूरे जोर शोर से, और तू रोटी खाने की बात कर रहा है। और अच्छा देखिए, आप किस चीज के प्रोडक्ट हो, मान मूत्र के, आपके अंदर मनी तो घूम रहा है भाई, 2-2 किलो 3-3 किलो का मन लेके घूम रहे हैं। ये फैक्ट है लाइफ का। जो सुबह साफ होके नहीं आया ना उसके अंदर भी इट इज सेड, व्हेन यू होल्ड इट इन योर हैंड इट इज फूड, व्हेन यू पुट इट इन योर माउथ इट इज शिट। तो उसके अंदर शिट बनेगा, बचेगा तो नहीं ना। अब क्या होता है, व्हेन यू हैव अ थॉट लाइक दिस, अब मैं इसका प्रैक्टिकल एडवांटेज बताता हूं। if somebody vomits on you, you will not lose your temper. Rather, you will have empathy. That probably he was having some discomfort, he could not manage it, and that is why he has done it. You will render to him a helping hand, rather scolding him for his conduct. आप समझिए सर, ये डिस्प्ले ऑफ एम्पैथी होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस फिनिश्ड है। हम ये जानते हैं कि ये किसी कष्ट में होगा, इसलिए इसने ये बात की। He must be in some state of distress.
That is why he has done it. Are you getting my point, sir? Other person will shout at you. 90% देखो एक बात है, अपने परिवार जन के लिए तो फिर भी थोड़ी सी empathy रख ले, और दूसरे आदमी के लिए तो गुस्सा आएगा इमीडिएट। क्या अपनी ये क्या करते हैं यहाँ पे? आप समझिए सर। लेकिन अगर हम ये इमेजिन कर लें कि आज ये है, हो सकता है कल मैं भी यही बात करूं जब उम्र हो जाए तब क्या मैं चाहूंगा कि ये लोग मेरे से ऐसे व्यवहार करें? नहीं चाहता हूं, तो आज मैं क्यों करूं? यही इमोशन है। दिस इज कॉल्ड एज ब्रिंगिंग एटीट्यूड इनटू अवेयरनेस। दैट इज व्हाई महात्मा गांधी सेड, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। द लॉजिक इज दिस वन, इट्स अबाउट अवेयरनेस। No, it is not so difficult to do, I will tell you. You think it is too difficult, but the point is, everybody has a priority. Now the serious question here is, do you have a priority that you want to be empathetic? I have heard many people say, भाई तुम भगवान बन जाओ, हमें भगवान नहीं बनना, हमें इंसान रहने दो, हमें गुस्सा नहीं आएगा, हम गाली नहीं देंगे, हम थप्पड़ नहीं मारेंगे, हम बदतमीजी नहीं देंगे, हमें भगवान नहीं बनना। अब ये मैं 1 मिनट में समझ गया, अनअवेयरनेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। The point is this, and also likelihood, high likelihood that they have understood that it is beyond their control, it is beyond their capacity to have such kind of good control. The point is this. समझ गए ना बात आपसे? देखिए मैं कुछ चीजें बोलता हूँ। एक आदमी ने, one person had dog as a pet. My question is, for what reason do you have that pet? अब देखिए हर आदमी का अलग अलग इक्वेशन हो सकता है डॉग से। I keep the dog because I find a reciprocal relationship between me and my dog. The dog provides me great emotions, and I am also ready to do service to my dog. So if I take my dog out for a morning walk, I make sure that if it makes the place unclean, I ensure that I clean it up because I love my dog and I am a responsible citizen. Others will take it as a style statement so that people are overawed. You know what kind of expensive dog he has. Many people have pet for this reason also. Still other people will have a dog because it provides some kind of service. At night they leave them out in open so that the intruders do not come. So you should have this clarity. This is called as finishing your business. For what reason I will have a pet? I will tell you, you ask most pet owners. Is it because of the snob value you keep the dog? 99% of them will say never. But more than 50% keep it for snob value. Please understand. So when it comes to cleaning the dog shit, they will not do it. Most of the time, it will be their servant who will take the dog out for the walk. So where is the commitment to the animal? Please understand like this. ये question difficult question है. जब आप अपने से सवाल पूछोगे, तो then in that case you will be able to finish the business. The point is this. अब आते हैं last point, and that is situational factors. Situational factors. और यहाँ पे आप लिख ले, ये बहुत अच्छी बात है. If you have adopted a dog and it does, you do all services that are required. It's a great thing. This also tells, आपको बताता हूँ, having a pet is the best way to develop empathy in your children. Because the love that animal offers to the child and the kind of attachment child will develop with the animal will always ensure that the child grows up into a kind human being. This is well researched area. I am not saying it out of imagination or because I am also an animal lover. आप समझ रहे हो बात? लेकिन कुछ सवाल ना कैसे मैं बोलता हूँ आपसे. One person is an animal lover. He loves his dog but slaughters chickens. Enjoys eating chicken. अब देखो, if your dog eats the chicken, it is fine. Dog is a canine. But if you are eating chicken, then I am also saying it is fine. I have no issues in it because everybody has his own choice. But you must understand also that in a way, if a more vegetarian diet can be as fulfilling as non-vegetarian, so there is not a compelling need to have non-vegetarian diet. कुछ लोग कहते हैं जी हमारा ना कुत्ता भी जो है वेजिटेरियन है, हमने इसे मीट खाने नहीं दिया, तो तूने उसे बर्बाद कर दिया. भाई वो तो खा सकता है, वो तो खाने के लिए बनाया है, पर
आपका ये जो सर डेवलपमेंट है वो तो कार्निवोरस नहीं है ना, वो बोलते तो हम सब ओमनिवोरस ही है, मीट नॉनवेज एंड वेज बोथ, बट दैट इज हाउ इट इज. My understanding is this. Now, situational factors, we are less likely to display our true attitude we are less likely to display our true attitude if we believe that others hold a different attitude regarding the same object, and we have high regard for those others. We have high regard for those others. मतलब ये है साहब, आपका आपका एक विचार है, मतलब आप जो है एंटी मोदी हो, सारी एनवायरमेंट जो है वो प्रो मोदी है, तो आप अपनी एंटी मोदी एटीट्यूड को थोड़ा दबा दोगे. वैसे आजकल तो दबाने में ज्यादा है, ये है साहब. व्हाट यू नॉट, क्योंकि आप नहीं चाहते कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट शुड नॉक योर डोर, तो आप तो ये बोलोगे मोदी जी की जय, जय जी जय, गांधी जी की जय चले जय ना बोले, क्योंकि वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की लाइक है भाई, यहां आ सकती है. द पॉइंट इज दिस, समझ गए ना बात सर? तो ये हमारा एटीट्यूड है. दिस इज हाउ इट इज. प्लीज अंडरस्टैंड. अब हम आते हैं इस रिश्ते को थ्योरी के रूप में दिखाने के लिए. प्लीज एंजॉय these two diagrams which I am drawing. There are theories to explain attitude behavior relationship. There are two theories, no need to remember the theory, just diagrammatic presentation. Number one, theory of recent action. सिचुएशनल क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? हद हो गई. इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अब मैं शादी में गया, आप भी गए, मैंने तुम्हारी शादी में 51 रुपए देने की सोची थी, ठीक है? अब क्या हुआ? मैंने इनसे पूछा, ये कहे सर मैं तो 2100 दे रहा हूँ. मैडम से पूछा, मैडम ये सर मैं तो 2100 दूंगी. सर कह रहे मैं 2100 दूंगा. अब मैंने 51 रुपए लाया तो मैं चुप हो गया. मैं कह रहा बेइज्जती हो जाएगी, ये तो बहुत डिफरेंस निकल आया. देखिए ये, तो अब मैं नहीं बताऊंगा ना कि मैं भी 51 देने की सोच रहा था. ये मतलब है साहब, इज्जत थोड़ी ना नीलाम करानी अपनी. ऐसी बात है भाई, सिचुएशन है ना जहां से बोला जाता है व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू. ये ऐसा, तो गंगा गए तो गंगाधर, और जमुना गए तो जमुनाधर, और धरे गए तो धराधर. क्या बोले साहब? देखो सिचुएशनल फैक्टर गुड और बैड की बात नहीं है, पर आदमी ना एनवायरनमेंट से ही गवर्न है थोड़ा बहुत. आदमी क्या करेगा उस सिचुएशन में? सोचेगा यार क्या पता 51 रुपए बहुत कम का अमाउंट हो. अब कुछ लोग होते हैं ना, कोई विश्वास रखते हैं ना, हम लेते हैं ना देते हैं. neither we take anything in our marriage nor we give something in someone else's marriage. But then I convince you, बेटा देखो तुम कन्यादान कर रहे हो, कन्यादान 51 रुपए का नहीं होता, और तुम्हारी जेब में इतनी कैपेसिटी है कि तुम 2100 रुपए दे सको, तो दे दो ना यार. इतनी कंजूसी क्यों करते हो? ये मतलब है, समझ गए ना? या तो आदमी के पास आर्थिक विषमता हो, he does not have enough money, तो उस सिचुएशन में नहीं दे पा रहा तो बात समझ में आती है. लेकिन अगर प्रॉस्पेरिटी है और ठीक ठाक है तो दे तो देना चाहिए, और खासतौर पे जहां कन्यादान नहीं हुआ हो वहां तो जरूर ही देना चाहिए. द पॉइंट इज दिस. अब थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन देखें साहब. प्लीज सी द साइज ऑफ द थ्योरी.
This is the size of the theory. Please see. Evaluative beliefs about the consequences of behavior. यार देखो ऐसा है, कुछ ना काम जो है थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डाल दो। आप मुझसे पूछ रहे सर आज आपकी लास्ट क्लास है, मैंने छूटे कह दिया 3 टॉपिक कर रहे हैं, घंटा भर हो चुका, भी 3 में से एक ही टॉपिक चल रहा है, तो मैं लास्ट क्लास कैसे हो सकती है? थोड़ी सी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस भी तो लगानी चाहिए यार। अब बार बार थोड़ी ना पूछोगे घड़ी घड़ी देखो मेरे पे इंटरेस्ट तुम्हारा है या नहीं है। जब 4 बार कह दिया यार तुम्हारे साथ चाय पीना चाहता हूँ तो इंटरेस्ट है ना, अगर तुमने नहीं तो चाय पीने में बार बार थोड़ी देखोगे कैसे लग रही है, पता कैसे लग रही है, गर्म है या नहीं है। अरे चाय तो गर्म ही होगी, आइस टी भी हो सकती है, वैसे चांस कम है। ये देखो बहुत नसीला एग्जांपल आने वाला है इसमें। इवैल्यूएटिव बिलीव्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर। Beliefs about how others would view one's the performance of the behavior and the motivation to comply with their views. Attitude toward behavior, subjective norms. Relative importance of attitudinal and normative dimensions. This gives rise to intention and intention gives rise to behavior. अब आप एग्जाम्पल समझें, पहले नसीला और फिर जो है लेस नसीला। देखिए साहब, वेरी गुड एग्जाम्पल। लेट अस सी। Beliefs about how others would view one's the performance of the behavior and the motivation to comply with their views. कौन है? अच्छा थैंक्स मैम। पेपर मंगाया था। थैंक्स मैम। यही है ना भैया? हाँ, इसके पैसे देने हैं न्यूज़पेपर को? नहीं भाई साहब दिलवा Attitude toward behavior. टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही यही रखो। है। हाँ भैया उस तरफ से पीछे मत करके। भाई साहब बोल रहा हूँ भैया को मंगाना नहीं होगा। हाँ नहीं वो समझ नहीं पाए थे बोलो, वो जो वहाँ रखे हुए थे वो तो दूसरे किताबें वगैरह थी। वो नहीं समझ रहा। हाँ। दूसरे हैं। हाँ हाँ लेकिन वो ये मंगाने पड़ेगा। हाँ।
ठीक है, मैंने कहा पहले उनका संतुष्ट करा दे, उनको दिखा हाँ, दिया। सही बात है भैया, आप ठीक कर रहे थे, मैं भी इसलिए बोले नहीं था यार। हम्म, तो मैंने पूछा था हमसे, हम भैया बता रहे, बोले वो काम के नहीं है, तो फिर अंदर से बोले ले आओ। हम्म। मैंने इसका तो कौन सा है, मैंने कहिए कोई वादी मंगाया है, तो ये नहीं, कहीं जीके के लिए ये खोल के। फिर कहा था कितने के आए, हम कहा दुकान में जाओ, 250-300 के आए, ज्यादा थोड़ी आता है, मान लो। बाय बाय। Beliefs about how others would view one's performance of the behavior and the motivation to comply with their views. Attitude toward behavior, subjective norms. Relative importance of attitudinal and normative dimensions. This gives rise to intention and intention gives rise to behavior. अब और एग्जांपल समझे, पहले नशीला और फिर जो है लेस नशीला। देखिए साहब, very good. Evaluating beliefs about consequences of behavior. ठीक है सर है? अब जैसे हमारे एग्जांपल है, हमारे दोस्त हैं, इनका एग्जांपल है, our friend here was Indian ambassador in Uganda. Ambassador थे, Indian diplomat in Uganda. Ambassador में तो शादी नहीं होती नहीं, उम्र काफी रहती है. Indian diplomat in Uganda. He developed special soft corner for a Ugandan girl who was also the daughter of Ugandan president. मतलब बड़ी जगह हाथ मारा है इन्होंने, छोटी जगह हाथ नहीं मारा इन्होंने. Now, evaluating beliefs about consequences of behavior. Everything was fine with her, but the point is, our friend here is 5'8", she was 6'9". एक आध फीट का फर्क था इनके और उसके बीच में. समझ गया ना बात? He was okay physically. She was in Ugandan wrestling team, physically much more powerful. But and there was then language barrier also. He understood that there will be some challenges in the marriage, but then they had between them triple L: love, love, and only love. Now, evaluating pros and cons, he will decide to go ahead and marry her if pros are more than the cons, and vice versa. Suppose pros are more than the cons, he decided to marry her. Now he broke the news to his father. His father hails from a village in Haryana. हल्ला मच गया साहब, क्या करा तू? इसलिए एग्जाम पास किया था. I never thought he would become intercontinental ballistic missile. Okay, ICBM है तू तो. मैं कहा पापा पर दिल से मजबूर का खबरदार.
फिर पिताजी ने एक तो रिलेटिव को बताया, उनको तो समझ नहीं आया। उन्होंने कहा ठाकुर जी गाली मत देना, क्योंकि द लास्ट पार्ट वाज स्लाइटली कंफ्यूजिंग, यू कांट डील। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज। दे वर कंफ्यूज्ड कि ये क्या शब्द बोल रहे हैं यार। उन्होंने कहा खबरदार, पिताजी की आदत भी थी थोड़ी पॉज लेनी थी, यू के बीच में पॉज ले लिया, दूसरा गुस्से में आ गया, ये कौन सा कंट्री है, इज दिस अ कंट्री और दिस इज अ फाउल वर्ड। देखो साहब, पिताजी बिल्कुल अगेंस्ट है, माता जी ने कहा छत से कूद जाऊंगी। समझ गए ना, ब्रदर ने कहा भैया हमारी शादी नहीं होगी अगर तूने कर ली वहां, या तो हमें भी वही दिला दे। ओके, अब आप मुझे बताएं, पूरी की पूरी विलेज अगेंस्ट टाइम थे, तो सर अब आप ही बताएं, आप शादी करेंगे या नहीं? आप बच्चे तो बड़े सुशील हो, आप बताएं बेटा। अब इस सिचुएशन में शादी होगी या नहीं होगी डिपेंड करता है, एटीट्यूड टुवर्ड बिहेवियर इज स्ट्रॉन्गर देन सब्जेक्टिव नॉर्म्स, और सब्जेक्टिव नॉर्म्स प्रिवेल ओवर एटीट्यूड टुवर्ड बिहेवियर। देखो आइडियल सिचुएशन तो तब होती जब पिताजी खुद ही इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे। योर मदर वाज फ्रॉम रवांडा, पिताजी ने पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट घूम कर रखा, उस केस में तो जरा भाई मैं बेटा गो अहेड, हम तो विदेश यात्रा करके ही अपना जीवन सफल करते हैं। इस सिचुएशन में तो बढ़िया है, पूरी सपोर्ट होती। तो ये था हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स बिहेवियर, ये था सब्जेक्टिव नॉर्म। जो सब्जेक्टिव नॉर्म है ना, इट इज इक्वल टू एनवायरमेंटल फैक्टर, जो मैंने एटीट्यूड में बताया था आपको। बट इफ सब्जेक्टिव नॉर्म एंड एटीट्यूड टुवर्ड बिहेवियर आर अपोजिट टू ईच अदर, which of the two is more powerful will decide what kind of behavior we exhibit. ये हमारे एक मित्र कह रहे सर, he will improve foreign relations. India's international affair will become better after his affair. ओके, ये भी है सर, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये इशू है, दोनों में टकराव है, एटीट्यूड टुवर्ड बिहेवियर, सब्जेक्टिव नॉर्म्स। Ideally speaking, if they are supportive, no problem at all. But if they are against, which of the two is more powerful? अब देखो ये ह्यूमैनिटेरियन दल तो हो गया लाइट मामले में समझने के लिए। अब आप एग्जाम्पल देखिए इसका रियल लाइफ करप्शन, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड एरिया है। Evaluative beliefs about consequences of honest behavior. In India, honest people are punished, they are transferred, nobody likes them because everywhere there is dishonesty. भाई गवर्नमेंट ऑफिस में तो इस टाइम 99% करप्शन चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आफ्टर द चेंज इन डिस्पेंसेशन फ्रॉम बीजेपी टू कांग्रेस, देयर हैज बीन नो चेंज इन करप्शन लेवल्स। पीपल कंटिन्यू टू indulge in corruption with impunity and no sense of shame. And the more commodification there shall be in the world, more corruption will take place. क्योंकि हर एक आदमी को सर गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती, ये है प्रॉब्लम। अब आप देखिए, एक आदमी ईमानदार है, वो कहेगा यार मैं परेशान भी हो रहा हूँ, लोग सरकार भी मुझे परेशान कर रही, हर तरह से मैं परेशान हूँ, तो मैं क्यों ईमानदार हूँ? मैंने जो सर्विस है परेशानी के लिए तो ज्वाइन की नहीं, परेशानी पैदा करने के लिए जीवन में, इसलिए तो ईमानदार लोग नहीं है। कई लोग बेईमान भी होना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इवैल्यूएटिव बिलीफ्स ऐसे है कि ईमानदार रहना मुश्किल हो रहा है, ये इशू है इसमें। चलो आपने मान लिया, आपने कहा चलो मैं हर चीज को दरकिनार कर दूंगा, मैं अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। You decided to remain honest. You decided to go whistle to expose corrupt people. Now what happens? Your family is against your honesty. कई जगह तो the wives encourage husbands to become corrupt and vice versa. ऐसे भी लोग हैं। आपको मैं बता दूं सर, unfortunate truth is this, that everybody loves money, and not just small money. They want big money. Please understand like this. Understand like this. अब आप देखिए सर, beliefs about how others would view family against honesty, government against honesty, children against honesty. So subjective norm is against honesty. The word subjective is added because for each individual the norm value will be different. मतलब ऐसा है ना, कुछ लोग होते हैं वो अड़ियल होते हैं, वो कहते हैं साहब
मर जाऊंगा लेकिन बेईमान नहीं होगा। तो परिवार छोड़ता है छोड़ दे, माँ बाप छोड़ते हैं छोड़ दे, सरकार छोड़ती है छोड़ दो, लेकिन मैं ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। समझ गए ना बात आप? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर मैं सरकार को बदलना पाया तो मैं भी बदला नहीं, सरकार भी मुझे बदल नहीं पाई। मैं इस ईमानदारी से काम करता हूं। समझ गए ना बात आप? आई कुड नॉट चेंज द सिस्टम, बट इवन सिस्टम कुड नॉट चेंज मी। द पॉइंट इज दिस। सो अब आप देखिए यहां पर सब्जेक्टिव नॉर्म जो है, even when the norm is in favor of corruption, your commitment to that norm is very weak. Because you believe that your attitude shall prevail, no matter whatever the situation is. You got the point or not, sir? This will lead to intention to remain honest, eventually behavior of honesty. जो मैंने आपको समझाया था ना, मेवा congruent behavior, even when environmental factor is unsupportive, वो केस है ये. Environment is not supportive, but your meva is very powerful. So meva prevails over the environment. And the person remains honest. अब ये क्लासिक एग्जाम्पल है गांधी जी. Gandhiji's beliefs that all people are equal. Government of South Africa practices apartheid. Are you getting my point? So it practices, the norm was to mistreat colored and black people. Mahatma Gandhi stood for equality. Gandhiji was internally very strong, so he did not submit to the norm that prevailed in the society then, allowed his attitude to prevail over subjective norms, and the outcome was movement against the discriminatory practices of the government and eventually change. The point is this. That's it. This is theory of result action. अब आते हैं दूसरी थ्योरी में, and that is called as theory of planned behavior. Theory of planned behavior. ये देखिए साहब, attitude toward behavior, subjective norms, and perceived behavior control. Attitude toward behavior, subjective norms, and perceived behavior control. These two dimensions are same as the last theory. The third dimension is a new addition, perceived behavior control. आप देखिए, and arrows have become bidirectional, something which was not there in the last theory. And perceived behavior control is such an influential factor that it directly affects the behavior. It has direct influence on behavior, perceived behavior control. Direct influence. Now this theory explains why people do not vote even when they know fully well that exercising their franchise will make democracy strong. Or it explains our tepid response to Swachh Bharat campaign despite the fact we realize that environment should be made clean and green. Both the things are highlighted here. अब आप देखिए, I believe that we must vote because voting makes democracy strong. So I have positive attitude towards voting. I have a positive attitude.
The government also tells me vote. My community also tells me vote. That also is true. So you have subjective norm also. Then there is perceived behavior control. Perceived behavior control implies that even when I have a positive attitude towards voting and the government also says vote and society also says vote, there is consensus that I should vote. I believe that my vote does not matter. You see, you should be convinced. You will become oriented towards action when you are convinced that by your action you can bring the change. But if you believe that your action will go waste, so then in that situation your desire for change shall not be present. And this factor is so powerful that it can directly influence behavior. भाई आपको लगता है कि मैं वोट डालूंगा, मैं नोटा में डालूंगा, अब नोटा में डालूंगा उसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो मैं क्यों डालूं साहब? या तो ये होता ना एक परसेंटेज वोट अगर नोटा में पड़ते तो इलेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज नल एंड वाइड एंड इंस्टेड ऑफ द elected representative for the time being it will be bureaucrats who will run the show. Are you getting my point? And if those bureaucrats work very well, then in that case those bureaucrats will be made the elected representatives. इस तरह का कुछ ऑप्शन होगा, तब तो आपको लगता है यार कि इनको मैं निकाल दूंगा, लेकिन उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है. वो तो एक तरह से you are just preventing your vote from being misused. The bogus voting which used to take place, I will be able to manage that. Please understand. Your vote doesn't matter. You know that there are large number of people who are poor, who will sell their vote for half a bottle of liquor, and therefore these people who are undesirable candidates will win the election. So therefore I should not waste my energy in that. Understand like this. Now there is another thing with respect to environmental, I said, I believe that environment should be made clean and green. My community says, my government says, you know, today is Swachh Bharat Day, participate in the drive. But in spite of all these things, I don't participate. Why I don't participate? Perceived behavior control. Last time I had participated, I had taken 1 week off from my office to plant 1,000 saplings. 80% of these saplings died because there was no aftercare. There was no proper follow-up. In fact, I had approached the municipal department by saying that I will water these plants. You give me the freedom to do so, the discretion to do so. The municipality said, no, it is our work. They did not grant me permission. So I could not water them. But I had to see them in front of my eyes dying. So I decided, what is the fun? When all this is sham, tomorrow the things will again be dirty. Okay, so there is no point for me to struggle so hard in my life. Perceived behavior. समझ में आ रही है ना सब बात? ये फैक्टर है. That is a factor. So everything explained here, theory of planned behavior in front of you. Very nice. That you have planted plants, that is a very good thing. But otherwise, you know, this is the reason why people get disappointed. Because ultimately, when you see your actions not producing the desired outcomes, so you feel that there is no point carrying out that action. The point is this. So, it's very important that I must see my actions producing a change. If they will not produce a change, then there is no point of my carrying out the action. The failure of India Against Corruption movement, the kind of deception Kejriwal did and the kind of disregard he showed towards Anna Hazare has broken the back of all those people who wanted our country to be full of honest people. Now nobody talks about corruption. देखो कितनी अजीब सा डेवलपमेंट हो चुका है सर. People talk about religion in 21st century and religion, not just religion, चलो religion तो ठीक है. Religious intolerance. That is what they speak about. Even the most enlightened people speak like that. They advocate religious intolerance. And nobody talks about the importance of setting environment right, which is a major threat to all of us. Gods will not come to protect us if environment
with the polluted air we breathe can cause disaster to our lungs. So there is no discussion on that. There is no discussion on importance of education. There is discussion on only religious affairs. There is no बहुत dangerous बात है ना सर. Their primary discussion is religion. आपको बताऊं पाकिस्तान इसलिए बर्बाद हुआ. In 60s Pakistani economy was doing better than Indian economy. Then they mixed religion and economy, religion and politics. Disaster came. The same disaster awaits us. The point is this. Array, you talk about kind of unemployment that is rising. You also talk about the kind of debt that we have on our head, how to reduce it. You talk about what are the reasons why people who have run away doing fraud in India have not been able to come back, neither we have been able to get some money back from those people. Be it Nirav Modi or be it Malia or another Modi, Lalit Modi. So that is how it is. These are the issues. And then there is a serious issue that if Vadra was so much corrupt, which of course I think he is, why has he not been put behind the bars? ये बड़ा सीरियस इशू है ना सर. इनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए. मंदिर कहाँ बनेगा उस पर चर्चा क्या है? मंदिर तो बन ही जाएगा. उसको इतना फैन के साथ प्रमोट करने का कोई लॉजिक नहीं है. एजुकेशन को है, एनवायरनमेंट को है, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए. प्रायोरिटी ये थोड़ी ना कि साहब आप दिए जला दिए. समझ गया ना बात आप? ये प्रायोरिटी तो नहीं होनी चाहिए ना सर. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उसको डिसरिगार्ड करो, लेकिन उसे मेन प्रायोरिटी तो न बनाओ, नेशनल प्रायोरिटी तो मत बनाओ. दिस इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम. एक खेलते हैं मंदिर कार्ड, दूसरा खेल रहे हैं कास्ट कार्ड. उनकी प्रायोरिटी कास्ट है, ये प्रॉब्लम है. तीसरा मुस्लिम कार्ड. These are the problems. और आप और मैं कहाँ आ जाते हैं यहाँ पर? We go with the feeling that nothing is in our control. Please understand. An honest Indian taxpayer is very disappointed. He feels his taxes are grossly misused. And those who run parallel economy are having field day. They are having field day. There is a section of Indian middle class who gets a salary in the check form. They are the ones who pay the taxes. Other people do cash business. They are having field day. That is how it is. Demonetization has also not curbed corruption. Rather, it has only increased it. So these are important issues, but nobody discusses them. Ultimately, what Indian middle class today is reduced to having being very powerless. Their perceived media control is poor. ये हर सरकार ने कोशिश की, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, कि मिडिल क्लास की कमर हो. क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशन बनता है मिडिल क्लास से. It is not the lower class which brings revolution. World over, it is the middle class because they suffer from the sense of relative deprivation the most. So they bring about revolution. Bring them back. You control the country and the population. That's how it is. These are the issues. So this gets finished here. Now what we take up the last part, functions of attitudes. Need or want satisfaction function. Knowledge or understanding function. Ego defensive function. And value expressive function. We start with need or want satisfaction function. Need or want satisfaction function. You can write many attitudes are formed as a result of our past rewards or punishments for saying or doing things, Once formed, these attitudes
usually continue to be useful. In helping us satisfy our needs. Our past rewards or punishments for saying or doing things, for saying or doing things. Once formed, these attitudes usually continue to be useful. In helping us satisfy our needs. Or reach our goals. These attitudes are termed as adjustive. In the sense, they are termed as adjustive in the sense that they help us to adjust to life situation. They help us to adjust to life situation or utilitarian in the sense that they help us to reach our goals. After full stop. Attitudes serving need function are likely to change when number one, attitudes serving need or want satisfaction function are likely to change. Number one, when the needs of the individual have changed. Needs of the individual have changed. And number two, after full stop, attitudes serving need function are likely to change when number one, attitudes serving need or want satisfaction function are likely to change. Number one, when the needs of the individual have changed. Needs of the individual have changed. And number two, when the individual is convinced that the new attitudes, individual is convinced that the new attitudes suggested to him can express
underlying needs better. इसका मतलब ये है साहब, when the needs of the individual have changed. Now suppose I'm suggesting to him can express his underlying that the new attitudes, individual is convinced that the new attitudes suggested to him can express his underlying needs better. इसका मतलब ये है साहब, when the needs of the individual have changed. Now suppose I run a furniture shop. I deal in wooden furniture. Wooden furniture requires felling of the trees to generate wood, which goes against our effort of protecting the environment. So I have to convince you to do some business which does not require felling of the trees. Now, one reason why you might agree to my proposal is that it could be that you have grown very old. You are no longer interested to run the shop further. Meantime, the proposal came from an environmentalist. Sir, you please shut down your shop. You will be a kind of role model to many others. Okay, not to destroy the environment. I was convinced that fine, already I am in no mood to continue. So if the proposal comes to shut down the shop, I also decide I will do. So here my need is finished. समझ गए ना, अब जब नीड ही खत्म हो गई तो फिर तो मामला ही खत्म। पर जिंदगी में लोगों की नीड खत्म नहीं होती। आप समझिए, पैसे कमाने की तो बिल्कुल नहीं, ये समझिए आप साहब। और खासतौर पे बना बनाया पैसा आ रहा है शॉप से, वो तो बिल्कुल भी नहीं। So what do? When you come up with the proposal that I shut down my shop, I say I will shut you down, not my shop. It is about my livelihood. I will not admit any attack on my livelihood. I come up with an alternate proposal. I say that sir, you deal in wooden furniture. In place of wooden furniture, you start dealing with furniture made from environment-friendly products. That is more in vogue these days. Number one, the government provides special subsidies and incentives for dealing with this in this kind of furniture. And number three, you are likely to have some kind of a tax benefit also if you sell this kind of a furniture. And with the same investment, you will have more returns. I am interested in making money and not just selling furniture is a reason to make money. If I get other chances to make money, I don't have any hesitation in doing it. Then I will easily abandon my furniture business. But here I am not even telling you to abandon your business. I am just telling you, rather than dealing with wooden furniture, you deal with furniture made up of environment-friendly products. You follow my advice. You see the returns coming. Now you are firmly into not going ahead with wooden furniture sale. You got the point or not, sir? क्योंकि अब आपको लगने लगा फायदा इसी में है। मैंने आपको एक ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बता दिया ना सर, जहां सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कि आपसे बोला साहब आप वुडन फर्नीचर पे डील करते हो जो कि एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, तो आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट से डील करो, आपको इंसेंटिव भी ज्यादा है। आपने कहा वाह क्या बात है, सो आई विल डू इट। ये मतलब है सर। नाउ वी गो टू द सेकंड फंक्शन कॉल्ड एज knowledge or understanding function. You can write as follows. Attitudes provide attitude holders to organize and interpret diverse sets of information. They provide consistency of attitudes provide attitude holders to
organize and interpret diverse sets of information. They provide consistency and clarity in our explanation and understanding of events. Therefore, this function is also called as understanding function. The knowledge function of attitude does not imply that attitudes provide a factually truthful picture. It does not imply that attitudes provide a factually truthful picture of the world around us. Our explanation and understanding of events. Therefore, this function is also called as understanding function. The knowledge function of attitude does not imply that attitudes provide a factually truthful picture. It does not imply that attitudes provide a factually truthful picture of the world around us. In fact, it provides a picture that is meaningful and understandable to the particular individual who happens to hold these attitudes, to the particular individual who happens to hold the attitude, who happens to hold these attitudes, to the particular individual. Understand? In fact, it provides a picture that is meaningful and understandable to the particular individual who happens to hold these attitudes, to the particular individual who happens to hold the attitude. After full stop, in next paragraph we write, attitude serving knowledge function are likely to change when the attitude holder is consistently exposed to the information that happens to invalidate his existing attitudes. In such situation, it is likely that these attitudes would be changed in order to establish more consistent and logical
cognitive structure in order to establish more consistent and logical cognitive structure. अब देखो इसका एग्जाम्पल. There was one collector, male, who cognitive patient. It is likely that these attitudes would be changed. In order to establish more consistent and logical cognitive structure. In order to establish more consistent and logical cognitive structure. अब देखो इसका एग्जाम्पल. There was one collector, male, who had 3 young female probationers as his understudy. He was overseeing their work. And what he found was these female probationers were not able to demonstrate high order administrative efficiency. So from his experience with these female probationers, he concluded that women are not good administrative officers. तो सामान के अंदर को हरा ही हरा नजर आता है ना, वही वाली बात है. तो सामान में अंदर वो सब कुछ हरा होता है वहां पे, तो वो वाली बात है सर. He concluded that these are not good officers. They are not efficient officers. Now what happened is that we have to change this attitude. So we exposed him to a number of situations where there were women who had come up with exemplary performance, outstanding performance. Number of situations like where women came up with exemplary performance. This kind of preconceived the notion that he had in mind. Every time shall be disproved. Now when he meets another woman, other than these 3 probationers, he expects them to underperform, but they overperform. So he thought probably my judgment was not there. Then he encountered another woman, exceptional performance. So then in that situation, he will change his position and eventually agree that while there could be some women who may not turn out to be efficient administrators, but there is equal possibility there are other set of women who may be very efficient administrators as well. The point is this. So you modify your attitude position. Yes, sir. So now what we take up is this. Ego defensive function. Ego defensive function. ये बड़ा मुश्किल फंक्शन है चेंज करने के लिए. Ego defensive. Please write our attitudes enable us to defend ourselves. Our attitudes enable us to defend ourselves against slings and arrows of life. ऐसे घुमा के पत्थर जो फेंकते हैं वो स्लिंग है. स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी तुम्हारी तरफ पत्थर फेंकेगी. तुम्हारा एटीट्यूड वो सुरक्षा कवच है जो तुम्हारे तरफ दागे हुए पत्थर एवं तीर को निष्क्रिय कर देगा. ये मतलब है सर. दैट इज व्हाट एटीट्यूड इज. तुम्हारी तरफ दागे हुए तीरों को निष्क्रिय कर देगा तुम्हारा एटीट्यूड. ये मतलब है. आपकी तरफ पत्थर दागे जाएंगे, पत्थर दागे गए और मैंने निष्क्रिय कर दिया. अब वो कैसे करें वो भी मैं आपको बताता हूं. कैसे आपका सुरक्षा कवच आपका एटीट्यूड रहेगा. समझ गए बात सर? This is what I is. Ego defensive function. So, few more lines you can write. Prejudiced attitudes are often used as a crutch to bolster the self-esteem of the attitude holder. And this phenomenon is known as scapegoat view of prejudice. Scapegoat. Scapegoat is बलि का बड़ा. जिस बकरी बलि दी जाती है ना उसको कहते हैं scapegoat. Then you can write ego defenses, not defensive, defenses. Ego defenses are created to protect
person from threat and conflict. And these defenses are more used by the individuals who are insecure and anxious. Who are insecure and anxious. Individuals. And these defenses are more used by the individuals who are insecure and anxious. Who are insecure and anxious. Ego defensive attitudes therefore enable the individual to maintain his self-esteem in the moments of embarrassment. Moments of embarrassment. देखो जी, सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको ईगो डिफेंस का। The famous adage, grapes are sour, अंगूर खट्टे। एक है आपने अंगूर चखे और वो खट्टे थे और आपने बोला अंगूर खट्टे हैं, ये तो ईगो डिफेंसिव नहीं है क्योंकि ये तो फैक्ट है। और दूसरा है आप चाहते थे अंगूर पर परमात्मा ने आपकी झोली में जो है अमरूद डाले, आपके अमरूद का दाना आपकी दांत में फंसता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है और दूसरे जब अंगूर खा रहे तो आपको चिढ़ मचती है, आप कहते हो चिढ़ के खट्टे। ये ऐसे होता है साहब, खट्टे हैं खट्टे क्योंकि तुम्हें नहीं मिले ना, ये है साहब। अब ये आदमी क्या हो रहा है, ये एंशियस हो रहा है कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। अरे बेटा, जो तेरे पास है उसकी इज्जत करना। हर चीज जो दूसरे के पास है आपके पास नहीं हो सकती। समझिए ना बात, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, उसके पास तो है, मेरे पास तो है नहीं, तो समय क्या करूंगा, मेरे को उसकी बेकार है, क्योंकि उसकी बेकार है तो हम अच्छे हैं। जब भी ब्लेम गेम खेला जाता है, ब्लेम गेम परिवार में भी कई बार ब्लेम गेम होता है कि लड़का जो है बदतमीजी लड़का तुम्हारी वजह से तुम जो करते हो ना सब कोई सिख रहा है। देखिए, अरे मैं तुम्हारे साथ कुछ कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तुम तो मामला उछाल लियो ना, ये है साहब। तो ये जो है ये ब्लेम गेम है, ये जो ब्लेम गेम है ये बहुत डेंजरस है। हम सब की आदत है, यहाँ बैठा कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपनी जिंदगी में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म ना इस्तेमाल किया। और कुछ लोग बार बार करते हैं, हर आदमी के साथ करते हैं, एक आदमी तो हर एक को क्रिटिसाइज करता है, तू भी गलत है, तू भी गलत है, तू भी गलत है। समझ गए ना बात आप, तू भी गलत है, तू भी गलत है। जैसे आपकी दाढ़ी नहीं होगी, आपने कह दिया जितने लोग दाढ़ी रख रहे हैं ना, ये वो है जिनके बाप में इनको एजेंट पैसे नहीं होगी। अब ये चाहिए ईगो डिफेंस है, समझ गए ना। दाढ़ी रखना एक बहुत बड़ी कला है, हर आदमी की ना आती ना रख सकता, और जो रख भी रहा है सर उसको बड़ा ध्यान देना पड़ता है। चमकदार दाढ़ी ऐसे नहीं बनती। Well kept beard requires you see much greater effort than having a clean shaven look. Please understand like this. This is what our understanding is of ego defenses. कई टाइप की ईगो डिफेंसेस होते हैं। जैसे ये रैशनलाइजेशन है, ग्रेप्स आर साउर, उसी तरह से डिनायल है। मैंने पूछा कौन सा अटेम्प्ट है, उसका किसका, मैंने तो कोई अटेम्प्ट ही नहीं दिया, डिनायल साफ उभर गए। ये भी एक तरीका होता है, समझिए ना बताओ। ये भी ईगो डिफेंस है। मैंने सामान खाया, मतलब माल पानी खाया सरकार का और हरा हफ्ते रेस्टोरेंट लेने गया था करते। देखिए मैं एक बार सीरियसली पूछता हूँ सर, आपकी कहा भी आपकी तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा करे आदमी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हर हफ्ते कर रहा है तो काम क्यों कर रहा है भाई, सरकारी काम क्यों कर रहा है अगर हर हफ्ते तीर्थ यात्रा कर रहा है। समझिए ना बात, आपका घर ही आपका तीर्थ है, उसकी यात्रा करे, बार बार घर छोड़ के तीर्थ यात्रा ना करे, किसी और का तीर्थ बन जाएगा। ये ऐसा अंडरस्टैंड लाइक दिस। अब ये सारे फैक्टर्स ये सबके सब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, समझ गए ना बात, दे आर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स। ये क्या कर रहे हैं, आपकी इज्जत को बचा रहे हैं। देखो कुछ लोगों को हमेशा डर लगा रहता है मेरी तो आज लूटेगी, मेरी लूटेगी। देखो जिंदगी में दुनिया आपको लूटने नहीं आई है, आपको लूटने नहीं आई है। आपके दोस्त भी जो है ना आपकी इज्जत में हाथ डालने को तैयार है, क्योंकि कॉम्पिटिशन है ना दुनिया में सर, तुम गिरेगा तो मैं हंसूंगा, ये अप्रोच है। समझिए आप। अब कुछ लोग हैं जो बहुत एंजाइटी प्रोन लोग हैं, वो हर एक को ब्लेम करेंगे, अरे तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से मैं बर्बाद किया, तेरी वजह से मेरे नंबर नहीं आए, मैं तो रिजर्वेशन की वजह से पढ़ गया। ये सारी बातें जो है एक आर्गुमेंट है। जब आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हो उससे पहले आपको पता है आपके पास कितनी वैकेंसी है खेलने के लिए। ये तो है नहीं जब आपने एग्जाम दिया तो 100% ओपन सीट्स थी, उसके बाद 50% रिजर्वेशन में। अब आपको पता है साहब आप जो है अनटचेबल की कैटेगरी में हो,
आपके पिताजी ने कुकर्म किए हैं, इसलिए आपको रिजर्वेशन नहीं मिला। तो अब क्या है, आप 40% सीट पे खेलोगे, ये आपको गारंटी है पहले से। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो खेलो, पर खेल के फिर आपको यार मैं बचना बर्बाद हो गया कि मेरा रिजर्वेशन नहीं था, वो नहीं चलेगा, वो ईगो डिफेंस है। अब आपको मैं निश्चित बता रहा हूँ, जो लोग ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड इस्तेमाल करते हैं ना, उनको ये आइडिया नहीं होता कि वो ईगो डिफेंसिव बिहेवियर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन आई एम ब्लेमिंग यू फॉर द मिस्टेक दैट आवर चाइल्ड हैज डन, तो हस्बैंड और वाइफ हु इज ब्लेमिंग द अदर इज कन्विंस्ड दैट इट इज बिकॉज ऑफ द अदर पार्टनर दैट द प्रॉब्लम हैज बीन कॉज्ड। मैं बार-बार कह रहा हूं सर आपसे, जब आप किसी को मिले तो जो लिटमस टेस्ट है ना जज करने का, वो ये है कि कितनी बार वो आदमी कन्वर्सेशन के दौरान औरों को ब्लेम करता है। ज्यादा ब्लेम करने वाला इंसान एक तो कॉम्प्लेक्स है, दूसरा इंफीरियोरिटी का शिकार है। अगर आदमी इंफीरियोरिटी का शिकार नहीं होगा तो वो ज्यादा ब्लेम नहीं करेगा। तो जैसे आप सवाल पूछो, डू यू हैव सम शॉर्टकमिंग्स, और आदमी नीचे कहता है नो आई डोंट थिंक आई हैव गॉट एनी विजिबल शॉर्टकमिंग, ईगो डिफेंस है, ये ईगो डिफेंस बिहेवियर है। और एक आदमी दूसरा जो थोड़ा लिबरल आदमी कहेगा नो आई हैव plenty of shortcomings, if you are planning to have time spent with me, be prepared that I will write you also। देखो जी, मैं थोड़ा सा सेब मुखा आदमी हूं, मैं अपने नाम पे डाल देता हूं। You should expect this kind of behavior from me. I am a man of erratic temperament also। अरे कम से कम मान तो रहा है, इसका मतलब जान रहा है। दूसरा आदमी कहता नहीं जी मुझसे ज्यादा तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ही है, नाम भी मेरा महेश है, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। ये आदमी जो है बिल्कुल आपको पूरी तरह से कहता मारेगा नहीं करना, जो इतना कन्विंस्ड है कि कोई लिमिटेशन है ही नहीं उसके अंदर। इसलिए पहला सवाल पूछे, डू यू लव मी, और अगर आदमी बोले आई लव यू बट नॉट मोर देन आई लव माई सेल्फ, जेन्युइन पर्सन। और इफ अ पर्सन सेज आई लव यू मोर देन आई लव माई सेल्फ, झूठ। या तो उसे पता नहीं अंधकार में है या डकैत है पूरा। ये है रिफ्लेक्शन ईगो डिफेंसिव बिहेवियर। मैं कह रहा हूं सर, हर आदमी अपने बारे में दूसरे आदमी को क्लियरली बताता है, लेकिन दूसरा आदमी समझना नहीं चाहता, इसलिए मिस्टेक होती है। आपको बता रहा हूं, नेवर यूज दिस फ्रेज ही टुक मी फॉर राइड। No, you wanted that right, and that is why he took you. You wanted to be the part of that right. Please understand, it is not like this I can take you for a ride. Why? Because again, the discussion we started, emotion coming before belief, because my emotions overpowered me. So therefore the problem was caused. अब जैसे for example, देखिए कितना गलत क्वेश्चन है। If you are yourself doing well in life economically, you should not think of marrying a person who is also economically so rich. और रिच मच रिचर देन यू, क्या करोगे सर ज्यादा पैसे का? सबसे पहले तो एक बात याद रखिए, जो आपका कमाया हुआ पैसा है केवल वही आपका है। दूसरे का कमाया हुआ पैसा चाहे वो बीवी का भी हो या हस्बैंड का भी हो, वो आपका नहीं है। नंबर 2, कुछ केसेस में जब माँ बाप बहुत ही बेनोलेट और अनकंडीशनल है, वहां आप माँ बाप का पैसा भी अपना समझ सकते हो, पर ऐसे माँ बाप भी दुनिया में बहुत कम है जो अनकंडीशनली आपको चीज देते, जो आपको कभी जताए नहीं, बेटा देख इतना काम मैं तेरे लिए कर रहा हूं। ऐसे लोग भी बहुत कम है, आप समझिए। तो द मनी व्हिच यू आर ओनली बिलोंग्स टू यू, other person's money is not yours. So what is the point, you know? If you marry a very rich person also, that money is not yours. And if you ask for that money, you will lose a bit of your self-respect. That's a fact. तो सर जो चीज हमें चाहिए और हम हासिल नहीं कर सकते, उस नीड का त्याग करने में ही भलाई है। मैं तो कहता हूँ लेट अस बिकम अ पर्सन विद मिनिमम नीड्स। क्योंकि अगर आप ये एटीट्यूड पाल लेंगे सर, तो आप दुनिया में दुखी नहीं होंगे। अब होता क्या है, मैंने डिस्कशन बोला ना आपसे, अवेयरनेस, ये अवेयरनेस वाली बात है। ये है मेरा अनकॉन्शियस, ये है मेरा कॉन्शियस। जो ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड है वो अनकॉन्शियस के अंदर होते हैं, क्या होते हैं। इसलिए आदमी जो दूसरे को ब्लेम कर रहा है ना, वो कन्विंस्ड है कि दूसरा ब्लेम करने योग्य है। उसे यह समझ में नहीं आता कि मैं अगर दूसरे को ब्लेम कर रहा हूं तो एरर मेरे अंदर है, उसके अंदर नहीं। यह फीलिंग उसको नहीं आती, वो कन्विंस्ड है नहीं वो गलत है, इसलिए हम करते हैं ऐसा। अब समझिए, इतना गलत अगर कोई आदमी है तो उसको ब्लेम करने की बजाय उसे छोड़ देने में भलाई है। आप समझिए, अगर कोई इतना ही गलत है तो आप उसके साथ क्यों? क्योंकि आपको मजा आ रहा है, आपका फोकस जो है वो उसको छोड़ने में नहीं है, क्योंकि उससे बड़े फायदे ब्लेम करके हमें हमारा आनंद मिलता है। क्योंकि कंफर्ट आता है, कंफर्ट सर मुझे इनसिक्योरिटी से क्यों प्रूफ है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आई रियल माय चिल्ड्रन, आई फाइंड दैट दे आर नॉट अप टू द मार्क व्हिच आई एक्सपेक्टेड। अब क्या एक रैशनल आदमी रहेगा, वो कहेगा इट कुड बी नंबर 1 देयर वर एरर्स इन माय सोशल लाइफ। जो बहुत कम माँ बाप मानने को तैयार है कि उनके परवरिश में कोई कमी है, ये बहुत कम माँ बाप मानने को तैयार है। आपने मान लिया सर मेरे परवरिश में कमी थी, मैंने मान लिया। साथ में मैं ये भी मानता हूं कि आज जो आप बच्चे अपने लिए रहोगे ना, वो जो मैंने किया उससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग है। उसका रीजन है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस इज टू मच, पीयर इन्फ्लुएंस टू मच। I did not spend too much of time with my friends. I spent it with my parents. But in your era, you spend time with your friends also as much as you have done with your parents, or probably a little less, but considerable time.
तो उससे क्या होता है सर, आउटसाइड इन्फ्लुएंस का स्कोप बढ़ जाता है। तो आप ये मान ले ठीक है सर, मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ हद तक जो है एनवायरमेंट का भी फैक्टर था, वो एनवायरमेंट में कंट्रोल कर नहीं पाया, इस वजह से जो है नेगेटिव सोशलाइजेशन हुआ। ये आदमी रैशनल है, लेकिन जो कहेगा अरे मैं तो मेरा लड़का तो आपसे कर गया, और इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी वाइफ की है, मैं तो चले जाता था काम करने, वो क्या पढ़ाती थी बच्चे, मुझे समझ नहीं आया। अब ये है ईगो डिफेंस रखिए, समझ आया ना बात सर? जो रैशनल आदमी होगा वो कहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्वाइन थी, फेलियर अगर हो रहा है तो वो करना ही फेलियर है, लेकिन एक आदमी कहता है कि मैं तो फेल नहीं था, इसकी वजह से होता है। ये ईगो डिफेंस है। इस तरह के लोग बड़े मुश्किल होते हैं हैंडल करने। पर आपको मैं बताता हूं सर, 99% लोग ईगो डिफेंसिव है और 90% तो बहुत ज्यादा है। केवल 9% आदमी आपको कहेंगे सिक्योर इस दुनिया में, रिलेटिवली सिक्योर, हाई लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी। I must value fashion, I must be trendy, I must ensure that I go to best beauty parlors for my makeover। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन केवल दूसरे को दिखाने के लिए पार्लर जाना कोई सेंस नहीं बनता ज्यादा। मुझे तो खुशी होती है उसमें, मेरे को समझ में आता है। आप समझिए, एक्सपेक्ट कुछ बढ़िया क्लोथ्स में पहनूं क्योंकि मुझे वो फिट होते हैं, तो बात समझ में आती है, लेकिन उनको मैं फ्लॉन्ट करूंगा। देखो ये 20,000 का जूता पहना है, 25,000 का जूता पहना है, जूता कंफर्ट के लिए पहनो। 25,000 के जूते में भी अगर डिस्कंफर्ट हो रहा है तो मत पहनो, लेकिन ईगो डिफेंसिव आदमी रहेगा क्योंकि वो दूसरे को नीचे दिखाएगा। देखो जितने का मैं जूता पहनता हूं ना, ये शरीर में पूरे कपड़े भी नहीं पहन पाता हूं। आप देखिए ये क्यों हो रहा है? एंजाइटी, फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी लीडिंग टू ईगो डिफेंसिव बिहेवियर। इसीलिए जितनी ज्यादा प्रेजुडिस समाज में होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल if India today has problems, it is not because of Muslim minority, it is because of poor governance, and for that poor governance it is not only Congress to be blamed, there have been sufficient period of BJP rule also now, so they are also equally to blame। अच्छा चलो equally जाओ, 80-20 तो होगा। Mahatma Gandhi is not to be blamed for problems of India। By labeling blame on Gandhi, you are doing what? Ego defensive behavior। आपको मैं बताता हूं सर, इंटरेस्टिंग बात साइकोलॉजिकली, if Muslims all of them would have left India and gone to Pakistan, I am very sure that there would have been fight among the Hindus, because Hindus also not homogeneous lot, there is lot of heterogeneity, first between the castes and then within the caste। आप देखिए for example, even Brahmins are not unified a lot, there are divisions there also, even Baniyas are not unified। भाई कुत्ता कहेगा मैं मित्तल का गला घोटूंगा और गोयल कहेगा दोनों को घोटूंगा। आप देखिए साहब, तो ये नॉनसेंस है। हमें सिखाना है आइडिया कि लेट अस बिकम टॉलरेंट by understanding our inferiorities and making efforts to overcome them, rather than blaming others for our inferiority। ये मतलब है सर। अब इसमें एक लाइन निकले, how to overcome it, ये बड़ा मुश्किल काम है। Prejudice comes from a very difficult to overcome, very very difficult। आदमी चेंज हो तो सब चाहता है, चेंज नहीं होता। उसका अहंकार, किसी व्यक्ति के अहंकार को कम करना आसान काम नहीं है। अहंकारी तो हम सब है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा है, और कुछ लोग तो बिना कुछ किए ही अहंकारी है, उनके पास कुछ नहीं है लेकिन अहंकार पूरा है। The point is this, तो आप लिखिए इसको, ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड्स आर डिफिकल्ट टू चेंज एज दे रिजल्ट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटीट्यूड होल्डर, as they result from the characteristics of the attitude holder rather than attitude object, therefore the characteristics of the attitude holder as they result from the characteristics of the attitude holder rather than attitude object, therefore by merely providing the individuals with counter attitudinal information, merely providing the individual मतलब attitude holder with the counter attitudinal information, individual is attitude holder with counter attitudinal information मतलब जो इंफॉर्मेशन जो उसके एटीट्यूड के अगेंस्ट हो। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, देखो जी कमी आपके अंदर है, मेरे अंदर एटीट्यूड, by merely providing the individuals with counter attitudinal information, merely providing the individual मतलब attitude holder with the counter attitudinal information, individual is attitude holder with counter attitudinal information मतलब वो इंफॉर्मेशन जो उसके एटीट्यूड के अगेंस्ट हो। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, देखो जी कमी आपके अंदर है, मेरे अंदर, और बात सही, मेरे अंदर कमी, ऐसे रिएक्ट
So therefore, by merely providing the individual with counter-attitudinal information is not enough. Okay, is not enough to bring about the change. Is not enough to bring about the change. आप केवल इंफॉर्मेशन देके चेंज नहीं कर सकते इंसान को. अरे सर इंफॉर्मेशन देके चेंज किया जाता ना तो चेंज बड़ा आसान होता. मैंने कहा आपसे, इंसान अपना अहंकार आसानी से त्याग नहीं सकता, उसके लिए बड़ा परिश्रम करना होता है. ये और जो स्टेटमेंट है ना महात्मा गांधी का, बहुत रेलिवेंट है. यू कैन नॉट ह्यूमिलिएट मी विदाउट माय कंसेंट. देखिए दो तीन चीजें तो आप रियलाइज कीजिए. नंबर वन, योर मोस्ट इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन शुड कम फ्रॉम इनसाइड एंड नॉट फ्रॉम आउटसाइड. लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है, पर मैं अपने बारे में क्या कहता हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं अपने बारे में जो कहता हूं वो एम्पिरिकली सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहता हूं. इसलिए कई बार जो मेरे अपने बारे में राय है वो लोगों की राय भी अलग हो सकती है, पर अधिकतर सिमिलर होती है. ये बात समझिए आप. Not many of us are ready to put our hand up and admit our mistake. We always search for a scapegoat जिसके ऊपर ब्लेम डाला जा सके ताकि अपनी इज्जत बनी रहे. अब लेकिन प्रॉब्लम क्या समझ है, जो जब आप किसी के ऊपर ब्लेम डालते हो ना, आप करते हो रियलिटी डिस्टॉर्शन. जैसे आप रियलिटी डिस्टॉर्शन कर रहे हो, अरे लोगों को मैं खाना खिलाता हूँ, सब मेरे दिमाग में ये मेरी पूजा करते हैं. बेटा पूजा आप खाना खिलवा के किसी को करवा रहे हो तो इसका मतलब आप उनको खरीद रहे हो, वो आपको दिल से नहीं चाहते. आप समझिए क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि it's not about what they say in front of you. More important is what they say behind you. The point is this. आप समझ रहे हो सर, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज है. ये ईगो डिफेंस है. अगर मैं लिमिटेड इंफॉर्मेशन से अपनी धारणा बना दूं तो मैं ईगो डिफेंस हूं. और प्रॉब्लम क्या है साहब कि कई बार एनवायरमेंट से एक ही फीडबैक मिलता है और पूरे के पूरे लोग जिनके संपर्क में आ रहे हो, जो फीडबैक दे रहे हैं, खुद ही अनएजुकेटेड है. उससे मेरे अंदर सेल्फ डाउट होने लगता है कि सर मैं तो अपने बारे में ये सोचता हूँ, ये कम लोग ये सोच रहे, क्या मैं सही हूँ या ये सही है. जैसे आपको जा रहा भैया आप बहुत थके लगे, तुम्हारा चेहरा तो मुझाया ना, बिल्कुल क्या हो गया तुम्हें, चेहरा मुझाया ना तुम्हारा इतना, मुझे लगता है हीमोग्लोबिन की कमी है. फिर दूसरा कह रहा है क्या हुआ तेरे होठों काले पड़ गए, क्या वो शुरू कर दिया, आपके काले पड़ गए. अब सर जब 5-7 आदमी मेरे को ये बात बोलेंगे जिनको मैं टेस्ट करता हूँ तो मुझे तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा. अंदर से तो मेरे को बिल्कुल फिट हूं मैं, पर लोग कह रहे हैं कमजोर है कमजोर है कमजोर है, तो मैं बिलीव करने लगता हूं मैं कमजोर हो गया. समझ गया आप? ये रीजन है. यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ. इस बार एक क्वेश्चन था मॉरल इंट्यूशन. मॉरल इंट्यूशन वो अंदर की आवाज है जो आपको बताती है आप क्या. एक होता है रीजनिंग, मॉरल रीजनिंग. मॉरल रीजनिंग होता है कॉन्शियस एफर्ट. मॉरल इंट्यूशन है अनकॉन्शियस. ये फैक्टर्स है. और मैं आपको सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपका शरीर आपको बिल्कुल सही फीडबैक देता है. यहां तक कि कितने दिन जिंदगी के बचे हुए हैं उसके बारे में भी आपको कई सही फीडबैक मिल जाएगा. Your energy levels will start dropping after a point, and you will realize that now probably I have entered the last leg of my life. Now I will not going to last beyond 3-4 years. ये प्योर इंडिकेशन है. आदमी डिनाइल मोड में होता है. क्यों? ये कि मैं नश्वर हूं आदमी मानना ही नहीं चाहता, तभी तो नाम रखा है अमर. क्यों नाम रखा अमर? इसलिए रखा है कि मजे करता है अभी हमारे. ये रीजन है इसका. समझिए यही रीजन है. अभी हमने बोला नोइंग वनसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम. ये रीजन है. समझ रहे हो बात? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको यू मस्ट डेवलप इन लाइफ द आर्ट ऑफ हैविंग मी टाइम, व्हिच इज द टाइम ओनली फॉर माय सेल्फ, वेयर आई विल कंटेम्पलेट, इवैल्यूएट, एनालाइज एंड सी हाउ आई हैव लिव्ड माय लाइफ एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफ आई वुड लाइक टू लिव इन फ्यूचर. द पॉइंट इज दिस. ये ऐसा. तो अब आप लिखिए आगे लाइन पे, टू चेंज ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड्स. To change ego defensive attitudes, we need to restructure the personality of the attitude holders. And this requires making them develop insight into the nature of their repressed feelings. And this requires making them develop insight into the nature of their repressed feelings. Insight, INSIGHT, into the nature of their repressed feelings. We need to restructure the personality of the attitude holders.
And this requires making them develop insight into the nature of their repressed feelings. Insight, INSIGHT, into the nature of their repressed feelings. Once the insight is developed, you shall no longer feel the need once the insight is developed, a person shall no longer feel the need to repress his feelings. And these feelings shall no longer create anxiety, which had compelled the person to repress his feelings. Once the insight is developed, a person shall no longer feel the need to repress his feelings. And these feelings shall no longer create anxiety, which had compelled the person to resort to ego defensive attitudes, to resort to developing ego defensive attitudes. देखो ऐसा है, I feel you are telling me, I want to be good in your eyes, I start doing what I am not. जिंदगी में वो रिश्ता छोड़ दो सर, जिस रिश्ते में आप ना रह सके, सारी जिंदगी बाहर पाओगे। मैं तो कहता हूँ उन पेरेंट्स को भी छोड़ दो, जो आपको मजबूर करें अपने रियल सेल्फ से डिपार्चर पर। देखिए, I respect my parents, but I also respect myself. So if you compel me to become what I am not, I shall abandon that company. I am not being arrogant. I am being one who does justice to, one who is born to do justice to his parent. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मेरा पुरानी धंधा है, ठीक, अब अगर मुझे कंप्लेन किया जाए साहब आप ये बात किस तरह से बोला, ये गलत है, तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं फिर दूसरी जगह जाऊंगा, क्योंकि भाई मेरा तो अंदाज ये, मैं किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, जितना हो सके अपनी तरफ से जो भी ज्ञान अर्जित किया वो दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास है हमारा, पूरी सिंसियरिटी से प्रयास है। और आपको बता रहा हूँ कि कम से कम होश में हो, हमने किसी व्यक्ति की का तिरस्कार नहीं किया, और तिरस्कार सहने की क्षमता मेरे अंदर बहुत है। If somebody insults me also I don't get offended easily. उसके बाद भी अगर कोई कहे नहीं ये कमी है सर, वो कमी है, ये कर दो, तुम ये कर दो, तूने ये क्यों बोला, तुमने वो बोला, तो सर जब मैं नहीं रह सका तो फिर फायदा क्या उस रिश्ते का। आप मेरे से रिक्वेस्ट है आपसे, आप उस प्रोफेशन में कभी मत जाओ जिस प्रोफेशन में आपको ये मजबूर होना पड़े बनने के लिए जो आप नहीं हो, जो आप नहीं हो, अगर आपको मजबूर होना पड़ेगा बनने के लिए, वो प्रोफेशन का त्याग कर दो। भले ही 2 पैसे कम कमाने हैं, लेकिन वो प्रोफेशन में जाना जहां आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा बाहर आ सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए उससे क्या हो रहा है। अब देखिए, मैं आपके साथ हमेशा डरा हूं, फियरफुल कि आप बुरा लग जाए, तुम्हें बुरा लग जाए। अब क्या हो रहा है, मैं वो बिहेवियर दिखा रहा हूं जो मेरा नेचुरल नहीं है। आपको बताऊं सर, बहुत बड़े आदमी पार्टी में खाना नहीं खाया जाता, प्लेट पकड़ के उसके आगे पीछे घुमा जाता है, तो उस महफिल का मैं हिस्सा ही क्यों बनूं जिस महफिल में मैं चैन से खाना नहीं खा सकता। आप समझिए, आप जरूरी हम लोग प्राइम मिनिस्टर के साथ दावत लेके आए, दावत लेके तो मुझे क्या खाएगा, क्योंकि खाने को तुम्हें नहीं मिला था। नहीं है सर, 3 बार निवाला मुझे लेके, या तो आप कह दो सर प्राइम मिनिस्टर साहब पहले मैं रोटी चलाऊं, उसके बाद बात होगी इंडियन इकोनॉमी चर्चा बात, पहले खाना पहले पेट की इकोनॉमी पूरी करो, फिर इंडियन इकोनॉमी चर्चा करो, या तो इस तरह की आपकी ओरिएंटेशन है। अगर ऐसी नहीं है तो रिश्ता बेकार है। आप समझिए बात, मैं आपसे सर बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ। इफ यू आर फोर्स्ड टू बिकम व्हाट यू आर नॉट, abandon that quest, because you will not be able to do justice to what you are, which is a very painful thing. And I tell you this, the most important identity in this world is your professional identity. So if your profession is also your hobby, this is the God's greatest gift to you, because you will enjoy doing it every day. Otherwise तो सर मैं सेलिंग मुझे पसंद नहीं है और बच्चे डेयरी में मैं काम करता हूँ, भाई या तो मुझे सेलिंग पसंद हो फिर तो ठीक है, लेकिन अब क्योंकि पैसे कमाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो फ्रस्ट्रेशन है, ये मतलब है इसका। अब क्योंकि मेरे को रिप्रेस करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे टेंशन नहीं है आप क्या जज करोगे, मुझे टेंशन नहीं है, तो आपने ये रिप्रेस की है। पहले मैं इनको दबाने के लिए कुछ वो बिहेवियर दिखाता था जो नेचुरल नहीं थे, अब ये फीलिंग रही तो वो बिहेवियर दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ गया बात? दिस कभी जैसे एक आदमी दूसरे आदमी को क्रिटिसाइज कर रहा है, आप उसके हाँ यार क्या है वो बहुत डरता है। जैसे दिवाली लोग गिफ्ट देते ना आपको, मैंने देखा बड़ा अजीब सा बिहेवियर होता है। नंबर 1, दैट गिफ्ट गिविंग इज मोस्टली नॉट एल्ट्रुइस्टिक।
लेकिन आप जिसको गिफ्ट दें तो सम्मान के साथ दें, नहीं तो मत दें। उस व्यक्ति के प्रति अगर सम्मान है तभी गिफ्ट दें। सबसे बड़ी बात है ये मैटर नहीं करता वो बड़ा है या छोटा है। क्वेश्चन ये है कि क्या वो सम्मान है या नहीं। That is very important. अब आपको गिफ्ट किसी ने दिया, I must value his sentiments. That he was able to remember me and then he gave, rather than what he has given me. The value of that is meaningless. Understood or not, sir? No, I am joining you. I am criticizing. No, it's useless. No, it's useless. Now I have decided. Why should I be doing it? To appease him? Why should I appease him? There is no reason. He is not valuable for me. Let him just the way he wants to. I am not bothered. So I am no longer having these repressed feelings bothering me now. कि यार वो तो नाराज है. जी दीदी, मैं 15 मिनट बाद वो लंच करूँगा, तो अगर आपको 15 मिनट बाद करना है तो तब कर लो, अगर आपको 15 मिनट में तब तक यहाँ और यहाँ करना है तो वैसा भी कर सकते हो, आपकी इच्छा, जैसा आपको ठीक लगे। नहा लिया आपने? नहीं हाँ, मैं सुबह नहा लिया था। हाँ, बाद में देखिएगा थोड़ा सा गुलाल दीवार पे लगा था वहाँ के अंदर की, तो अगर नींबू से हटाना हो तो हटा देना। हाँ। ये हाँ, ये लोग क्या कर रहे हैं मम्मा पापा? अभी तो कोई आए थे, वो देवगन बैठे थे, शराबी खाना खा रहे हैं। अच्छा अच्छा।
ऐसा होने देना है लोग भाई मैं तो नहीं रहूंगा, मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये तो नहीं है ना कि मैं अपना ओरिजिनल सेल्फ छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। तो अब वो फीलिंग मेरे अंदर नहीं है, तो मेरे जो ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड थे वो खत्म हो गए, क्योंकि वो एंजाइटी नहीं होती है मुझे। पहले मुझे एंजाइटी होती थी, जैसे मैंने आपसे पूछा कौन सा टेंट है, आपने कहा सर पहला है चौथा, क्यों आपको लगेगा यार सर को बताऊंगा चौथा टेंट है तो किसकी हूँ। अब आपको रियलाइजेशन हो गया यार पूरी मेहनत करके अटेम्प्ट किए थे, अगर नहीं हो पाए तो क्या हुआ, उससे क्या बेटर होता है, हाउ डज इट बेटर। तो मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, समझ रहे हो आप, ये मतलब है फिलोसफिकल बात है ना, यू कैन नॉट ह्यूमिलिएट मी फ्रॉम माय कंसेंट। भाई मैं आपके दरवाजे में आया, मैंने कहा मुझे साथ ले, तो आपने मैंने रखी मुझे तो आप क्या ऐसा, अब मैं उसको हाइड हो जाऊंगा कि मुझे इन्होंने रिजेक्ट किया था, इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने नहीं किया था। अब मैं क्या हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जिस बच्ची जगह हमें दरवाजा लगाया, हर दरवाजा हमारे को बंद हो गया, तो कोई बात नहीं, जो दरवाजा खुला वहां चलेंगे, इसमें क्या, आई हैव नो एलिमेंट ऑफ हेट टुवर्ड्स देम, दोज हू रिजेक्टेड मी, बिकॉज़ इट इज देयर चॉइस, आई एम वेटिंग फॉर नॉट, ये ऐसा। तो कोई आपसे पूछे सर व्हेन यू रिजेक्टेड, तो हम ये नहीं कह रहे कि आई वाज रॉन्ग, आई से यस आई वाज, आई रिजेक्टेड द रिजेक्शन, नो प्रॉब्लम, इट इज देयर विश, बट दे विल कंसीडर एज राइट, दे विल डू दैट, फिनिश। तो सर ये ईगो डिफेंस को हम जाते जाते वैल्यू एक्सप्रेसिंग खत्म करते हैं, एक लाइन का है, ठीक है, वैल्यू एक्सप्रेसिव एटीट्यूड। आवर एटीट्यूड्स enable us to establish our identity, which conveys to us the kind of, our attitudes enable us to establish our identity, which conveys to us the kind of person we are. Attitude serving value expressive function. Attitude serving value expressive function enable the individual they enable the individual to express to himself and others, his salient values, SALIENT, salient, his salient values, express to himself and others his salient values, and thus demonstrate to himself and others the kind of individual he is and the priorities he possesses. Changing ego defensive attitudes, changing value expressive attitudes, the kind of individual he is and the priorities he possesses. Changing ego defensive attitudes, changing value expressive attitudes, like changing ego defensive attitude, is a difficult process, as values are deeply embedded in one's personality structure. They are deeply embedded in one's personality structure. Change may, however, occur when, number one, values of the individual have changed. And the best example of value change is Gautam Buddha, King Ashoka. Value transformation. Values of attitude have changed. Values of an individual have changed. Values have changed. And number two, when the individual is convinced that the new attitudes suggested to him can express his underlying values better. Example, before I go, I have value of kindness. How do I demonstrate my kindness? By distributing food grains to people of my caste. Then I ask you the question, why only your caste?
Your basis of distribution of food grain should be poorest of the poor, rather than poor of your caste. That will enable you to display your kindness better. You agree with my comment? Can you change your attitude because you believe that this new attitude of identifying poorest of poor and helping them would be greater justice to my underlying value. So this not yet, attitude gets finished, other things will take up in the next class. चलो जी अब लास्ट टॉपिक we did was attitude. Okay ना sir? Now we start with the second last topic, and that is values for civil services. Values for civil services. All values for civil services can be divided into two types. Number one, bureaucratic values. Number one. Number two, democratic values. Two divisions. Bureaucratic values and democratic values. Question in this form has also come earlier. Bureaucratic values. Now, bureaucratic values are values like objectivity, values like impartiality, etc. These values, democratic values and democratic values, question in this form has also come earlier. Bureaucratic values. Now, bureaucratic values are values like objectivity, values like impartiality, etc. These values make the system efficient and effective. Make the bureaucratic system efficient and effective. These values make the system run in an orderly and seamless fashion. सुचारू रूप से चलती है ये bureaucratic values. Seamless fashion, orderly and seamless fashion. Democratic values on the other hand add human face to the system. Human face. It makes the system
responsive and sensitive to the needs of the people. Responsive and sensitive to the needs of the people. And the example of such values include empathy, compassion, etc. Empathy and compassion, etc. And interesting thing is, apart from the fact that this division was asked once, they sometimes also ask something that is behind these values. All these values have been the result of one all-encompassing value, and that every bureaucrat must possess, and that is called as courage. Whether it is empathy, it requires courage. Whether it is integrity, it requires courage. Whether it is impartiality, it requires courage. Everything starts from courage. They had asked this question in another name, fortitude. They asked the importance of the value of fortitude, which is nothing but courage. Now what is courage? Ability to act in a fearless manner and demonstrate composure and integrity in demanding situations. Composure and integrity in demanding situations. Ability to act in a fearless manner. This is what is courage. Please understand like this. All of us are under stress. Some people break under stress. Other people, are able to manage the stress effectively. The same fire which melts the butter melts the steam. So it depends upon what kind of person you are. बात तो एक ही फायर तो एक ही है सर. एक मेल्टिंग करती है, एक सॉल्ट बनाती है आपको. So what is that? That is courage. Please understand. That is called as courage. So all these values stem from value of courage. And a person who has courage will exhibit impartiality, will exhibit objectivity, will be able to demonstrate empathy, will be able to demonstrate compassion, because after all, what is the feature of a person who is courageous? The feature of a person who is courageous is that he has he has sense of security inside him. The level of security you feel inside. Security 10 पुलिस वाले रहने से नहीं होती. 10 पुलिस वाले अगर आप रख के चल रहे हो तो इसका मतलब आप इनसिक्योर हो. आपको अपनी जान बहुत प्यारी है और आप डरते हो कोई नहीं देगा. यही तो मतलब है. यही तो मतलब है. ये डर है साहब, हमारी जान ना लेने कोई. Please understand. Now what do we need? Sense of security. Sense of security is inside. That way you can say Mahatma Gandhi ji had, you can understand like this. When India was partitioned into two, Gandhi ji did not transform himself to becoming an opportunist. देखो मैं तो ये कहता हूँ, आज के नेताओं का कोई हक नहीं गांधी जी को क्रिटिसाइज करने का, क्योंकि जो नीतीश कुमार को अपना लेते हैं और जो नीतीश कुमार दिखा देता है, वो demonstration है of highest level of opportunism. Gandhi ji could have become an undisputed Hindu leader if he would have changed his position from brotherhood between Hindus and Muslims to massacre of Muslims when Hindus were butchered in Pakistan. He did not do so. And in fact, let me tell you, that he did not do so was to great benefit of our country, because I must tell you, majority can never remain united if minority is not present. The other thing, Hindus also don't represent homogeneous lot. There are various castes, various varnas, division on regional lines, linguistic lines, etc. Please understand. So Gandhi ji, in fact, was a very wise leader, to be very honest. And if he has talked about inclusion, I tell you, all advancements in this world have come only when there has been an inclusive growth. Please understand like this, sir. देखिए, Mahatma Gandhi also had the same fondness for Sri Ram as the current people of current dispensation have. His level of fondness was not in any way less for Ram, but Gandhi ji highlighted adoption of character of Ram rather than to focus on temple of Ram. भाई हमारा एम क्या होना चाहिए एज एन इलेक्टेड पर्सन? To invoke the spirit of Ram, to invoke the character of Ram, to develop the virtues of Ram. Isn't it, rather than going in a specific place to worship Ram? Please understand, when temple for Sri Ram is a very welcome exercise from few standpoints. Number one, it will boost the economy of the area. It will give people employment. ये तो बहुत अच्छी बात है. It will give people employment.
boost the economy of the area. It can also lead to people developing some character of Ram provided in the mandir. True teachings of Ram are demonstrated to Shraddhalu. Okay, those who are devotees, if they get information about Ram, the character of Ram, then it is good. But the point is that demonstration of something as a triumph over other community does not make a sense. Carrying out propaganda in name of Ram to win elections does not make sense. Please understand this. That is very important. So everyone has to answer this question. That to what extent there is Ram inside him. And Ram is an embodiment of character. Our focus should be on that only. And Gandhiji was a very courageous person that way. Please understand. Non-violence is not an easy concept. Particularly when the other person who is your opposition is fully armed. He can kill you anytime. So then to demonstrate non-violence is a very difficult thing, sir. Understand, this is what something current dispensation leader do not understand who criticize Gandhi. This is what the importance of Gandhi is. So what I want to say is that you see, this is what we describe as courage, sense of security inside us. And in that sense of security, let me tell you, your economic position, your status, etc. has more role to play. It is about the kind of parenting and the kind of attachment you have had with your parental figures in the initial years of life that will give you the kind of confidence to deal with the world and its affairs. The point is this. Now we start with various types of values which are mentioned in our syllabus. Let us see. The first value and the master value is this. Integrity. Then this is number one. So they often ask questions in civil services that among the various values a bureaucrat must possess, which is the one that is most important? Answer is integrity. पहली वैल्यू जो बोल रहे साहब वो इंटेग्रिटी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है. The second value अगर दो पूछ ले आपसे तो then it comes this. Empathy. ये तो आउटस्टैंडिंग वैल्यू. इसके बाद हमारे सिलेबस में और भी है जिनकी वैल्यू थोड़ी सी हल्की है. Third is empathy system, compassion. Among the various values the bureaucrat must possess, which is the one that is most important? Answer is पहली वैल्यू जो बोल रहे साहब वो इंटेग्रिटी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है. The second value अगर दो पूछ ले आपसे तो then it comes empathy. ये तो आउटस्टैंडिंग है. इसके बाद हमारे सिलेबस में और भी है जिनकी वैल्यू थोड़ी सी हल्की है. Third is empathy system, compassion. Objectivity. And fifth, which is hardly seen these days, tolerance. These are values that will be done by MP. Then there are values which will be done by President Singh also. समझिए ना आप? उनने वो जो कंट्री में लिया है, non-partisanship. Impartiality. और तीसरा ये भी क्या हुआ हमें? Accountability. But sir, here is value around this. It includes all of this. That is why it is number one. It includes all. Now let us see integrity. देखो आप तो लिख सकते हो या आप बोला टीममेट का कैमरे में हमने तो जो बोल दिया बोलना चाहते थे वो बोल दिया. हमने तो बोला था बेटा ऐसा है श्री राम को पूजो लेकिन अपने अंदर के रावण को खत्म करो. वैसे मैं तो कहता हूँ अगर अंदर रावण है ना तब ये अचीवमेंट है. कब भक्तों के अंदर होते क्या है दुर्योधन दुशासन. रावण भी फिर भी कहता था सीते बट आई कैन मेंटेन डिस्टेंस. यहाँ तो दुशासन वैरायटी है. दुशासन एंड कुशासन दोनों टुगेदर. ये तो श्री राम की तो बात छोड़ दो. श्री राम जैसे चरित्र वाले लोग तो खत्म है. कुछ दो चार बेटे मरे आगे मैं मना नहीं करता. ये तो दुशासन चल रहे हैं राइट. देखिए आप और सोशल मीडिया का बड़ा रोल है दुशासन पैदा करने में. सोशल मीडिया जो आप न्यूज दिखा रहा है ना सर उसे दुशासन ही पैदा होंगे. I will tell you one thing. The other day I was talking in the class. Please see it how important it is. What has social media done? देखो ये सवाल कभी आ सकता है.
क्योंकि सोशल मीडिया में हैपनिंग चीज है. सोशल मीडिया हैज ये अलग अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस. उसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सोशल मीडिया हैज मेड पीपल बिकम एडिक्टेड टू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. They want instant gratification, and when people want instant gratification, what will happen is their tolerance level, their patience level, their integrity level will come down. अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा. When I was growing up, if I was reading newspaper and I did not know a word, I had to go to my study room, get the dictionary, look for the word in the dictionary, then write it down, and then put it in context in the line which was written and understand the line. So it was a time-taking process. I'm getting automatically through these procedures, virtue of patience was taught better. Now what happens? You are reading online. You press the button, immediately you have the meaning of the word. So what happens is that the time gap has been reduced. That exercise of keeping curiosity inside and searching for the ways to address it is gone. Now people get instant outcomes. So everything is instant in this age, which has ensured that the gratification delayed is now missing in the exercise. Already the question has come this year. The last year the exam happened of cuddling behavior and mobile phones. Already the question is here, and I foresee a similar possibility of an essay also. You see, sir, क्या हो रहा है? Visual media, social media is what? It has stimulated your many senses. When you read newspaper, your visual sense is stimulated. But here, when you hear it out, and as well as see auditory, visual, multimodal impact. Now, on one hand, it is useful because it facilitates your memory and learning. But on the other hand, you want more and more gratification. Please understand like this. And that is why internet addiction disorder is common. People are addicted to net. The problem is this. And any kind of addiction is dangerous. Because it will lead to lopsided personality development. Imbalanced growth. ये रिसर्च है. तो इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशन है आप भी मान लेना. क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे आपने मीडिया में किया डिस्कस, मुझे लग रहा है इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जाम में. सोशल मीडिया. In one form or the other. Now we start with integrity. First value comes from Latin word integer, meaning whole or complete. Whole or complete. That is what the meaning of integrity is. The simplest way to define it is soundness of moral principles. Integrity refers to soundness of moral principles. Integrity is person's inner sense of wholeness. Deriving from honesty and consistent upright. Deriving from honesty and consistent uprightness of character. Consistent uprightness of character. Basing one's actions on some set of internally consistent principles. और लंबा देना था internally consistent framework of principles. Basing one's actions on some set of internally consistent principles or framework of principles. That is integrity.
is important. A person with integrity does the right thing for the right reason. Integrity is internal system of principles that guides our behavior. People with integrity are guided by a set of core principles that empowers them to behave consistently to high standards. So one thing is clear about this, integrity implies consistency. People with integrity will demonstrate one quality, that whether the price is of rupees 100 or rupees 100 crores, they will not take it. Why? Because they are consistent with this idea that, you see, the money that you have not generated through your blood and sweat does not belong to you. सीधी बात है। आप ये कहते सर हम कंसिस्टेंटली बनाएंगे, तो ये जो है ये इंटेग्रिटी है क्या? सीधी बात है। Consistently to high standards. So one thing is clear about this, integrity implies consistency. People with integrity will demonstrate one quality, that whether the price is of rupees 100 or rupees 100 crores, they will not take it. Why? Because they are consistent with this idea that, you see, the money that you have not generated
एक काम करा करिए लेते थे, जो आधे वाले पड़े रहते हैं ना, इनको उठवा लीजिए करिए ये। मैं फिर उनको यूज नहीं करता हूँ। अच्छा फेंक देते हाँ हैं। हाँ, जो फ्रेश रखे रहते हैं मैं उन्हीं को रखे रहने दिया करूँ। ठीक है।
हमें लगता है कि ये सब हमारे ध्वंस के लिए है। होता है कि हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां या विपरीत परिस्थितियां या विपत्तियां आती हैं, तो हमें लगता है कि ये सब हमारे ध्वंस के लिए है। लेकिन सदैव दिग्गज जी रश्मि गति ने उन विपत्तियों को इतने अद्भुत तरीके से वर्णन किया है कि ये विपत्तियां वस्तुतः आपकी संपत्ति में हो सकती है यदि आपके चरित्र के अंदर दृढ़ता हो और आपके अंदर विश्वास भी है। और बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया है कि पांडवों ने जब अपना अज्ञातवास पूरा कर लिया, सारी शर्तें पूरी कर ली, तो पांडव आते हैं और न्यायोचित तरीके से कहते हैं कि आपने ये कहा था कि अब आधा राज्य हमें हमारा वापस कर दीजिए। लेकिन उनके आधे राज्य की तमाम पेशकश जो कुछ भी उनकी तरफ से होती है उसको कौरव सिरे से खारिज कर देते हैं। हम कहते थे कि भाई हम आपको नहीं। लेकिन जो सृजनशील चित्त के लोग होते हैं वो भले ही अपने ऊपर कितनी ही विपत्तियों को झेलें, उनके मन में एक इच्छा होती है कि अंतिम प्रयास में विपत्ति से भले ही हमने झेली हो लेकिन हमारे किसी प्रयास से संसार विपत्ति का भागी ना बने, जिसके लिए वो शांति की गुहार करते हैं। उसमें देखिए कितना अद्भुत है कि जो जगत का दाता है वो स्वयं, अगर आप उस जगत के दाता के प्रति पूर्ण निष्ठा पूर्ण प्रेम से भरे हुए हैं तो जगत का दाता जगदीश्वर जो है वो आपके लिए दूत भी बनने के लिए तैयार रहता है। और परमात्मा श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन के जाते हैं। लेकिन उसके पहले की जो पृष्ठभूमि है उसका इतना अद्भुत वर्णन किया है कि वो कहते हैं कि हो गया तुम अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस, हो गया तुम अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कर्ण सृष्ट कर विगत ये छोड़ कर नस नस में देख प्रवाह ये छोड़ में हंसा ये सच है विपत्ति लगाती है भाई को देना। वो विपत्तियों में आप निरंतर अक्सर विपत्तियां जब आती है तो हम और आप जैसे सामान्य लोग क्या होता है कि हम अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं, उद्योग से विमुख हो जाते हैं। लेकिन जो शौर्यवान होते हैं या जिनको अपने कृतित्व जिनको अपने पुरुषार्थ पर अपने व्यक्तित्व के ऊपर वे निरंतर किसी न किसी का उद्योग करते रहते हैं अपनी विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। वो कहते हैं कि जो आप बर्दाश्त सहते हैं उद्योग निरंतर रहते हैं, शुभों का कोई इंसानी को बचाने को है कौन मिल ऐसा जब मैं सभी दिन न के मन में खम तो उठेगा है नर पर्वत के छाते पांव खड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और घूम रहे एक से एक प्रकार छिपे मानवों के भीतर मेहंदी में जैसे रानी को बतिया भी उजियारी को बत्ती जो नहीं चलाता है रोशनी नहीं लगाता है और पीसा जाता जब इश्क
इश्क दर्द मतलब रहना कभी सा जाता जब इश्क दर्द छाती कसकी धारा अखंड और मेहंदी जब सहती है कहा बनती ललाओं का शराब जब फूल को हो जाते हैं दिल में जो भार होता है उनको अगर आप देखेंगे तो उनको एक दूसरे से भेद के हम एक सूत्र में उनको लेकर आते हैं तो जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको लेकर आते हैं कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड नेता कौन हुआ अद्वितीय यशक्रेता कौन हुआ नवधर्म प्रणेता कौन हुआ जिसने न कभी आराम लिया इन्होंने रहकर नाम लिया जब फिर सामने आते हैं सोते से हमें चढ़ाते हैं मन को रोते हैं बलबल तन को झोलते हैं बलबल सरपत की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें चढ़ाकर लेकिन उनकी वो गुणवत्ता बता है वो क्या करते हैं सामान्य मनुष्य को तो तोड़ देते हैं लेकिन जो उत्तम मनुष्य होते हैं उत्तम प्रवृत्ति के होते हैं उनको सतपथ की ओर लगाकर जाते हैं तो तन को झोलते हैं बलबल और सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें चढ़ाकर तो बाकी का भगवान एक नहीं दोनों जगह आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ लोग हैं पेड़ होते हैं वृक्ष होते हैं तमाम चीजें होती हैं वाटिका में भी होती हैं और जंगल में तो कह रहे हैं लेकिन वाटिका और वन एक नहीं आराम और वन एक नहीं वर्षा अंधर आता अखंड और है साधन प्रचंड और वन में प्रसूत हो कहते हैं बातों में शाल के वृक्ष जो चक्कर रहते हैं कि वन में आपको फूल तो मिल जाएंगे लेकिन बगीचों में शाल के वृक्ष नहीं मिलेंगे तो वन में प्रसूत तो खिलते हैं बागों में शाल मिलते हैं कि कंकरियां जिनकी से सुधर छाया देता केवल अंबर विपदाएं दूध पिलाती हैं लोरी रतियां सुनाती हैं जो लाक्षाग्रह में चलते हैं वे ईश्वर मान करते हैं जो लाक्षाग्रह में चलते हैं वे ईश्वर मान करते हैं और बढ़कर विपत्तियों पर छाया मेरे किशोर मेरे राजा जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे तो स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकते चिंगारी है वर्षों तक हमने घूम घूम पाता दिनों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकाल सौभाग्य न सपन सोता है देखें आगे क्या होता है
through your blood and sweat does not belong. So we are guided by a set of core principles that empowers them to behave consistently to high standards. So one thing is clear about this: integrity implies consistency. People with integrity will demonstrate authority. That whether the bribe is of rupees 100 or rupees 100, they will not take it. Why? Because they are consistent with this idea that you see, the money that you have not generated through your blood and sweat does not belong. Simple. आप मैंने कहते हैं हम कंसिस्टेंटली बनाए तो ये जो है ये इंटेग्रिटी है अरे ये कैसे बात कर रहा हूँ मैं कंसिस्टेंटली बनाए देता हूँ किसी को नहीं छोड़ता अगर मैं माय फादर विजिटेड माय ऑफिस मैंने कहा ये इधर प्रेस इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इंटेग्रिटी नहीं है मेरे पास क्यों इसलिए नहीं क्योंकि मैं लाइफ को उठाता पाया इसीलिए क्योंकि हमने इंटेग्रिटी का राइट थिंग फॉर द राइट रीजन शुड आल्सो बी राइट और वैल्यू सिस्टम जिसके बात करते हैं it is based on one belief and that belief is that when human beings are born they are born with a tendency to go in the direction that is useful for them as well as useful for others around them and the human kind. The way Almighty has designed us directs us to display behaviors that will always result in win-win outcomes. I also win and you also win. Means one, which are aimed at common good of all. Because the idea is common good fosters individual well-being. So this is the way we are designed. But somehow, unfortunately, you can call it as an influence of negative socialization or improper socialization that our basic nature is tempered with. An element of greed develops in us. The point is this, for example, a child is innocent. He knows no caste, no gender. So he is willing to accord all equal status to all who are around him. But then his parents start telling him, don't play with the boy of that caste. Don't play with the boy of that socio-economic status. भाई बच्चे को तो नहीं पता था, माँ बाप ने सिखा रहे थे। आप सोचिए, उसी से उसके अंदर ये स्टेटस कॉन्शियसनेस जागती है। आप सोचिए, ये आप सब अपने अंदर का अध्ययन कर सकते हैं। You can analyze yourself and find that for what reason are you driven to achieve success in this exam? Is it status orientation, power orientation, or achievement orientation? Understand like this. The problem with status-oriented people happens to be that they will always disregard people who, in their eyes, do not enjoy the same status as they enjoy. Not realizing this fact that the status which is given to them is the outcome of prayers of many, efforts of many, some visible, some invisible. So rather than becoming arrogant, we should have an element of gratitude towards all those forces which have made us what we are today. In fact, every morning when you get up, you should do thanksgiving. And in that thanksgiving, first in the list should be your parents, who have given you this luxury to write this examination in an environment where unemployment threat looms large. That is a very great luxury, sir. I tell you. And also understand, this is it. Also understand that it is not only you who happen to be under stress. Your parents are also under equal stress. Because they are also fearful of the fact that if the things do not turn out to be the way we anticipate, then what? I'm getting comment on one. So it is not just your struggle. It is struggle of them as well. Now the children who are aware of this will give regard to their parents, will stay humble even after success. Those who disregard, turn away. The point is this. Please understand, so this kind of humbleness, the attitude of gratitude must be present. Understanding is this. And a person with integrity, is likely to stay humble all the time. Because he is very objective in his approach, objective in his self-assessment, and objective in assessment of others and their behavior towards him. The point is this. Now, just for example, most of all people who affiliate with you will have some degree of self-interest in relating to you. But मैं ये कहता हूँ, even if they have self-interest, you should still thank God because that He has made you so interesting that others find their interest fulfilled in your company. भाई परमात्मा ने तो लायक तो बनाया ना कि हमारे से मित्रता करके लोगों के जीवन को नया आयाम मिल रहा है और लोग नहीं कहते नहीं होता सीधे जब मैं कुछ लेने आया अरे वो लेने आया है तुम्हें परमात्मा ने देने मिला है तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है आप तो भागवीर कर्ण बन गए कोई मजाक है सर एक बात बता दूं महाभारत की स्टोरी में अर्जुन भी मुख्य पात्र नहीं है कर्ण भी ऊपर बड़ा पात्र है जिसके साथ फेट ने हमेशा काम किया लेकिन उसने अपनी मुस्कुराहट छोड़ी और कर्ण इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेग्रिटी आल्सो
And that is how it is. तो इंसान बेवफाई होता है कमर नमो करके, और ये जो है क्या ये है साहब, ये जो नमो का खेल है, ये इतना बड़ा पक्का खेल है कि the moments that are destined for you will come in your life, no matter whatever you try, how much you try to evade those moments. That's also true, sir. Please understand. So when you are having a joyful existence, thank Almighty. When you are having pain, then also tell Almighty, please release my pain. But because it was destined to happen in my life, it shall happen. You have to go through your quota of pain. No one will complete his life without his quota of pain. इसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो मेरे दोस्त को आनंद कर रहे हैं, मैं बेटा बेटा वो भी मिलेगी। वो आज आनंद कर रहे हैं। आप लोग मेरी बात ध्यान से रखना कि when you become educational secretary or educational minister, please make sure that in the curriculum there should not be the lessons relating how to live life, but more importantly there should be lessons on how to prepare for death. Because I tell you, the biggest challenge in life of every man is to have peaceful exit from the world. The process of dying is a very painful exercise. More than physical pain, psychological. Why? Because we have not been trained in the process of socialization to let go our cherished possessions gracefully. जो इतनी मोहब्बत से पानी में चीजें हैं ना मैंने, उनको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, उनका त्याग करना ही पड़ेगा। ये त्याग की जो ओरिएंटेशन है वो सिखाई नहीं गई, इसलिए तो लोगों को दर्द होता है। आप समझिए बात, ये बहुत बड़ा लेसन है सर। You have to have mental preparation for it. तो मैं कहता हूँ education system is very important because these are important aspects to let go the things. The world would have been very beautiful place if people would have developed this. I must long for certain possessions. I'm not saying that. I must hold them also. I'm not saying that, but I must let them go also. That is why I'm very enamored by one statement made by Bill Gates. He said, "It is a sin to die as a rich man." Means before you leave, you distribute your wealth. You create wealth, but then you distribute it. So Bill Gates is saying that become an entrepreneur, generate wealth, and distribute it to this in this life. The work of Azim Premji is something that needs to be appreciated. And you know what's a very appreciable work he has done. Of course, Tata also do it, no doubt about it. But single entity what he has done is something which is very wonderful. And he seems to be very modest man also. The point is this is the way it is, sir. Now, few more lines you can write here on integrity. You can write the core principles of integrity are virtues such as compassion, honesty, dependability, generosity, kindness, maturity, objectivity, generosity are virtues such as compassion, honesty, dependability, generosity, kindness, maturity, objectivity, trust, wisdom, and respect. Now there are some places in our constitution also where the word integrity is mentioned. So you can write in the next paragraph, the preamble of our constitution mentions that state and its functionaries will act with integrity and ethics because a dishonest state and unethical state, dishonest and unethical state or civil servant, dishonest and unethical state or civil servant cannot promote any basic principles, laid down in the preamble. And then the next reference is in article. Any basic principles laid down in the preamble. And then the next reference is in Article 14. So you write Article 14. And then the next reference is any
basic principles laid down in the preamble. And then the next reference is in Article 14. So you write Article 14 mandates equality before law. And equal protection of laws within the territory of India. It specifically prohibits civil servants from denying equality to any citizen. From denying equality to any citizen, and requires them to carry out policy implementation without prejudice and in a fair manner. Then you write Article 38 makes it 38 makes it mandatory for the public servants. Makes it mandatory for the public servants to behave ethically. Intellectual integrity, personal integrity, and moral integrity. Although these integrities are interrelated, means if you have one, you can immediately have the other two also. But of all the integrities, the one that is most difficult to accomplish is this, intellectual integrity. And one very good example of a person with intellectual integrity is Socrates. Because intellectual integrity is captured by one word, only one word, and that is. If you go for a mythological example, then Yudhishthira also is an example of intellectual integrity. But the conduct of Yudhishthira tells us that how difficult it is to stand by truth. Circumstantial factors. I told you, sir, many times circumstances make us behave in a manner which is quite unlike us. Yudhishthira is called as Dharmaraj. And even Dharmaraj had to depart from Dharma. This is how the power of circumstances happens. Although he went for a good cause. But even then, if you are a Dharmaraj, you are not expected. Because his guru had specifically called him, mentioning very clearly to him, I don't trust your brothers. I trust you. You have always been the upholder of truth. So, is my son dead? Why he did not say he is dead, but he also did not speak truth loud enough for his guru to hear. So, sir, even when the truth was spoken, it was spoken so gently that I was not able to hear it properly. So, it means intention was bad. You see, Dharmaraj, truth is very difficult to know. Mahatma Gandhi also championed the cause of intellectual integrity. You know, many things which Gandhi's experiments were, okay, many people, many kind politicians also do. They never reveal it. Gandhi revealed it very honestly. That he was busy with his wife and his father was dying. He ignored the dying father. And that he impregnated his wife time and again. And as a result of that, what? The education of Kasturba he suffered. So at least he is honest in confessing it. अब सर जब आपको महात्मा का टाइटल मिल गया, सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये नहीं कहता कि आदमी सच नहीं बोलता होगा, लेकिन एक बात है जो कहते हैं बुरा करना है, उसको बताएगा आदमी, समझ गया ना बात? जब आपको आदमी कह रहा है महात्मा हो तुम, सारी दुनिया कह रही है महात्मा, and then Mahatma tells what is the sinister element inside him, how my biological urges many times overpowered me. It is an example of great confession, sir. The point is this.
Colonel Plaza, then Gandhi ji was, but they will never confess it, and certainly not confess it publicly. The point is this: why? यही problem है. Many of us lack intellectual integrity because we are in persistent denial mode. हम झूठ बोलते हैं. ये तो आप और मैं क्या किस चीज में involved? Self deception. We speak right to ourselves. Once we are convinced, then we speak right to others. जब हम झूठ बोल के कन्विंस हो गए कि नहीं ये झूठ ही सच है, फिर हम दूसरों को ऊपर ट्राई करते हैं. चलो भाई मैं तो कन्विंस हो गया, अब इसको कन्विंस करता हूँ. ये मेरी और आपके जीवन की एक सन कॉमन अकरेंस है. तो मेरा मतलब इसीलिए इसको जो ओवरकम करेगा वो ही पर्सन विद इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी कहलाएगा. और याद रखना, ट्रूथ फॉर इंट्रिंसिक रीजंस, नॉट फॉर इंस्ट्रूमेंटल रीजंस. मतलब समझे? आई स्पीक ट्रूथ फॉर द रीजन ऑफ ट्रूथ. आई डोंट स्पीक ट्रूथ फॉर रीजन ऑफ गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट. ये खास बात है साहब. Truth for the reason of truth. The point is this. So you will write here. Intellectual integrity requires. Copy. और याद रखना. Truth for intrinsic reasons, not for instrumental reasons. मतलब समझे? I speak truth for the reason of truth. I don't speak truth for reason of getting something out of it. ये खास बात है साहब. Truth for the reason of truth. The point is this. So you will write here. Intellectual integrity requires our willingness to stand up for our best judgment of truth. Our willingness to stand up for our best judgment of truth and to act in accordance with that judgment. And to act in accordance with that judgment when the need arises. Willingness to stand up for our best judgment of truth and to act in accordance with that judgment when the need arises. It requires caring for truth. It requires caring for truth for its own sake. For its own sake. When we fail to stand up for our best judgment of truth, we are said to lack intellectual integrity. After we stop people for our best judgment of truth, we are said to lack spirit of truth, and we fail to stand up for its own sake. When we fail to stand up for our best judgment of truth, we are said to lack intellectual integrity. People with intellectual integrity are willing to pursue the truth and they don't just go along with the popular opinion or what is fashionable at that point in time. You can put Galileo also in the same bracket. Galileo talked about the earth revolving around the sun. When the world's church perception was something different, so he was also one who stood by the truth. So eventually he was compelled by the church to ask for forgiveness for having said this. The point is this. You can write intellectual integrity is characterized by. Next slide. Intellectual integrity is characterized by openness to the views of others
comma, impartiality, honesty, courage, and fairness. Courage and fairness. It requires that one is able to overcome self-deceptions, honesty, national intellectual integrity is characterized by openness to the views of others, comma, impartiality, honesty, courage, comma, impartiality, openness to the views of others, comma, impartiality, honesty, courage, and fairness. Courage and fairness. It requires that one is able to overcome self-deceptions and temptations offered by commercialization and vested interests. Offered by commercialization and vested interests. So this gets over and takes us to the second thing, personal integrity. Now, Dr. APJ Kalam. Dr. Kalam is an example of personal integrity. Otherwise, there are many people like Mother Teresa, also example of personal integrity. Baba Amdek, example of personal integrity. There are the people, example of personal integrity. Now, understanding goes like this. See, what is personal integrity? This is yourself. Now, this self has various components. For your easier understanding, I'm taking only 4 components. For example, what kind of relationships I have with others is my social self. What kind of success I have in following what is personal integrity. This is yourself. Now this self has various components. For your easy understanding, I'm taking only 4 components. For example, what kind of relationships I have with others is my social self. What kind of success I have in job or how people find me doing my job, how well I do my job, occupational self. What kind of relationships I enjoy with my spouse and my children, interpersonal self. How do I see my body? How others admire my body? ये तो बड़ा बात है सब, फिजिकल सेल्फ. अब क्या होता है साहब? आपको देखा किसी ने और कहा यार तुम देखने में तो बड़ा गुड लुकिंग है, पर तेरे अंदर दम नहीं है. आपने किस प्रकार का आपने
आगे एक बार मसल क्लियर हो गई आपकी फुटबॉल खेलते चू हो गई चू ओके तो क्या है ये हो रहा है फिजिकल साइड के ऊपर क्वेश्चन मार्क जैसे आप बड़े हो रहे हो किसी ने आपके कॉम्प्लेक्शन के ऊपर कमेंट कर दिया किसी ने आपकी नाक की साइज के ऊपर कर दिया देखो हर आदमी की बॉडी की हर एरिया के ऊपर परफेक्ट प्रेजेंटेशन हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता इट इज नॉट पॉसिबल सम पीपल विल हैव सम पार्ट बेटर अदर पीपल विल हैव अदर पार्ट बेटर you are chosen one of God if every part is fine please understand it is very unlikely so क्या हुआ sir you also have a dark aspect I also have a dark aspect what do we do sir what do we do we deny that part as having our own इसको हमने कर दिया कम अब ये आपके फिजिकल सेल्फ का काला हटा है समझिए बात सर कैसे जैसे किसी के सिर में बाल हो गए वो बाल ऐसे करता है छुपा रहा है देखो बेटा हवा का कहीं छोड़ा है चार दिन नजर आया अरे क्या फर्क पड़ता है वेजिटेशन जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो या टुंड्रा या टाइगर क्या फर्क पड़ता है एक दिन तो सारी खेती खरीदनी है ये पर हमने खड़ा कर दिया ऐसी ऑक्यूपेशनल सेल्फ है आपके बॉस ने बोला तू तो पैसे ला तू ढंग से स्कूल ड्राइवर नहीं कर सकता आपने कोशिश की फिर सही नंबर नाम से आपका ऑक्यूपेशनल सेल्फ नेगेटिव हो गया इसी तरह से सोशल सेल्फ आपके दोस्त आपसे कई बार कट जाते हैं कहते हैं हटो यार इसी साथ मत बैठो कन्वर्सेशन में तुम फेंका होता चाय पिला रहा था ऐसे भूख गया पता चला उसका खूब मेरी जीत में ऐसे मौके में मारा सीधा यहाँ जाके लगा अब मैं कहता नहीं जा अंदर ले जा देखो अब ये आपने टाइमिंग नहीं रखी टाइमिंग तो परमात्मा ने की भाई कौन चीज कहाँ जाके बैठेगी पता तो है ये देखिए आप एग्जाम्पल ऐसी कोई चीज उठा रहे अब आप जब भी एग्जाम्पल लिखोगे एक बात तो याद रखना ये देखो पढ़ाने के तरीके ऐसे ही है लोग अपने स्पेक्ट उतार हिंदी कभी पैदा कर दो पसीना में निकाल ये देखो तरीका ये अब आप देखें इंटरप्रेशन से अब आप देखिए क्यों बोल रहे हैं कहाँ से नहीं सीधे बात कर रहे हैं इंटरप्रेशन से क्यों बोला जाता है टू क्लोज फॉर कंफर्ट फैमिलियरिटी बिग्स कंटेंट भाई जब आप किसी के नजदीक जाते हो तो आप कई चीजें एक्सपोज करते हो और उसमें क्या है आप वल्नरेबल हो जाते हो आप समझिए ना ये बताइए तो क्या उल्टी सीधी बात बहुत उन्होंने कुछ आपका इंटरप्रेशन मिल गया देखिए किसी के जीवन में कम खाली है किसी का बहुत ज्यादा एरिया काला है जो ज्यादा एरिया जिनका काला है वो ज्यादा डिस्टर्ब है जिनका कम एरिया काला है वो ज्यादा प्रेम है जिनका कम काला है उसको कहते हैं congruent self. There is acceptance also of unfavorable part of my life, and now because there is an acceptance, I will make an effort to improve it. Acceptance है ना? ये सब हमारे अंदर limitation है ये सब और जो denial मोड में रहेंगे उनके अंदर होगा incongruent self. Incongruent और जब incongruent self होगा सर तो आप देखिए आप इरेटिव behavior मेरा क्वेश्चन ये है साहब मैं तो ऐसा हूँ अगर इस फॉर्मेट में आपको पसंद हूँ तो आगे चलते हैं अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो जिसको पसंद होगा उसके साथ चलते हैं पिक्चर बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको समझिए ना बात मतलब आप क्या करें ये बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें आई ट्राई टू बिकम बट आई एम नॉट इन ऑर्डर टू आई ट्राई टू बिकम बट आई एम नॉट इन ऑर्डर टू कीप यू इन रिलेशनशिप नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई कॉम्प्रोमाइज विद माय सेल्फ एवरी टाइम एंड आई बिकम अ पर्सन हु लैक्स पर्सनल इंटेंट सर दूसरे को करने के लिए अपनी पहचान से थोड़ी ना सौदा करोगे समझिए ना बात लेकिन हम सब कहीं ना कहीं अपनी पहचान से सौदा करने के लिए ये अब जैसे कि भाई ने बोला भाई आई वांट यू टू बिकम सिविल सर्वेंट आपने अपने को देखा आपने पता लगाया कि मैं सर्वेंट नहीं बनने लायक सिविल सर्वेंट की बात छोड़ो ठीक तो आपने ये रियलाइजेशन किया और आपने कहा डैडी ये नहीं हो सकता मेरे से जो हो सकता वही प्रॉमिस करूंगा आप अपनी पहचान को बनाए रखे लेकिन आपने कहा नहीं पिताजी आपके सपने को पूरा करने के लिए मैं जान लगा दूंगा अरे जान लगाएगा तो तुझे पहचान मिलेगा जान मुझे लगाओ क्या काबिलियत हो आप समझिए बात अब मैं आ रहा हूँ बिना मोड में फिर वो फेल हिसाब में अब मैं वो फेल तो मैंने करों को पहले करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे मैं टीचर कैसे फेल हुआ मैं तो एग्जामिनेशन इंटरव्यू बोर्ड में बोर्ड में कैसे फेल हुआ समझिए ना बात सर अब ये क्या है इनकॉन्फिडेंस सेल्फ हो रहा है ये आदमी सारी जिंदगी ये कौन अभी तुम कहते हैं नो योरसेल्फ
self knowledge is the beginning of all wisdom. इसीलिए तो बोला कि ये जो काले काले एरिया है इनको हटा दो, और जब काले एरिया हट जाएंगे तो आप क्या करोगे? गौतम बुद्ध के बाद you will have what? Self-awareness. And when there is self-awareness, erratic behavior unlikely to occur. Erratic behavior unlikely to occur. Please understand, this is what is called as personal identity. I know myself very objectively. I've accepted those aspects of myself also which are not so desirable. The first noun is acceptance. Then there is effort to improve them. Yes, sir. Rather than keeping them in a denial mode, I have accepted them, and now I make an effort to improve upon them. This is called as presence of personal integrity. तो आपको बात समझ में आ रही होगी. This is personal. Such kind of individuals prosper upon because they are at peace with themselves. देखो सर, एक क्वेश्चन ये भी है. I am at peace with myself. जैसे गांधी ने बोला था ना एक स्टेटमेंट, you cannot humiliate me without my consent. तो वो मतलब यही है कि मैं मेरी personal integrity है. आप मुझे फिर उदाहरण जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. तू मुझे पता क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता. समझिए ना, मतलब आई एम क्लियर अबाउट इट. पर्सनल इंटेग्रिटी. तो आई अंडरस्टैंड दैट इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी lays a platform for personal integrity. There is no doubt about it. But then you know, intellectual integrity is all the time very difficult to accomplish in life. But yes, while a lot of people can have fair measure of success in their personal integrity by knowing themselves better. And you can claim to know other person well only when you know yourself well. याद रखना बात. दूसरे को आप तभी जान पाओगे जब आप अपने में जाओ. अगर आप अपने में जानते हो, दूसरे को जान पाओगे. याद रखना. Personal integrity. Yes, sir. Now you can write it as follows. Personal integrity consists in organizing. Personal integrity consists in organizing one's desires, volitions, volition का मतलब will, commitments, values and actions in such a way one in organizing personal integrity. Yes, sir. Now you can write it as follows. Personal integrity consists in organizing. Personal integrity consists in organizing one's desires, volitions, volition का मतलब will, commitments, values and actions in such a way that there is no conflict between them. In such a way that there is no conflict between them. After full stop. Thus, when a person possesses personal integrity, the various aspects that constitute his self, are fully integrated. Personal integrity requires that the individual are fully integrated. Personal integrity requires that the individual subscribes to some consistent set of principles and commitments in the face of set of principles and commitments in the face of temptations and challenges. And uphold these principles and uphold these principles
temptations and challenges. And uphold these principles and commitments for what individuals takes. Thus, when a person possesses personal integrity, the various aspects that constitute his self, are fully integrated. Personal integrity requires that the individual subscribes to some consistent set of principles and commitments in the face of temptations and challenges. And uphold these principles and commitments for what individuals consider to be the right reason. What individual considers to be the right reason. But let me tell you, sometimes, personal integrity is slightly, I would say, a used concept also. For example, I will consider cheating as right, and I cheat whosoever comes in front of me. So I say I have personal integrity. I give it even my parents. ये क्या मतलब हुआ? तो कहने का मतलब ये है, आप सोचिए कि the word is a very positive word, but sometimes some people, may misuse. For example, I belong to a terrorist group. Now that terrorist group has a mission to destabilize a democratically elected government, and I am committed wholeheartedly to the goals of my group. So there is a likelihood that my group members may consider me to be having personal integrity. Are you getting my point or not? But that is an indirect expression of the word. Sometimes, some words are used to take, for example, when we use the word bold. Now, if somebody is regarded as a bold person, so basically the idea is very courageous. So if you say well conduct of Maharana Pratap represents boldness, तो बात समझ में आ रही है। पर एक आदमी करप्ट है सिस्टम में, और आप बात कह रहे हैं वो बड़ा बोल्ड है, वो आ जाएगा दूसरे लेता है। अब ये वर्ड बोल्ड का मिसयूज है एक्चुअली, ये बड़ा इनजस्टिस है बोल्ड वर्ड के साथ। आप समझ रहे हैं ना सब बात? ये मिसयूज है वर्ड का, वो बोल्ड नहीं है, ही इज अ वेरी कनिंग एंड अ वेरी shrewd person, not even clever. Word clever is also having positive connotation. Please understand like this. तो कहने का मतलब वर्ड्स का misinterpret हो जाता है. So the same way as people describe bold many times in a slightly negative side manner also. So same way personal integrity also sometimes it is described as in negative manner. For example, if you come across maybe in a news this word, this terrorist group was able to ensure complete loyalty of its members to the cause of the group, and therefore they provided their training. They provided the training to their members in a manner which brings their high order personal integrity. तो वो context अलग है. मतलब समझ रहे हो ना बात? वो होगा, लेकिन वो बड़ी नेगेटिव साइड में. ये बात. अब हम आते हैं थर्ड टर्म में, moral integrity. The third term is moral integrity. Moral integrity. अब मैंने डॉक्टर कलाम इसलिए कहा, when डॉक्टर कलाम was in राष्ट्रपति भवन, he made sure that his relatives came and stayed there and paid for their stay. ये बात आपको बताऊँ. All the various gifts and mementos and other awards that he was given, he never took any one of them to his home once he retired. और कितनी अजीब सी बात है. He could do only one term. Such a great person to do only one term, it is a matter of great shame for these politicians. The point is this: he did make the office of President of India really an honorable office by his conduct. There is no denying this fact. So it is an example of a person with very high level personal integrity. आपकी और मेरी थोड़ी सी म्यूजिक है, वो क्या? जिंदगी में आपने कुछ ऐसे सामान खरीदा होगा जो आपके पास ऑलरेडी है और जिसकी आपको जरूरत नहीं है. मैंने भी ऐसा खरीदा. फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ क्लोथ खरीद लिए, ठीक है, जिनको कभी आप पहन नहीं पाए, ना आपने किसी और को दिए पहनने के लिए, तो रखे रखे बेकार होते. कुछ ऐसी चीजें हम कर लेते हैं, हम जानते हैं कि साहब ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी खरीदते हैं. तब हम डिजायर करवाते नहीं कि मैं तो पहन लूंगा, 10 पाँच की बात है, अब तो दिल्ली में सर्दी बहुत बढ़ रही है, ये नई जैकेट थी मैं पहन लूंगा. अब सोचिए सर, हम पहन नहीं पाते उनको. ऐसे होटल में खाना ऑर्डर कर दिया, क्यों कभी खा नहीं पाए, फिर उसको पैक कराया, घर में भी खाया,
and in order to do justice to ourselves we stay apart. Then what about obedience and service to parents? भाई मेरे thought आपसे मैच करे ना करे, पर मेरी सर्विस ओरिएंटेशन तो आपसे हमेशा मैच करनी चाहिए। भाई मैं आपसे अलग सोच सकता हूँ, पर अगर जरूरत पड़ी तो आपकी सेवा में मेरी पूरी जो है तन मन और धन लगेगा, वो कमिटमेंट होनी चाहिए ना, वो तो बात अलग है। Your thought may not match, but that does not mean that you will not be what is called as ready for service to your parents. ये बात कोई मतलब नहीं है। सर्विस को तो पेरेंट्स से क्या हो सकता है? मैचिंग का हॉट स्पॉट हो सकता है, आपके मैच ना करते हो सर, आप लोग जीजी है जनरेशन गैप, आपके और मेरे बीच में भी बहुत बड़ा जीजी है सर, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में भी जीजी होगा, जनरेशन गैप तो एग्जिस्ट करता है आजकल, तो थोड़ा उसका मैच करते हो, पर सर्विस माइंडसेट तो एक अलग चीज है सर। वो तो मेरे हिसाब से द वेरी फैक्ट दैट दे हैव गिवन वर्क टू अस, नो मैटर whether they have been good to us or bad to us, we must reciprocate to them as a man. हस्बैंड वाइफ के थॉट मैच करने का मतलब नहीं है, कभी कभी नहीं मैचिंग करने का मतलब सही है। मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस एंड पप्पू विल बी फ्रॉम प्लूटो, जो आजकल एक्टिव हो चुका है। ये सब कंपैटिबिलिटी देखो, ये आप दिमाग में रखिए, द वाइफ इज द ब्रेन ऑफ वीमेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मैन, द प्रायोरिटीज दैट वीमेन हैव डिफरेंट फ्रॉम मैन, द वैल्यू सिस्टम द इंटरेस्ट व्हिच वीमेन हैव डिफरेंट फ्रॉम मैन, सो देयर इज सम disagreement got to be present, but what is healthy disagreement? Other is unhealthy disagreement. Healthy disagreement में ये है साहब, no matter how much differences I have with you, I will not hit you below the belt, nor you will hit me below the belt. लेकिन लोग क्या करते हैं? They play a game of one-upmanship. They try to dominate the other person. So start hitting below the belt. जैसे आपने कुछ सच बातें बता दी, जी मैं बताना कॉलेज में वो आता था, अब बस उसी बात के ऊपर चर्चा होती है, तुम तो बोलते हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर स्ट्रेट, अब मैंने बोला आपसे, अगर ये खाने बिल्कुल सही है तो फिर दिक्कत क्या है? मैंने कहा था यू कैन नॉट ह्यूमिलिएट मी विदाउट माय कंसेंट। यू सी, इफ यू आर अ वेल बिहेव्ड, erudite, scholarly person with good sense of humor, you will always attract people around you, even if your wife claims that it is not so, it is not correct, let her claim. She is probably claiming because she is jealous of your capability to have magnetic influence. लेकिन आप ही बेहतर आदमी को आप क्या करते हो? You play down on these things so that her insecurity is not higher. ये देखने से
क्योंकि आपको पता है कि साहब always attract people around you, even if your wife claims that it is not so, it is not correct. Let her claim. She is probably claiming because she is jealous of your capability to have magnetic influence. लेकिन आप भी डेवलप करते हो, आप क्या करते हो? You play upon these things, so that her insecurity is not heightened. ये देखते हैं आप, क्योंकि आपको पता है कि साहब जो है जिनके सहयोग से चिंटू और चिंटा दुनिया में आए हैं, इसलिए मैं हमेशा इनका जो है स्क्रू बजा रखूंगा। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप रेखा के पास हो, प्रॉब्लम ये है रेखा के पास आपके पास मौलिक रुचि है, आपकी लक्ष्मण रेखा है। Yes, getting close to people is not a problem. You must know what is the line which you should not cross. और ये जो लाइन है ना सर, ये आपको पता होगी जब आप पर्सनल इंटेग्रिटी वाले आते हो, जैसे कुछ रिश्तों में आप रेसिप्रोकेशन की उम्मीद ना रखें, जैसे बाप बेटे का रिश्ता है, वो यूनिडायरेक्शनल हो, उसमें पिताजी बेटे के लिए करेंगे, बेटा पिताजी के लिए करेगा उसकी तरफ से, टीचर ब्रॉड का रिलेशनशिप मैं बाबा क्या करूँ हमेशा मैं आपको कहता हूं सी यू कैन नॉट basking in the glory of your success that you cannot stop, but I must understand that I should not clamor for you to I should not clamor that you make me the part of your success. भाई आप मुझे आपकी सक्सेस में खुश होने से तो नहीं रोक सकते। प्रॉब्लम तो तब आएगी ना जब मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी सक्सेस का अभिन्न पार्ट बनाएं, उसके लिए चाहिए ना वो पीछे नहीं आ रहा मैं जब मेरी आपसे रिश्ते में डिमांड ही नहीं है तो मेरे लिए खुशी तो है कि क्योंकि कोई ना कोई सक्सेस होगा और भी होगी काम है। अगर ये नहीं आप अपने सेल्फ में रखेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं है सर। ये इट्स फॉर सर्विस यू नीड नॉट स्टे विद देम मुझे ना मेरे को नहीं नीड ऐसा थोड़ी ना कि साथ सर रेटिंग सर्विस होगी ये तो मैं इतने निवारे के रोज मैंने सिंगल लिया ठीक है सर ऐसे थोड़ी रहता और अगर उसकी छोड़ दोगे तो साथ भी रहेंगे और साथ रहते रहते भी तो अलग अलग रहता है। ये कहने का मतलब ये जो काम करना चाहता है उसके लिए काम करने का प्रयास जो नहीं करना चाहता सर वो मान गए ये प्लीज अंडरस्टैंड। तो ये मैं कह रहा हूं आपसे ये क्लैरिटी नहीं है, हमको दिक्कत नहीं है जब ये क्लैरिटी मिसिंग होगी ना सर तभी ठीक बात है। और मेरा काम है इतने जज्बे से इस वैल्यू सिस्टम को बनाना इसलिए है क्योंकि मैं ये मानता हूं इसमें कुछ भी चीज आप यूटिलाइज करेंगे तो आपकी लाइफ काफी बेटर होगी। ये जो दोनों टॉपिक है ये वाला टॉपिक और इसका अगला टॉपिक इमोशनल इंटेलिजेंस और दोनों टॉपिक जीवन के साथ रिलेटेड इसे मैं बता दूंगा पर्सनल इंटेलिजेंस समझ रहे हो अब इसके बाद तीसरी मॉरल मॉरल इंटेग्रिटी। देखिए पर्सनल इंटेग्रिटी नॉलेज ऑफ सेल्फ, मॉरल इंटेग्रिटी कमिटमेंट टू मॉरल प्रिंसिपल्स। समझ रहे आप अगर मेरे को क्लैरिटी अपने सेल्फ के बारे में तो मुझे अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को डेवलप करने में दिक्कत होगी। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको प्रैक्टिकल। अब देखिए इन्होंने कहा सर्विस, अब मैं बताता हूं यू हैव अ मॉरल पोजीशन दैट मॉरल पोजीशन इज दैट व्हेन इट कम्स टू चॉइस ऑफ मेट इन माय लाइफ आई विल टेक अ डिसीजन based on my consideration and preferences and not be guided by the choice made by my father and mother. So for me, the one who is casted for me is important, who may not necessarily be from my caste. अब आपकी moral यहाँ पर आपके लिए integrity, clarity है self में, आपका moral principle है। Now if parents say no, with this girl, our self-esteem will be destroyed, we will lose our respect in village etc. आप कहोगे कि आपकी struggle है। मैं तो कोई ऐसा काम कर नहीं रहा जिससे आपके जो है पगड़ी हिल जाए या आपके शरीर में ताब लग जाए। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं तो बीमारी कर रहा हूँ। अब ये तो मेरी चॉइस है किसे करूँ मैं करूँ, जिंदगी मैंने चलानी है आपने तो चलानी। आप कह रहे हो मेरी मम्मी सच कहेंगे अगर मम्मी सच हुई तो प्रॉब्लम आपकी है, आपने पकड़ के लिए जेब देखो मेरी हेडेक नहीं है अम्मा सच टूट गई और अगर उनका कूदना लिखा है तो कूदने की जरूरत है, इसमें टेंशन नहीं करना। मैं टेंशन नहीं कर रहा इसमें, देखो जो कूदने के लिए आया है वो कूद ही जाएगा, मैं क्या करूँगा उसमें भाई पिक्चर हमारी क्लियर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक बार तो कूद गई तो मैं कूद गया तो मैं सर्विस के लिए गया मैं पूरा है मम्मा दोबारा चला कर लगा अभी तो एक ही गया है फिर दोनों चले जाएंगे और पिताजी की उम्र नहीं है कि तुम्हें गोदी में लेकर जरूरत है। या समझिए बात मैंने क्लैरिटी कर दी। अब इसमें मैं बिल्कुल क्लियर हूं मुझे कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं, लेकिन अगर मेरे सेल्फ में डाउट रहेगा ना सर तो मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस होगी यार मेरी डिस्कवरी नहीं होना आई एम रिस्पांसिबल फॉर प्रॉब्लम्स आई एम मेडिकल प्रॉब्लम सर ये इशू। इसलिए आप अपनी पिक्चर जो है क्लियर किए दिमाग में अगर आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी है तो आपको अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को भी डिफाइन करने में आसान होगा। कहने का मतलब ये है मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है सब कैसे मैं आपसे भाई जब मैं कह रहा हूँ मुझे ये इच्छा ही नहीं कि आप मुझे पहचाने, हम दोबारा मिले आपने नहीं पहचाना मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप समझिए क्योंकि मैं पहचान के लिए काम नहीं कर रहा, मैं तो काम कर रहा हूँ क्या लगा आप मुझे बात आगे तो पूरा है समझिए बात। हम जब दूसरे चढ़ते हम कहते हैं उन्होंने हमें स्टाइल बनाया वो जो है हमारे को पैसे दे रहे साथ हमारी बात सुन रहे हैं, हाँ लोगों को पैसे देकर बुलाना पड़ता है ये सुनो मेरी बात ये देखिए आप सुन रहे हो ये बहुत बड़ी बात है प्लीज अंडरस्टैंड। एटीट्यूड का है खेल को ग्लास है हाफ एम्प्टी और हाफ फुल एटीट्यूड से जुड़ी है
requires moral integrity requires an unconditional and unwavering commitment. Unconditional and unwavering commitment. Unwavering मतलब तो मिलेगा. Unwavering commitment to some or the other moral principles. To some or the other moral principles. We cannot have moral integrity without having personal integrity. But we can have personal integrity without having moral integrity. We can have personal integrity without having moral integrity. Since one can have strong commitment, without it having moral basis. One can have strong commitment without it having moral basis. Commitment strong हो सकता है, जो भी moral basis हो सकता है. वही मैंने आपको बोली commitment to the goals of terrorist group. समझिए ना सर बात? ये वैसे तो देखिए कायदे से enlightened आदमी कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें दूसरों को कष्ट पहुंचे. लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं इस तरह की बातें करने वाले स्वार्थ से. Without having moral integrity, we can have personal integrity without having moral integrity. Since one can have strong commitment, without it having moral basis. One can have strong commitment without it having moral basis. Commitment strong हो सकता है, जो भी moral basis हो सकता है. वही जो मैंने आपको बोली commitment to the goals of terrorist group. समझिए ना सर बात? ये वैसे तो देखिए कायदे से enlightened आदमी कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें दूसरों को कष्ट पहुंचे. लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं इस तरह की बातें करने वाले काम नहीं होता है. Now what we take up next is policy को छोड़ दीजिए. हम आप कहते हैं ठीक है हम उनका बात बराबर बैठते हैं. जबकि हमारे अंदर क्या है? बहुत बेइज्जती और क्या नहीं है. हाँ मतलब ये ऑनेस्टी में क्या है कि ऑनेस्टी का डोमेन है क्योंकि वो नहीं है. इंटेग्रिटी में पहला बच्चा कंप्लीट. ऑनेस्टी जो है वो पार्ट है इंटेग्रिटी. बट इंटेग्रिटी मींस ऑनेस्टी टुवर्ड्स वन एंड ऑल will define individual integrity. But honesty can be limited domain also. Yes. भैया भूल जाओ उस बोलो में लगता है. अब दोबारा देखो हमारे बच्चे का ये ना एक बार साइकिल का बच्चा भूल गया रिवर्स में बोला ऐसे बनता पैदल मारने को बोला नहीं तो वो भी आता है और उसका दूसरी क्लास में आएगी. देखिए देखो आपको है तो हमें आप जाओ इसमें कंफ्यूजन नहीं है. एक तो लिखा है अगर आपको याद. दूसरी बात तो लिखी morals are those values which enable us to make distinction between right and wrong and are held by the individual. समझ रहे हो ना बात? और वैसे मैं आपको बताऊं देखिए जो वर्ड moral है ना वो बाय नेचर पॉजिटिव वर्ड है. वर्ड वैल्यू जो है बाय नेचर पॉजिटिव वर्ड है. वर्ड एथिक्स बाय नेचर पॉजिटिव वर्ड है. इसीलिए हम ये मानते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट बने ये मानते हैं कि इंसान की जो आत्मा है सोल वो हमेशा उसको सही दिशा में लेके. पर प्रॉब्लम क्या होती है हम अपने सोल को ज्यादा से ढक देते हैं. अपने सोल को कवर कर लिया इसलिए आप आत्मा की आवाज नहीं सुनते. प्रॉब्लम ये यही प्रॉब्लम. आत्मा कभी आपको गलत जगह नहीं मिलेगी. जो आदमी गलत काम कर रहा होता है ना उसको भी कहने की आइडिया होता है पहली बार या दूसरी बार करता है कि सब गलत कर रहा है लेकिन वो जस्टिफाई करता है उसको बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ द पॉइंट इज दिस. हम कहते हैं बेटा अपनी आत्मा की आवाज सुन और अपनी आत्मा में लिपटी हुई चादर को हटा और आगे. डिफरेंस बिटवीन मॉरल इंटेग्रिटी एंड पर्सनल इंटेग्रिटी है कि देखिए पर्सनल इंटेग्रिटी में योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ will become perfect and as a result of that you will display behaviors which are consistent. भाई जब आप अपने को नहीं जानते तब तो हॉट एंड कोल्ड फॉलो करोगे. अब जैसे मेरी एक पोजीशन है मैं क्लियर हूं कि साहब मैं जो है किसी व्यक्ति से इंटरेक्शन किसी लालच से नहीं करता. मेरी ये पोजीशन अब कोई बड़ा हो या छोटा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे क्योंकि बड़े वाले से लालच करना छोटे वाले से करना. आप समझ रहे हो मतलब ये मेरी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है. जनरली स्पीकिंग क्या होता है जब आदमी के पास ये अवेयरनेस होती है तो वो
उतना ही कम कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट उतना ही कम होगा। तो मॉरल इंटेग्रिटी ये है कि देयर आर डिफाइंड सेट ऑफ मॉरल्स व्हिच आर लेड एंड द इंडिविजुअल हैज टू डिस्प्ले कंसिस्टेंसी इन दोस मॉरल बिहेवियर्स। समझ गए ना बात? ये बताओ। और जितनी ज्यादा क्लैरिटी हमारी सेल्फ की होगी उतना ही ज्यादा चांस है कि हम ये कंसिस्टेंसी दिखा पाए। पर ऐसा जरूर हो सकता है कि आपके सेल्फ में क्लैरिटी है लेकिन गिवन मॉरल प्रिंसिपल को आप सब्सक्राइब नहीं करते। आप समझ लो बच्चे ये काम नहीं करता, मैं भी अपनी सर्विस अपने पेरेंट्स की सर्विस करूंगा। मेरा एम ये है जो बाप ने मेरे साथ किया वो मैं बाप को रिटर्न दूंगा। अगर वो जल्लाद थे तो मैं भी जल्लाद हूं। अब ये इसका प्रिंसिपल है, आप समझ रहे हो ना? ये इसका प्रिंसिपल है। और आप भी अपना प्रिंसिपल हो सकता है, मॉरल में तो इंडिपेंडेंस है। लेकिन आप कहते हैं जो समाज में रहते हो तो एक सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल जो समाज तय कर रहा है आप उसे फॉलो कर लो। उनको जब हम फॉलो करते रहता था तो हम कहते हैं मॉरल इंटेग्रिटी। ये होता है। इसलिए जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है ना, दे आर बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, देयर कंडक्ट इज बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये आप याद रखिए, ये वही बात you know नहीं कमिटमेंट ये ना मैं कहता हूँ आपसे कमिटमेंट एक बेसिक चीज होती है कमिटमेंट। अब वन बेसिक मतलब ये है कि आई मे हैव कमिटमेंट टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, आई एम एन आर्टिस्ट। नाउ आई डू नॉट, अब देखिए जो एम एफ हुसैन का कॉन्फ्लिक्ट था वो यहाँ पर एम एफ हुसैन पेंटेड हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस इन अ सेडक्टिव पोसेस which many right-wing Hindu organizations are opposed. आप सोच रहे हो उन्होंने कहा साथ गलत है। हमने एम एफ हुसैन साहब ने कहा भाई मेरा आर्ट है, मैं तो पोस्ट बना रहा हूं, मेरी पर्सनल इंटेग्रिटी है। समझ गए ना? मुझे लगता है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बेटर है, मैं पोस्ट को दे रहा हूं। अब आप अगर ये कहते हो कि आपका गॉड जो है सिलेक्टिव नहीं है तो गलत। हमारे तो सारी गॉड सिलेक्टिव है। आप समझिए बात? तो यहां तक जाके पर्सनल इंटेग्रिटी वर्सेस मॉरल। अब जैसे मैं राइटिंग करता हूँ, मैंने एक नॉवल लिखा। अब वो नॉवल जो था दो कम्युनिटीज के रिलेशनशिप के बारे में था, ठीक है जी। अब उसमें क्या है, मैंने जो ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा वो लिखा। अब क्या ऐसा टेंशन हो गया दो कम्युनिटीज के बीच में, जब मैं बुक रिलीज कर रहा था, मैंने फिर भी बुक रिलीज कर दी, टेंशन उस बुक के बाद और बढ़ गया। तो मेरे पास क्या है, पर्सनल इंटेग्रिटी है, लेकिन क्या नहीं है यहाँ पर, मुझे वो सिचुएशन देखनी थी और उस टाइम उस बुक को भी बोल लेना ऐसे ऐसे। तो जरूरी नहीं है कि वैसे तो आप एक बात याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इंटेग्रिटी है इंटेलेक्चुअल ट्रू, लेकिन ये भी तो आगे फॉलो नहीं होती ना। आप डिप्लोमेट, आपने कंट्री के ऑनर को डिफेंड करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल रहे हो, तो दिस इज डिपार्चर फ्रॉम इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, बट डेफिनेटली प्रेजेंस ऑफ मॉरल इंटेग्रिटी। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नहीं होती, शेड्स ऑफ ग्रे है इस मामले में। समझ रहे हो ना बात? अब एक डिप्लोमेट है वो हर बात सच थोड़ी ना बोलेगा। अब मान लो कनाडा में आपने आर्मी में रह गया, अब आप तो यही बोलोगे ना, नहीं 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 अरे हम तो गांधी जी के आदमी है, हम थोड़ी ना मारते लोगों को, लोग हमारे पे मरते हैं। ये ऐसा। अब देखिए आपने अहमदाबाद की अमेरिका में कोशिश की, वो गए होगी आपकी। अच्छा अमेरिका वाले थे या कनाडा वाला तो है अलग आदमी है। अमेरिका वाले थे वो कहते हैं साहब इसको हम रखेंगे सवाल में, जब इंडिया जाकर आपके तरीके बताएंगे ये करता बता कर देंगे। देखो साहब जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सबकी फाइल करवा रखी है, कैसी मायावती लग रही है, फाइल देख लीजिए जय मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, वही अभी ऐसी अमेरिका हमारी क्या करता जब लग रहा फाइल दिखा रहे ये साफ सुथरा बड़ी मछली छोटी मछली को कलर लगी समझे ना बात? कहानी यही है। इसीलिए ना ब्लैक एंड व्हाइट चीजें नहीं, इसीलिए नंबर वन जो इंटेग्रिटी बोली गई है वो कौन सी है? इंटेलेक्चुअल। ये बात नंबर वन इंटेग्रिटी। अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इंटेग्रिटी है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटेग्रिटी इन गवर्नेंस। Significance of integrity in governance. Point number one. Integrity ensures that administrators and public functionaries do not misuse integrity in governance. Of integrity in governance. Point number one. Integrity ensures that
administrators and public functionaries do not misuse their official positions by using the information acquired in course of their official duties to further their private interest. To further their private interest. Second point, comply with the law and uphold the administration, comply with law to further their private interest. To further their private interest. Second point, comply with the law and uphold the administration, comply with law and uphold the administration of justice. Number 3, keep accurate records and handle the information as openly as possible within the legal framework. And do not disclose official information without authority. Next point, always act in a manner that is professional and that retains the confidence of all those with whom they have dealings. All those with whom they have dealings. And that retains the confidence of all those with whom they have dealings. All those with whom they have dealings. Next is, fulfill their duties and obligations with whom they have dealings. Next is, fulfill their duties
obligations, responsibility, and make sure that public and other resources are used properly and efficiently. Next is deal with public and their affairs. Deal with public and their affairs fairly, efficiently, promptly, sensitively, and effectively. Next is deal with public and their affairs. Deal with public and their affairs fairly, efficiently, promptly, sensitively, and effectively, and to the best of their abilities. Next is last point. Not accept gifts. Not accept gifts or hospitality or receive other benefits from anyone which might reasonably be seen to compromise their personal judgment. Also understand that more the integrity, the less the corruption. Inversely proportional. And the more the corruption, less the integrity. एक बात दिमाग में रखना. और दूसरी बात, if they ask you what are the reasons for decline of integrity in public servants in recent times, so the reasons that are responsible for rise in corruption are also the reasons responsible for decline of integrity. Keep in mind this. However, let me tell you, there are institutional reasons behind. And in institutional reasons, the politicization of various institutions is a very, very big reason responsible for decline of integrity. Then there are social factors also that are responsible for decline of integrity, such as rising consumerism and commodification. भाई आदमी की आइडेंटिटी का पार्ट, उसके पास जो गुड्स और सर्विसेज है वो है. अब पब्लिक सर्वेंट के पास नहीं होगा तो कुछ आएगा सर मेरे पास. Social factors. Yeah. And then there are also historical factors. For example, the British introduction of culture of bakshish, नजराना, शुक्राना, मेरे कराना, ये जो है अंग्रेजों ने काम करवाया, तो ये भी फैक्टर है. Then, apart from this, you can say there are administrative factors also, but they might come under institutional only. अगर institutional को political sector, जैसे वो administrative भी उसके अंदर आता है. तो administrative में, for example, poor salary structure of public servants, presence of red tapeism, cumbersome rules, regulations, laws, procedures. ये सब है. And then you have individual factors also. Individual factors include, say for example, emissions, etc.
कुरुक्षेत्र का है। कुरुक्षेत्र जो उनकी विदार है दिनकर जी। महाभारत युद्ध में 13वां दिवस कौरवों और पांडवों दोनों के लिए सबसे त्रासदायक था। 13वां दिन एक ऐसा दिन था जब अभी थी अपनी चरण पर थी। मैं आज आपको उसी 13वें दिवस की दास्तान इसका माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। जब कुरुक्षेत्र की समरभूमि में सक्षिया पर भीष्म तक कुरुकुल के नैनों में क्रोधाग्नि और भीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति एक चाल चली थी शकुनी ने, जिसने अस्त्र सब छूट रहे वो चाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा उच्च पांडव समरभूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया। सब समरभूमि से भाग लिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। एक सेना की दशा देख अर्जुन को क्रोध तबाह हुआ। बलुना कृष्ण का पांचजन्य कर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का चूर हुआ। जो सोचा था वह विफल हुआ। सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगर्तों ने मिलकर हम प्राण पे प्राण लड़ाएंगे। हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता उपहार नहीं। फिर क्या था? फिर क्या था? ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की जिसका भेदन हो सके नहीं। उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई। यह देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदा शांतित रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धनु है। उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धनु है। सबने देखा कोई और नहीं ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो ये सुन साहस सौ गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले कुछ नहीं चले। कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले गदा गदा धन नहीं चले। अभिमन्यु को न रोक सका वो द्वार तीसरे पार हुए। पर राजद्वार पर जयद्रथ था चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा पीछे न कोई अपना था। पर विचलित तनिक न हुआ वीर ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक बड़ा कोई दो सब कोई ले झुंडों का झुंड बड़ा लाशों से पटने लगी था। जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया। फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था। वह कर्ण भिड़ा जो 100 बाण चलाने वाला था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया वो दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित ने सबका नाम पुकारा है। सब इसे साथ मिलकर मारो ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ फिर गए साथों ने ऐसा काम किया। रथ तोड़ साथी को मारा घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए। उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के चक्के छुड़ा दिए। यह देख अजब दुशासन ने तब सर पर कड़ा प्रहार किया। गिर गया धरा पर वीर तभी पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब माया पद की लीला है। मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं। कितनों को धूल चटाया है कितने गुरुओं के नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं।
the range for a derivation. Scaling factors continuous commodification. This concept of the more independent bodies. laws procedure. Apart from this, you can say of culture of बख्शीश, नजराना, शुक्राना, मेरे कराना. ये जो है ये तो जन्म करता है, तो ये भी फैक्टर है. Then, apart from this, you can say there are administrative factors also, though they might come under institutional only. अगर institutional को आप political लिखते हो, वैसे तो administrative भी उसके अंदर आता है. तो administrative में for example, poor salary structure of public servants, presence of red tapeism, cumbersome rules, regulation, laws, procedures. ये सब है सर. And then you have individual factors also. Individual factors include, say for example, unrealistic aspirations, ambitions, etc. Need for immediate gratification. Unrealistic aspirations बताएंगे, ambition, etc. Need for immediate gratification. और इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं. अगर कभी क्वेश्चन आता है तो इंटेग्रिटी का मामला हुआ है. और ये आप अगर आप सिर्फ अपने कंधे पर रख के लिखे ना, and then you have individual factors also. So they might come under institutional only. अगर institutional को आप political लिखते हो, वैसे तो administrative भी उसके अंदर आता है. तो administrative में for example, poor salary structure of public servants, presence of red tapeism, cumbersome rules, regulation, laws, procedures. ये सब है सर. And then you have individual factors also. Individual factors include, say for example, unrealistic aspirations, ambitions, etc. Need for immediate gratification. Unrealistic aspirations बताएंगे, ambition, etc. Need for immediate gratification. और इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं. अगर कभी क्वेश्चन आता है तो इंटेग्रिटी का मामला हुआ है. और ये आपको बताता हूं, अगर आप सिर्फ अपने कंधे पर रख के लिखे ना क्वेश्चन लिखेंगे तो आप पाएंगे कि हर साल किसी ना किसी रूप में इंटेग्रिटी का क्वेश्चन हर साल. और कभी तो दो क्वेश्चन आते हैं साहब, एक केस स्टडी के रूप में और दूसरा जो है कन्वेंशनल क्वेश्चन के रूप में. वो तो क्वेश्चन भी है ऑन इंटेग्रिटी. अब हम आते हैं साहब उस वैल्यू पे जिसकी मार्केट में वैल्यू तो होता है लेकिन यूपीएससी में टॉलरेंस. डिप्लोमेट से तो डायरेक्टली प्राइस मिलेगा भी मांगा कि नहीं ऐसा डिप्लोमेट से प्राइस तो मेरे ख्याल से नहीं होती. हाँ रॉ के एजेंट से प्राइस भेजी तो है सर, उनको तो पैसा बहुत मिलता है. रॉ में अगर आप 100 होते तो मिलता है उनको बड़ा पैसा मिलता है प्राइस देने के लिए. भाई ऐसे तो हिसाब तो नहीं होगा, आप डिप्लोमेट करना ही चाहिए क्योंकि जो आप प्राइस देके काम कर रहे हो वो टेम्पररी होगा, कल वो प्राइस और मांगेगा, तब तक देते रहो. नहीं तो यार जमीन उसी कंट्री से तेल लेने से पूछा है
रिस्पेक्ट फॉर हायरार्की। और आर्मी में जो वैल्यू को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है वो है ओबीडियंस। प्लीज अंडरस्टैंड। अब जो ब्यूरोक्रेटिक सोशलाइजेशन है उसमें ओबीडियंस और रिस्पेक्ट फॉर हायरार्की को इतनी ज्यादा तवज्जो दी जाएगी एक्सेप्ट फॉर यूनिफॉर्म सर्विस लाइक इंडियन पुलिस सर्विस। ये फर्क है। नहीं फर्क नहीं, क्योंकि बिना ओबीडियंस के और हायरार्की के आर्मी चल नहीं सकती। क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे अपने सीनियर को तो देख सकता हूं, बट काफी वैल्यू सेम ही है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी, फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, दे आर ऑल सेम। यस, देखो करप्टेड आर्मी नहीं है, वो क्या आर्मी नहीं कर सकता, वो कर सकता, सबके कर सकता है। आप याद रखना, जहां अथॉरिटी आई और अथॉरिटी में अकाउंटेबिलिटी विल कम, करप्शन करेगी। अरे आर्मी में तो ऐसे ऐसे यहाँ पे ऑफिसर है जो अपनी बीवी की सैंडल की है, जम्मू से एरोप्लेन चलाते हैं तो दिल्ली में लैंड करता है और उनकी सैंडल लेके जाता है। ये रिकॉर्डेड है। ऐसा नहीं है कि आर्मी में करप्शन नहीं है, आर्मी बहुत ज्यादा करप्शन है। इस गलत फहमी में मत रहना कि आर्मी में करप्शन नहीं है। करप्शन तो ना यार, एक बताऊं, कंटेजियस है। अगर एक इंस्टीट्यूशन में करप्शन होगा तो वो इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी करप्ट करेगा, ये गारंटी है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यहाँ पर करप्शन है वहां पर भी, ऐसा नहीं। ये नहीं कह सकते आप सिविल सर्वेंट्स आर एंड आर्मी पीपल आर नॉट देयर। प्लीज अंडरस्टैंड लाइक दिस। करप्शन तो आते हैं, जुडिशरी में करप्शन है, पुलिस में भी करप्शन है और मीडिया में भी करप्शन है। और सच्चाई यही है कि करप्शन के अगेंस्ट कोई नेता इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। करप्शन इज अ नॉन इशू इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस तरह से मामला आता है, इट इज अ नॉन इशू। यहाँ पे तो सब वही वर्क फोर्स है, एक जो बेचारे आपको नहीं तरह प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं जो टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं, दूसरे जो है पटवारी बने गए, तहसीलदार बने गए, वो टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं। तो यही हो रहा है और क्या हो रहा है, साफ बात ये सब करप्शन तो है खूब। इसीलिए ना मैं कहता हूँ आप ब्यूरोक्रेट की सैलरी को 1 करोड़ रुपए साल तरीका ये है। और अकाउंटेबिलिटी पूरी रखो, तो तहसीलदार को 10 लाख रुपया में 10 डाल देगा, 5 लाख रुपए। और अगर एक भी लैंड रिकॉर्ड बच हो गया तो उसी में ये होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या साहब, तहसीलदार जो है पूछो किसी प्रॉपर्टी बनाई जा रही है, अच्छा मेरा भी प्रॉपर्टी के लिए एक्ट लाते हैं क्योंकि क्लाइंट लेना भी लेना नहीं। ये साहब आप देखिए ना क्या है, राजेंद्र नगर में जमीन का रेट है 10 लाख रुपए का और ऑफिशियल रेट जो सरकारी रिकॉर्ड में है वो 70,000 रुपए। तो बेसिकली अगर आपने जगह लेनी हो तो पहले तो 70,000 रुपए भाई दोगे, बाकी सब कैश। इधर इधर कैश लागो तो बोल सकता है जिसे पूरा टैक्स दिया और टैक्स कभी लेंगे नहीं क्योंकि भाई ही मैं फाइनल नहीं है। आर यू रेडी फॉर नॉट द रियल थिंग इज एक्सपीरियंस बाय मोस्ट पीपल वो ऑनेस्टली मेंटेन जो सही राम भक्त है ना वो ये जो टैक्स लेते हैं ये राम भक्त है ना, दिस इज आपको क्या लगता है जो टेम्पल ट्रस्ट है इसमें घोटाले नहीं होते? 100% होते। राम टेम्पल में भी हुआ, मैं ये गारंटी देता हूं, क्योंकि सब जब करप्शन इतना एंडीमिक है सोसाइटी में वो रुकेगा नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कहीं, इसी लेवल पे अकाउंटेबिलिटी नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, इसीलिए इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जेन्युइन एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कम है। इंडिया में क्रॉनिक कैपिटलिज्म ज्यादा है, ये याद रखिए आप। जेन्युइन एंटरप्रेन्योरशिप कम है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म ज्यादा है, ये फैक्ट है। और जो बात करें टॉलरेंस की, और टॉलरेंस पॉजिटिव बच्चों है, कई लोग कहते हैं ना यार मैं तुझे टॉलरेट कर रहा हूं, मैं तुझे टॉलरेट कर नहीं सकता। ये टॉलरेंस नहीं है, इसे कहते हैं दबूपन। ओके, ये टॉलरेंस नहीं है, ये इनकॉम्पिटेंस है। समझ रहे हो आप? It comes from Latin word tolerare, which means to bear. And it carries with it the idea of prudent, long-suffering. It comes from Latin word tolerare, which means to bear.
and it carries with it the idea of prudent, long-suffering silence. Prudent, long-suffering silence. And then right, tolerance can be defined as and it carries with it the idea of prudent, long-suffering silence. Prudent, long-suffering silence. And then right, tolerance can be defined as the capacity for or the practice of recognizing and respecting prudent, long-suffering silence. And then right, tolerance can be defined as the capacity for or the practice of recognizing and respecting beliefs and practices of others. Tolerance, therefore, is a fair, FIR, objective, and permissive attitude toward those tolerance, therefore, is a fair, FIR, objective, and permissive attitude toward those whose opinions, practices, race, religion, opinions, practices, race, religion, and nationality differ from ours. After full stop, next paragraph. The two common denominators of tolerance are: number one, the need for a respectful and fair attitude toward others. Number one, the need for a respectful and fair attitude toward others. And second, this attitude is directed toward those whose beliefs and opinions differ from ours. After full stop, tolerance, therefore, is having respect. No, opinion. Differ from ours. After full stop, tolerance, therefore, is having respect for another's right to express their beliefs while maintaining the respect for the person even when for another's right to express their beliefs while maintaining the respect for the person
or reject their beliefs. After full stop, the next line you write, true tolerance encourages an open debate. It expects people to defend their views. The next line is right. True tolerance encourages an open debate. It expects people to defend their views. Within certain guidelines. Thereafter, right? Democratic governments tolerate broad spectrum of behaviors and self-determination. Broad spectrum of behaviors and self-determination. Yes. Governments tolerate broad spectrum of behaviors and self-determination. Broad spectrum of behaviors and self-determination. And it is for this reason that the citizens of the democratic states show greater diversity than the citizens of the totalitarian states. Totalitarian. And remember this, I said, behind every value that we discuss is courage. So, preceding this behavior of tolerance is courage. So, tolerance is how those who are strong and not those who are weak. Please understand. A person who is tolerant is in a position to make other person act as per his choice. But because he believes that every person can hold an opinion of his own and has a freedom to act, of course, within certain limits, as per his choice, so he will not force himself on others. हुआ छोड़ यार है तो बड़ा अच्छा, लेकिन अब वो आप कैसे कोई वर्ड का इस्तेमाल कैसे होता है? अब हर आदमी को राइट तो है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन की, भाई you are having self determination. That is why you are asking this question. अब self determination in the context of people of Kashmir is a different meaning. ये तो डिपेंड करता है ना वर्ड को यूज कैसे करते हैं. कश्मीर के सेंस में अगर बात करोगे आप, तो वो एक अलग सेंस है. ये बात है. वो तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं समझ. ये बेटर. Now before we finish, this is a small value, very small. Its name is. इसके बाद जी एक ही बड़ी वैल्यू रहती है एम्पैथी. कंपैशन तो क्या उसकी सिस्टर ही है, उसको कोई खास बात है. ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉइज it is the degree to which individual's behavior is free from subjective bias. Degree to which individual's behavior is free from subjective bias. After full stop, you write objectivity refers to basing our advice. Basing the BA, SANC, basing to base your advice upon is basing our advice and decisions on rigorous analysis of evidence and basing the BA, SANC, basing our advice, basing the bias. Individual's behavior is free from subjective bias. Degree to which individual's behavior is free from subjective bias. After full stop, you write objectivity refers to basing our advice, basing the BA, SANC, basing to base your advice upon is basing our advice and decisions on rigorous
civil servants, number one, that civil servants take decisions on the merits of the case and take account of the case. That civil servants, number one, that civil servants take decisions on the merits of the case and take account of expert and professional advice. Second, provide information and advice. Provide information and advice, including advice to the ministers on the basis of evidence and accurately present opinions and facts. The ministers on the basis of evidence and accurately present opinions and facts. Third, must not ignore inconvenient facts. Inconvenient facts when providing the advice or making the decisions. And the last point, must ensure effective implementation of policies and when providing the advice or making the decisions. And the last point, must ensure effective implementation of policies once the decisions are taken. Once the decisions are taken. So this is when we have two values, sympathy and compassion plus emotional intelligence. Next class. Alexa, day since 17th January. January 17th fell on a Wednesday 68 days ago. By the way, you have a new notification. Do you want to hear it? Yes. What new notification? From Amazon Shopping. 2 months ago, you bought Madhya Pradesh General Knowledge for NPPSC, NPSSC Unlock, other competitive exams, facts previews on Amazon. How many stars would you rate it from 1 to 5? 4. Thank you. Your rating will help other customers make better choices. हाँ दीदी आ गई.
मम्मा बाबू नहीं आई आज। नहीं आपके पापा रेस्ट कर रहे हैं।
So we start with next value, and that is called as empathy. 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 Comes from the German word. Student law. Empathy. So we start with next value, and that is called as empathy. Good morning, bro. Empathy. Empathy. Comes from the German word. Student law. Einfühlung. EINI, FUH ऊपर दो पिंडिया पिंडिया मतलब होता है ना, मतलब वर्ड चेंज हो जाता है. ये Einfühlung में few जर्मन है. Einfühlung, LUNG is not lung, it is lung, meaning feeling into. Feeling into. So what is empathy? Ability to comprehend another's feelings and re-experience them in oneself. Ability to comprehend another's feelings and re-experience them in oneself. टीचर क्या हो गया बेटा? Ability to comprehend another's feelings and re-experience them in oneself. Empathy is not a separate emotion by itself. It is not a separate emotion by itself.
fact, it is a kind of an induction process by which emotions, positive or negative, are shared. And which increase the chance of similar behavior in the participants. One feels the same way as others are feeling. One feels the same way as others. It is the ability to attune oneself toward others. Attune oneself toward others. And is characterized by number one, giving full attention to someone. Number two, detecting and interpreting other person's non-verbal cues. CUS2 संकेत, non-verbal cues. Acknowledging others' perspectives. जी जी अजय Perspective. Understanding another's felt experience. Understanding another's felt experience. Yes. Understanding another's felt experience. The basic idea is only one, and that is I can understand you. और बड़ा मुश्किल है because emotion का aspect. When one person does not understand his own emotions, how can he understand other people's emotions? जैसे कई लोग प्रॉब्लम है उससे बात करने में मुझे अरे आप मुझे पूछ रहे हैं क्या ये चलो तो जब व्यक्ति के अंदर गड़बड़ी है सब क्यों नहीं है वो मैं बताऊंगा आपको इमोशनल तरीके से तो क्यों दिमाग खराब होता है ये सब उसका वैसे दिमाग खराब रहता है उससे इससे होता है यूज करेगा ओके ये मतलब कि दिमाग आगे नहीं जा रहा तो ये सारा वही है अब आते हैं टाइप्स ऑफ इम्पैथी और सर उठाएं टाइप्स ऑफ इम्पैथी का जवाब है टाइप्स ऑफ इम्पैथी वही है साहब cognitive empathy. Cognitive empathy. It is also called as perspective taking.
refers to the ability to understand other people's emotions. Ability to understand other people's emotions. Now, second type of empathy. Effective empathy. Affect means emotion. Effective empathy. Sensations and feelings we get in response to other people's emotions. This includes mirroring what other person is feeling. 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 Now this is the types of empathy finished. Now we proceed further. Now what you can write as follows is few more words of empathy, because empathy can come as a 50 marker also. So you can write empathy. Empathy is more than an intellectual exercise. It calls for personal involvement. Personal involvement. Empathy is more than an intellectual exercise. It calls for personal involvement. Personal involvement and imagination. For personal involvement, how do you involve personally? For personal involvement, one needs to be an effective communicator. Which includes not just being a good speaker, but also being an effective listener as well. Further, one should be a genuine person. Not just being a good speaker, but also being an effective listener as well. Further, one should be a genuine person. Truly interested in the welfare of others. Truly interested in the welfare of others. A genuine person. Further,
पानी गिर गया कुछ पा देना। ये ना जी थैंक यू। One needs to be an effective communicator. One needs to be an effective communicator. Which includes not just being a good speaker, not just being a good speaker, but also being an effective listener as well. Further, one should be a genuine person. Further, one should be a genuine person. Truly interested in the welfare of others. Truly interested in the welfare of others. Then you will people differ in empathic skills. Despite the fact that empathizing comes naturally, despite the fact that empathizing comes naturally to most people. To most people, an effective empathizer is able to balance involvement, is able to balance involvement with appropriate detachment, able to balance involvement with appropriate detachment. After full stop, able to balance involvement with appropriate detachment. After full stop, individuals with high empathy quotient display individuals with high empathy quotient display characteristics like
Number 2, astute observation. ASTUTE. Astute means sharp. Observation and attention. Third characteristic. High level of sensitivity and understanding. Fourth, attentive listening. Attentive listening and effective display of communication skills. Next is ability to understand the underlying causes of other people's problems. Next, ability to understand the underlying causes of other people's problems. Next, ability to understand the underlying causes of other people's problems. Next, objective knowledge of one's own and as well as other objective knowledge of one's own and as well as others' strengths and weaknesses. Objective knowledge of one's own and as well as others' strengths and weaknesses. Next, very important quality, democratic infrastructure. Democratic character structure. These are the qualities of those high in intelligence. Now one question is like this, that will if bureaucrat have time to stop and be empathetic to everyone in daily life? Please understand, empathy does not mean if you cry, I cry louder than you. That is not empathy, that is called entertainment. It is not empathy. Empathy is when you cry, I alleviate your distress. और क्या करूँ? देखिए सर, ज़्यादातर दुनिया में लोग एम्पैथेटिक क्यों नहीं है? क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट जो है वो लोगों को है नहीं और वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आदमी अपनी सेल्फिशनेस छोड़ नहीं पाता। क्यों? ड्रिवन बाय दिस। देखो सीरियसली बात, सेल्फलेसनेस लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी इनसिक्योरिटी को कम करें। तभी then only person will become selfless. People find it very difficult to stay down their level of insecurity. और आप बिल्कुल मेरा स्टेज बता रहा हूँ आपको अपनी इंसिक्योरिटी चेक करने के लिए। नंबर 1, how many times in a day you talk about others and in what light? If you criticize others and you like it, so that means that the level of insecurity inside you is considerable. देखिए दूसरे का तिरस्कार करके अगर बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, इसका मतलब हम बहुत डरे होते हैं। ये याद रखिए। This is the reason why in the world empathy is generally lost, and on the top of it, there is another requirement which people do not have in abundance, and that is patience and tolerance. Patience and tolerance combined with a high level of intelligence. Now these two things are also important. Then only a person will be independent, and that is what. अब देखो आप कह repeat the second quality, repeat the third quality, एक कह रहा repeat the fourth quality. बेटा मैं कह रहा हूँ मुझे याद नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो कैसे है बेटा? बताओ मुझे दूसरा नंबर क्या है? मैं कैसे बोल कर रहा हूँ? Astute observation and attention. तीसरा नंबर क्या बताऊंगा? High level sensitivity and understanding. ऐसे repeat मत कराएगा आपसे। जिंदगी में इंसान एक ही बार पैदा होता है, repeat नहीं होता। अगर पहले repeat करने की कोशिश करेगा, फिर सेम एडिशन नहीं होता। ये देखिए आप, फोटोकॉपी नहीं मिलेगी, तो ये ऐसा खत्म। अब अपने आनंद को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए सब आगे कैसे ले जा रहा है।
administrators. Empathy enables the leaders and public administrators. They don't find leaders and public administrators to recognize and appreciate. But no word, recognize and appreciate individual differences. Yes, सबसे बड़ी पॉइंट है. Recognize and appreciate individual differences, which in turn results in HAR and HARM. HAR is human resource development, and HARM is human resource management. HAR से बोलिए ना पेट साफ कर दीजिए. HRD and HRA और सारी जिंदगी आप हर जगह human resource development. So if you want to optimize human potential, you need to know what resource a person carries and how will you use it. Point here also, that is why I said first point is very important. And I said appreciate individual differences. Now who can appreciate individual differences? Who can look at you from an objective eye and not allow his insecurity to dominate his perception of your good self? Empathetic person will not do that. And that is why he can appreciate individual differences better. कोई अंधारी आदमी ने सोचेगा ना मेरे से बढ़िया कैसे हो सकता है कोई, तो अगर कोई बढ़िया भी है तो देख नहीं पाएगा, उसका अंधार उसे देखने नहीं देगा. आप समझिए ना मतलब एक एम्पैथेटिक आदमी जो मानता है कि लोग मेरे से बेहतर भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं और विविधता रिक्वायरमेंट है संसार में, तो सब वो जो है वो ज्यादा बेटर काम कर पाएगा. तेरे काम तो ये पहला पॉइंट ये है. सेकंड फॉर लीडर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, empathetic leaders and public administrators. Empathetic leaders and public administrators are able to read between the lines. Which in turn allows them to arrive at more accurate judgments and decisions. More accurate judgments and decisions. ये point number 2 है. Read between the lines. Read on the line तो समझ लेंगे. जो between the lines उसका अर्थ है पता लगा. समझ गए ना बात? देखो जिंदगी में आदमी व्यक्ति की पड़ता है क्योंकि वो कभी भी कॉन्टेक्स्ट को अप्रिशिएट नहीं करता. आज आपको बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, ये इसी वजह से सारी गलतियां जीवन में होती हैं. देखिए, wherever you see anything in this world, please understand. लेकिन साइकोलॉजी की बात बताऊं, wherever you see anything in this world, it has got two components. One that captures your attention. That is called as figure. And second, which is behind the figure, and that is called as ground. Now, because people are enamored by the figure, so they take all decisions considering the characteristics of the figure. But remember, the genuine appreciation of the figure can only be when you consider the ground. But because ground doesn't dominate our consciousness, we ignore the factors that are there behind the figure. And based on the figure and its characteristics when we take a decision, it often goes wrong. जैसे समझना, figure क्या? Figure is when you consider your suitability for civil service examination. Figure is your intellectual capacities. Maybe some people who are slightly more multidimensional might think that mind and body are correlated. So therefore, my physical strength and capabilities also should be factored into figure. But ground is parents' economic standing. Ground is parents' health. Ground is other distractors in my environment. And very important, sir. Any decision to write an examination must also consider these factors. Then you are preparing well, but unfortunately some event at home happens, which disturbs your preparation. So if you have not factored that into account, probably you will not be able to get right decision. जैसे अगर इकोनॉमिक स्टैंडिंग मेरी ठीक नहीं है परिवार में, तो मैं पहले 2-4 पैसे कमाते हूँ, बिल्कुल ठीक करूँगा, उसके बाद एग्जाम निकलूँ. आदमी ये करता ही नहीं, वो ये देखता नहीं सर ग्राउंड डिटेल, कभी तो गलती करता है. अब जैसे कर रहा हूँ, जब आदमी आईपीएस की सोचता है, तो वो सोचेगा मैं कमिश्नर बनूंगा, या तो मुंबई या दिल्ली का. रिमेंबर, मुंबई दिल्ली और कुछ हद तक नहीं, डी सिटी नहीं है इंडिया में. हो सकता है आप डीजीपी अरुणाचल प्रदेश में हो, और हो सकता है डीजीपी बनाएंगे. ये भी हो सकता है सर कि क्या किस उम्र में सिलेक्शन हुआ उसके ऊपर. तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी. जो आदमी नहीं रखता, कभी डिसीजन लेता है और गलत लेता है. और फिर कहता है गलती हो गई तो ब्रेक हो गई. अरे ब्रेक बना नहीं, तू डाटा था बनू. You wanted to become fool, तू बैठी नहीं हुआ fool. Please understand. So figure and ground both have to be considered. Please understand.
take these decisions, we know these victims. And we arrive at poor decisions. Very, very important that these mistakes should not be done. अब तो आपको पता ही है फिगर एकदम कम से कम अपने अपने स्तर ये रजिस्टर तो कर ले कि whenever I will make any decision in my life, I will not just concentrate on the figure, I will also see the ground on which this figure stands. Yes. समझने वाला this is the way. But empathetic people are able to do it well because they are able to understand emotions well. They are more objective in their approach. They are rational people. They are not irrational people. That is why I said empathy does not mean if you are in pain, so I will start shouting with you. It means I will make an effort to reduce the pain. Point number 3. Public administrators who have the trait of empathy, are likely to create more friendly work environment. More friendly work environment, which in turn can enhance workers' satisfaction as well as productivity. Next point, the fourth point. Empathetic leaders and public administrators establish most effective, can enhance workers' satisfaction as well as productivity. Next point, the fourth point. Empathetic leaders and public administrators establish more effective communication structures in the organization, which in turn reduces role conflict and generates, which in turn reduces role ROI conflict and generates mutual trust. Mutual trust. Next point. Emotions that are shared through empathy are likely. Emotions that are shared through empathy are likely to have an equalizing effect on the perception of status differences and reduce relationship barriers. Reduce relationship barriers. Relationships resulting from empathy are likely to enhance perception, status differences, and reduce and equalizing effect on the perception of thing, which in turn reduces role conflict and generates, which in turn reduces role ROI conflict and generates mutual trust. Mutual trust. Next point. Emotions that are shared through empathy are likely. Emotions that are shared through empathy are likely to have an equalizing effect on the perception of status differences and reduce
Secondly, to enhance perception of leaders' integrity. And foster cooperation. And foster cooperation. And the last point is right. Leaders with empathy are open to feedback. Leaders with empathy are open to feedback. Feedback, which in turn enables them to adapt successfully to the demands of the changing environment. To the demands of the changing environment. Now these are two diagrams that you can draw. These two diagrams relate to empathy and leadership effectiveness. Empathy and leadership effectiveness. And I think being there are first is empathy, first box. Then you have leadership effectiveness in the second box. In between, there is another box which connects between the two lines. Which connects the two lines here. Which connects with the two lines, two boxes. There is this line that connects. Culture of the country of the leader. Means empathy does lead to leadership effectiveness, but it also depends upon the culture and the country in which the leader is present. Now this will lead to two outcomes. Number one, behavioral characteristics. It will result in certain behavioral characteristics of the leader, which in turn will result in number one, increased motivation, between the leader and the follower, better communication to the organization, better trust between the leaders and the followers, greater environment of openness and leader being receptive to change, and better adaptability to the requirements of the changing environment. On the other hand, it will improve organizational performance also, which in turn will lead to increased profit and productivity, increased profit and productivity and organizational growth. Organizational growth. This is what it does. Yes, sir. ये empathy, अब ये जो डायग्राम है, ये इसलिए यूजफुल है कि इस empathy की जगह अगर आप लिख दें, तब भी रिजल्ट से तब भी रिजल्ट बाय लार्ज से इसलिए मैं कह रहा हूं डायग्राम में अगर empathy की जगह compassion लिखते हैं, तब भी आउटकम से How does culture play a role? क्या वाली बात है? अब empathy है, democratic environment है, leadership effectiveness एक तरह से impact होगी. आप
आप एम्पैथेटिक हो, एनवायरनमेंट अपना है। तो लीडरशिप इफेक्टिवनेस दूसरी तरीके से इम्पैक्ट होगी। इम्पैथी का रोल तो रहेगा, बट एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो इम्पैथी चलेगी सर। अंडरस्टैंडिंग? नाउ डायग्राम नंबर 2. This is one. Now we have another one. Yes. This all is the result of impact. Group interaction, teamwork, innovation, interpersonal, improved performance and productivity, effective communication, emotional control, conflict reduction. One is that empathy directly impacts. Second is empathy leads to leadership effectiveness, which empathy एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट। सोशल अवेयरनेस वैसे तो उसके अंदर आ जाएगा ग्रुप इंटरेक्शन के ऊपर तो एक हाईलाइट हो ये सब गुड अबाउट इट नाउ व्हाट वी टेक अप नेक्स्ट इज अ कंपैरिजन बिटवीन एम्पैथी एंड आउटपुट कंपैरिजन बिटवीन एंटीपैथी एपैथी एम्पैथी सिंपैथी एंड कंपैशन क्या रिश्ता है वो भी देखिए जल्दी बनाओ ये हो गया वहां पर डिमांड है कि मुझे आप दिखाओ एक बार देखो सिक्योरिटी इंटरनेट का कोई रिलेशन नहीं इंटरनेट नंबर इंटरनेट को ये बात क्लियर रखें भाई इंटरनेट नहीं हो ये हो गया वहां पर डिमांड है कि मुझे आप दिखाओ एक बार Security impact का कोई रिलेशन नहीं empathy does not mean that you will be interacting to terrorists ये बात क्लियर रखें भाई empathy नहीं हो पहला तो चीज नेशनल इंटरेस्ट है ना उसके बाद ही तो भैया empathy दिखाऊंगा अब आप मेरे घर चोर घुसाया मैं कहती भैया बैठो आप बेइज्जती कर रहे हो मैं सब कुछ दूंगा बस एक निकल छोड़ देना मेरे ऊपर बाकी सब कुछ दे जाना मैं पूरी empathy दूंगा आओ पहले तुम्हारा बर्थडे बनाइए तुम मोमबत्ती उजाला मैं केक काटूंगा मैं आपसे केक बनाऊंगा उसके बाद सब कुछ दे जाना एक चप्पल दे देना नहीं तो मजा नहीं आएगा और एक जो है इसे बाहर जा सकता ऐसे थोड़ी ना होगा सर वहाँ तो भैया तुम वालों को बुलाएंगे और कहीं भी तो खत्म ही हो लेकिन पूरी लाइफ में लगी मैं ये मानता हूँ कि एक जो
इक्वालिटी नहीं है। आप समझिए, तो ऐसे और उसकी क्या बढ़ेगी एम्पैथी में? क्रेडिबिलिटी। और जब एडमिनिस्ट्रेटर की क्रेडिबिलिटी बढ़िया होगी, तो याद रखिए, people should show greater willingness to listen and follow him. Listen to him and follow him. ये याद रखना बात। समझे ना बात? ऐसे वो डायग्राम्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट में ओवरलैपिंग होती है, एम्पैथी के डायग्राम है। ये तो है, ये देखिए ये आपको बता देते हैं, इसलिए एम्पैथी हो, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। देखिए हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, उनका पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, उनकी क्रेडिबिलिटी का सत्यानाश हुआ है। और क्या हो रहा है साहब, मैंने आपको समन भेजा, आप आते नहीं, लोगों के अंदर ये पैदा हो रहा है कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कुछ कह रही है तो मैं नहीं मानूंगा। और वो क्यों शुरू हुआ? क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का लीडर पार्टीजन था, बायस था। ऐसा तो हो नहीं सकता ना भैया, रूलिंग पार्टी का कोई भी आदमी गलत नहीं हुआ, या फिर अपोजिशन वाले सारे जो करते हैं वो जैसे ही रूलिंग पार्टी में आते हैं उनके पाप भूल जाते हैं। आप देखिए छगन भुजबल के केस इंक्वायरी की, उसने ज्वाइन कर दिया, वो इंक्वायरी करे। अब ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका थोड़ी है। आप समझिए, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, इन एवरी यूनिट there are two things that I can relate. One is the spirit of law and second is the temple of law. Temple of law is significant only when the spirit is right. Even if it does not, the spirit doesn't decide, then it is merely appending, nothing else. The idea is of spirit. Spirit is more important. Character is more important. तो ये फैक्टर है सर। इसे मैं बताता हूँ, अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद हमने एक ट्रेंड देखा, जो ट्रेंड चलते जा रहा है, और वो है सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देखो पहले क्या था, सीबीआई इंक्वायरी, पहले क्या था सीआईडी इंक्वायरी करती, फिर सीआईडी से हटके सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड होने लगी, क्योंकि ये माना जाता था कि वो निष्पक्षता से जांच करेंगे। फिर सीबीआई से भी अब एक जज ऑफ आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गया, अब वो भी हट गया, अब एक जज विद इम्पेकेबल क्रेडेंशियल्स, मतलब हर जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी इम्पेकेबल क्रेडेंशियल करनी है, तभी तो लोग डिमांड कर रहे हैं इम्पेकेबल क्रेडेंशियल्स। क्या इंडिकेशन होता है? दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर द नेशन। पॉइंट इज दिस, समझ लो ना बात आपको, हमारे ब्यूरोक्रेसी का पहला लेसन है इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, वही खत्म होना। सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड होने लगी, क्योंकि माना जाता था कि वो निष्पक्षता से जांच करेंगे। फिर सीबीआई से भी अब एक जज ऑफ आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गया, अब वो भी हो गया, अब एक जज विद इम्पेकेबल क्रेडेंशियल्स, मतलब हर जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी इम्पेकेबल क्रेडेंशियल करनी है, तभी तो वो बात कर रहे हैं इम्पेकेबल क्रेडेंशियल। क्या इंडिकेशन होता है? दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर द नेशन। व्हाट इज दिस? समझ लो ना बात अब, जो हमारे ब्यूरोक्रेसी का पहला लेसन है इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, वही खत्म हो रहा है। The point is this. अब इसको जो समझदार आदमी सब वो सोच लेगा, लेकिन अब जो आदमी समझदार नहीं है, जो की संख्या ज्यादा है, वो अनफॉर्चुनेटली इस बात को कभी सोचेंगे नहीं, और एंड में क्या होगा सर, कॉन्सिक्वेंसेस आप भी भुगतोगे, मैं भी भुगतूंगा, ये होगा। The point is this. आप देखिए ना, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंस्टेंसेस वेयर पुलिस पर्सनल हैव बीन असॉल्टेड बाय पीपल, इसका मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, तभी तो ये हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस, अदरवाइज यूनिफॉर्म ऑफ फैक्ट वेयर every person used to fear 20 years back. It is not like this anymore. The point is this, and the reflection of this is moving. Where today, along with certain politicians, even police personnel are shown as being in hand in glove. So what does this indicate? It's like institutional declaration. The point is this. ये फैक्टर है। अब आप आते हैं कम फैक्टर।
antimatter. Close to zero is right. Little higher than that is तो सर इससे एक बात तो क्लियर हो गई कई बार सवाल पूछ सकते हैं फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन इमेजिन एंड कंपैशन आज इस डायग्राम को देख के आप बोल सकते हो हाईएस्ट लेवल ऑफ इंपैथी इज वेरी क्लियर डायग्राम से क्लियर जैसे जैसे मोमेंट में पता डायग्राम में आगे बढ़ता जैसे वैसे कंपैशन में चलता ठीक है क्या कैसे बात कर रहे हो whenever I show compassion, my family does not respect it, and society mocks at me. आप बताओ यार हमारा आपका रिश्ता इतना कम क्यों है कि हमारी आपको जो है वहाँ पे रैली की इच्छा मौजूद है ये रीजन है सर आपको हमारे बीच में प्रेजेंट करती आपके सोसाइटी पहुंचे जीवन में राशि नहीं है सर अगर आंखों में दर्द ना भरा हो तो जीवन में रचना हो ये क्या ये याद रखिए ऐसी बातें मत करें सोसाइटी रॉक्स फॉर द इंपैथेटिक पर्सन नॉट मॉक ऐसा ना सोचे और अगर परिवार जब आपकी इम्पैथी नहीं समझ पा रहे तो पिताजी को 10 साल और जाकर दे दो कहेंगे ऐसा हीरा जन्मा था अब रियलाइजेशन आया ये याद रखिए सर माँ बाप की जो सेवा है वो पूरी तरह से तभी हो सकती है जब तुम एक इम्पैथी प्रेजेंट हो नहीं तो सेवा नहीं हो सकती सर नहीं तो आउटसोर्सिंग करोगे नौकर लोगों से करने बात की कोई बात आप समझिए बात ये याद रखिए सर तो ऐसी बातें ना बोले आप ऐसे बोल नहीं सकते कि तो भाई वैल्यूज इनकलकेटेड इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑफ हायर सिविल सर्विसेज एकेडमी ऐसी बात नहीं है डिफरेंट सर्विसेज देखो वैल्यू तो दोनों में बढ़िया है जानते हो अब आदमी उसको ले रहे हैं वो उनके ऊपर आज देखिए हमारे सिलेबस में जो वैल्यूज हैं और सिविल सर्विसेज वो तो सारी क्वालिटी वैल्यूज है उसमें कोई कमी होगी ना देखिए जी वर्ड को एंजॉय करें ये शब्द से मिला हुआ है पैथी और आंटी आंटी live again. ठीक है जी? And petty implies emotions. So it is what emotion for auntie which makes uncle again. Basically auntie कहती है कुछ लोग होते हैं ना आंटी से निपट जाते हैं अरे यार ये थोड़े बच्चे बात कर रहा हूँ ये साहब ये आंटी कहती concept है आंटी इमोशन फॉर आंटी दैट ड्राइव्स अंकल क्रेजी दैट इज आंटी पेटी नाउ अंडरस्टैंड लाइक दिस presence of negative emotions for the target group presence of negative emotions for the target group will undefined.
to 0 is little higher than that is तो सर इससे एक बात तो क्लियर हो गई कई बार ये सवाल पूछ सकते हैं फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन एम्पैथी एंड कंपैशन आज इस डायग्राम को देखकर आप बोल सकते हो हाईएस्ट लेवल ऑफ एम्पैथी इज कंपैशन वेरी गुड क्लियर डायग्राम से क्लियर जैसे जैसे मोमेंट बढ़ता है डायग्राम में आगे बढ़ता है वैसे वैसे आप कंपैशन के जरूर आते हो ये ना यार ऐसी बात करो whenever I show compassion, my family does not respect it, and society wants at me. आप बताओ यार हमारा आपका रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है कि हमारी आपको जो है वहाँ पे रहने की इच्छा मौजूद है ये रीजन है सर आप हमारे बीच में प्रेजेंट इतना आपके सोसाइटी वॉक्स जीवन में राशि नहीं है सर अगर आंखों में दर्द ना भरा हो तो जीवन में रस ना हो ये क्या ये याद रखिए ऐसी बातें बोल रहे सोसाइटी वॉक्स फॉर द इंटरनेटिव पर्सन नॉट वॉक ऐसा ना सोचे और अगर परिवार जब आपकी इम्पैथी नहीं समझ पा रहे तो सोसाइटी को दस साल हो जाने दो कहिए ऐसा हिला करना था अब रियलाइजेशन आया ये याद रखिए सर माँ बाप की जो सेवा है वो पूरी तरह से कभी हो सकती है जब तुम प्रेम और खुशी के अंदर इम्पैथी प्रेजेंट हो नहीं तो सेवा नहीं हो सकती सर नहीं तो आउटसोर्सिंग करोगे नौकर लोगों ने करने पाप की कोई साथ आप समझिए बात ये याद रखिएगा सर तो ऐसी बातें ना बोले यार आप ऐसे बोल देना कंपैरिजन रख सकते हो व्हाई वैल्यूज इनकलकेटेड इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी आर हायर देन सिविल सर्विसेज एकेडमी ऐसी बात नहीं है डिफरेंट सर्विसेज देखो वैल्यू तो दोनों में बढ़िया डालते हो अब आदमी उसको ले डाले वो उनके ऊपर आज देखिए हमारे सिलेबस में जो वैल्यूज हैं फॉर सिविल सर्विसेज वो तो सारी क्वालिटी वैल्यूज है उसमें कोई कमी होगी ना देखिए जी व्हाई को एंजॉय करें ये शब्द से मिला हुआ है कैथी और आंटी आंटे मीन्स अगेंस्ट ठीक है जी एंड पैटी implies emotions. So it is what emotion for anti which makes uncle against. Basically antipathy है कुछ लोग होते हैं ना anti से निपट जाते हैं अरे ये आज बड़े अच्छी बात है ना ये साहब ये antipathy कॉन्सेप्ट हो गया anti emotion for anti that drives uncle crazy that is antipathy. Now understand it like this. Presence of negative emotions for the target group. Presence of negative emotions for the target group. यदि antipathy members of the target group are treated with hate, dislike, disgust and contempt. Yes, hostility is hate, hostility, dislike, contempt, all of them. And it will result in development of negative attachment. With the target group members. Development of negative attachment with the target group members. जो attachment होगा सब target group members के साथ वो negative होगा ये है antipathy. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जो टेररिस्ट ग्रुप्स है उनकी एंटीपैथी होती है फॉर एस्टैब्लिशमेंट. If a person has joined a terrorist group, he will have hate, anger, disgust against the establishment, and that is why he is ready to carry out offensive against the establishment. And feeling the orientation to destroy. The point is this. अब हम आते हैं second, empathy. Two words, A, empathy.
absence of any emotion for the target. Mere absence of any emotion for the target. Members of the target group are treated with an indifference. They are treated with an indifference. There is no attachment with the target group members. No attachment with the target group members. देखो individuals who are apathetic display guiltless, remorseless, and conscienceless behaviors. Guiltless, remorseless, and conscienceless behaviors. These are the kind of behaviors like this. Guiltless, remorseless, and conscienceless. मतलब जमीर नहीं है मेरे को, कोई गिल्ट नहीं है और कोई दुख नहीं है इस प्रकार का। अब आप समझिए, आपको एपैथी भी बता दी और एंटीपैथी बता दी। जो टेररिस्ट है वो तो आएंगे एंटीपैथी और एक कैटेगरी बड़ी खतरनाक जिनका नाम है साइकोपैथ्स। ये नर्सिस्ट तो थोड़ी चीज है, साइकोपैथ्स जो कि अनडिपेंडेंट इमोशनल स्टूडेंट सीरियल किलर्स मर्डरर्स वर्ल्ड मैरिड मर्डरर्स ये सब ये जो है दीज आर द पार्ट ऑफ एपैथेटिक। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कोई टेररिस्ट ग्रुप कभी भी किसी साइकोपैथ को रिक्रूट नहीं करता क्योंकि वो अपने आप को मानेंगे नंबर तक इच्छा करेंगे। समझ गए ना, क्योंकि वो किसी के नहीं होते। कम से कम टेररिस्ट के अंदर ये तो है कि अपने ग्रुप के लिए तो लॉयल्टी पूरी होगी, दूसरों के अंदर हो या ना हो, दूसरे के लिए नहीं है वो अलग बात है, पर अपने ग्रुप के लिए तो कंप्लीट कमिटमेंट है ना, इनकी कमिटमेंट तो अपने से है। आप समझिए, they can deceive their wives, kill their children, do anything nasty. इसलिए सबसे ज्यादा देखो, that is why you know what is said. The essence of inhumanity is not hate, it is indifference. देखो सर क्यों इसकी सोच चल रही है कि essence of inhumanity is not hate, it is indifference. The reason being, if I am having hate, it means emotion is present. When emotion is still there, the negative may at one point turn positive. But if there is no emotion present, then the question of developing it very, very difficult. The point is, please understand, their loyalty is to their group, which has negative orientation towards the liability. Their loyalty is to themselves. Extremely self-centered people. They are loyal to none. Yeah, now we go to the third. Sympathy. Similar. That is emotion. Individual experience emotions are similar to one experienced by the target. Similar to one experienced by the target.
conditional attachment with the target. Presence of conditional attachment with the target. Negative attachment, no attachment, conditional attachment. कंडीशनल अटैचमेंट का मतलब अक्सर जो है हमारे पेरेंट्स भी ना हमारे लिए इंपैथी और कंपैशन नहीं रखते वो इंपैथी और कंपैशन रखता है और शायद एक बड़ी आयरनिकल बात है उनके बच्चे भी नहीं समझ पाते कि वो क्या रख रहे हैं ये बात तो है यू नीड टू बी एन एम्पैथेटिक पर्सन योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड द एम्पैथेटिक बिहेवियर ऑफ अदर्स टुवर्ड्स यू मैनी अदर पीपल में रिगार्डिंग टू बी फुलिश बिहेवियर तो यहां पे लिखा है इसमें कि भाई मेरे पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते तो ये नहीं समझ लेकिन मैं आपको बताता हूं योर सोशलाइजेशन प्लस you can say your planetary position, combination of the two, has made you person of one type. If God has blessed you with plenty of empathy, never let it go, because you are different from us. Remember this. And very nicely, for some people, selfishness doesn't come very naturally to them. They don't face much difficulty in sharing their possessions with others, even gifting them to others. And in the gifts that they give, they never highlight the price that was attached to it. That comes very naturally to them. I say, if you are blessed with this, please strengthen your fire. Because you are the chosen one of God. We all have to give our cherished possessions on this world, in this world. Please understand. So, the bottom line is, not to have over attachment with anything. Okay, man? अगले दो in that case comparison. Not to have this over attachment. Otherwise, you know, that can be a very painful process. The point is this. Many of us don't want to think of death because it gives us some type of tension. Isn't it? Some kind of anxiety produces in you. But you must think of it. You know why? Because you have to take these steps gracefully and internalize the fact that it can happen anytime. You have to get, used to that feeling. This is very important. See, presence of conditional attachment. Now further, you see. नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है कि सोसाइटी ठीक तो एथिकल वैल्यू का बिजनेस इसका मतलब है जिन लोगों के संपर्क में आए हो वो उठाई गिरे ऐसी बात नहीं है बेहतरीन लोग आपके जीवन में आएंगे और एक बात बताऊं आएंगे में 5-6 आदमी की जिंदगी में 5-6 आदमी की अहमियत है सारी दुनिया की अहमियत नहीं होती ये याद रखिए आप एंड ऑफर इज यूजुअली बना अंडरस्टैंड मतलब है लिप सर्विस दैट इज देयर आई एम जस्ट फोन कॉल यू कैन कॉल मी एनी टाइम आई एम जस्ट अ फोन कॉल जब कॉल करो फोन मी बोलो मैंने कहीं आपसे देखो ठीक है चाहे क्यों फिर मैं मुझे जाए क्यों अरे इतना ही शौक है दिला देना नहीं बाबा मुझे मिल सर्विस मैं बस तुम्हारे साथ हूँ जब मुझे बुला लो इस तरह की बात है प्लीज अंडरस्टैंड Physical help if offered is as per one's understanding of needs and requirements of the target group. Which may not always be in line with what they actually need. कंडीशनल अटैचमेंट तो बताया ना बेटा कंडीशनल अटैचमेंट का मतलब है अगर तू आईआईटी में निकलेगा तो तू मेरा बेटा है अब आप निकल गए रिश्ता खत्म एक आई इधर से उधर को रिश्ता खत्म ठीक है दिस इज आईआईटी में मतलब मेरे आपके लोग भाई गलती अरे नक्षत्र देखते पापा जी पहले नक्षत्र आईआईटी की तरफ जा रहे थे ठीक है ये सारा नक्षत्र बहुत ठीक है ऐसे समझा देखो जी कई लोग होते वो आपको खाना खिलाएंगे लेकिन खिलाएंगे अपने वो खाना खाते
नहीं लगेगा, 20 मिनट बढ़िया नहीं। आपने कहा यार मेरे को ना सुबह खाने में दिक्कत होती है, क्या नहीं सलाह नहीं कर लेना, कम आपने चलो सलाह तो मंगा दो, नहीं ये जो अनियन है ना दिन दिन मिलेगा, यही सलाह है। देखो तो सब चीज वही करेंगे जो वो चाहते हैं ना। तुम्हारा दिन बताओ क्या खाओ, जब तुम्हें मनाना ही हुआ है, जब तुम चाहते हो पूछो तुम्हें, ये सिंपैथी वाले आदमी खिलाएंगे पर वो खिलाएंगे जो ये चाहते हैं, वो ये नहीं खिलाते जो आप चाहते हैं। ये समझ रहे कुछ लोग होते हैं इस टाइप से। और देखिए the behaviors may range from picky, P-I-T-Y-P-T, to the tendency to look down upon the target group. समझे ना? थोड़ी बहुत तिरस्कार की भावना भी होती है। May range from pity to the tendency to look down upon the target group members. Target group members. Yes, पर ये empathy कभी नहीं है, ये sympathy नहीं है। यहाँ तक तो सर जनता जो है आप कह सकते हो 99% का होगा, बल्कि 99.9% का होगा। ये पॉइंट बताएंगे वो माफ करेंगे, आओ उसकी तरफ से। आगे ग्रुप नंबर कीजिए, आगे ग्रुप नंबर। यस, पर ये इंटरव्यू कभी नहीं है, ये सिंपैथी नहीं है। यहाँ तक तो सब जनता जो है आप कह सकते हो 99% का होगा, बल्कि 99.9% का होगा। तो पॉइंट बताएंगे वो माफ करेंगे, आओ उसकी तरफ से। बहुत कुछ अब ये लाइन करती है ट्रायल, इसका मतलब है दे आर वेरी मच सिमिलर, दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी। बेटा आपको डाउन होगा, आप कह रहे हो प्लीज स्क्रॉल डाउन, अब स्क्रॉल डाउन करके तो खाली पन्ना आएगा। देखिए क्या दिखाऊं मैं और लोग नीचे खत्म, ऐसे थोड़ी ना होता। ये it is characterized by detached attachment. I am attached, but I am detached. My son can relate to the father that he wants to go to US for higher education. Father will never hold the son back and say, I will miss you. If you want to soar high in the skies, I will be the first to appreciate your flight. Without any display of his, ideas regarding son's staying abroad or further studies, he will just encourage the son to leave and makes the process of leaving easy rather than difficult. The point is this. So I am with you whenever you need, and without any desire for any kind of reciprocation. The point is this. अभी मैंने कहा बहुत great point, and is characterized by display of unconditional positive regard towards the target group. बहुत बड़ा regard है, unconditional positive regard. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, इससे कोई फर्क नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ता। I will not, it's not that I will not give you a बैकग्राउंड, फर्क नहीं पड़ता। Even if
if you have a history of spending some time in jail, I will not judge you unfavorably. Because judgment is not present inside me. Please understand. So therefore, also characterized by non-judgmental acceptance of the target group members. Non-judgmental acceptance. Very great quality, sir. Also characterized by feeling into. I can feel the same way you feel. And I can take non-judgmental acceptance of the target group members. Non-judgmental acceptance. Very good quality. Also characterized by
can feel the same way you feel. And I can take your perspective, means understand the things from your perspective. ये भी बड़ी बात है सर। अभी तो मैंने कहा सेल्फलेसनेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट फॉर अस। Help offered is both physical and verbal. Both are physical and as well as verbal. And in accordance with the needs and the requirements of the target group. Yes. And in accordance with the needs and the requirements of the target group. So I will help you the way you want and not the way I want. That is my perspective taking. Great quality, sir. And also important to know. This is included both for empathy and compassion. So even if I am writing empathetic person, it automatically includes compassionate person also. Generates in the target group a feeling of being recognized, being reassured, being valued, and feeling of being respected. Being recognized, being reassured, being valued, and being respected. This kind of feeling is created. क्योंकि रिकॉर्ड सब बहुत जजमेंटल है। आपने जिसे नहीं कपड़े पहने या किसी कुत्ते पहने, उससे कोई मतलब नहीं है। आप राजा हो या रानी, जो मुझे आपको आपके सम्मान में देना चाहिए, आप उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, मुझे से डिफरेंट नहीं। मैंने आपको बोला आपने बोला नहीं बोला नहीं मैं दे सकता मैं नहीं। बट आई वो विदाउट एनीथिंग। बस ये बात है कि मैं आपको जिसको रोको उसको देखो। बट आई नो एनीथिंग। ये बात है अपने को मजबूत कर लेते हो। हाईएस्ट लेवल ऑफ चॉइस है आई एम अबाउट पेन एंड प्लेजर। माय ओनली प्लेजर इज योर सक्सेस। The point is, these are the things. That is why I say there is need for such people for betterment of humanity. The point is this. And I tell you this can come only when you have been able to some extent, conquer your attention need. जब तक आपके अंदर attention need वो हटाने नहीं आ सकता। आप जो है चाहोगे कि लोग आपकी तारीफ में कसीदे करें, पर जिस दिन आप उससे ऊपर हुए, तारीफ में मुझे भरे होती हो, पर ना कि तारीफ कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सर आपकी व्यक्तिगत होना है। तो ऐसा लोगों को बहुत टेंशन नहीं हो कि भाई मैं हमेशा लाइन लाइन रहूँ, वीडियो वाले हमारे दूसरे मेरे पीछे बात मेरे पीछे ना ही ज़्यादा जाते इंटरेक्शन है मुझे लगा कि थोड़ा सा उन्होंने बताया और बताने का तरीका तो एक्चुअली होता है कि आपके दोनों बच्चे को बताया आपका सम्मान है वही बात एक होता है मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा है मैं आपको अपने बराबर रख रहा हूँ और फिर सम्मान देने की कोशिश करूँ ये बात ये ऐसा दूसरा इंटेग्रल पार्ट होनी चाहिए ऐसा पार्ट कोई नहीं लाइट वाला पार्ट समझ रहा दूसरा क्या ये वाला पार्ट अरे बीन रेकॉग्नाइज हर आदमी कह सकता है कि लोग उसे पहचाने मैं आपको पहचानूँ रिएश्योर मेरी कंपनी में आके आप जो है कंफर्ट फील करें वैल्यू आपको लग रहा है कि मैं आपको भरपूर इज्जत दे रहा हूँ और रिस्पेक्ट कर और नहीं क्या बताऊँ इसके बाद अगर दोबारा आपने पॉइंट पूछा तो मेरी इंपैथी खत्म ये देखिए ये हो गया इंपैथी खत्म। अब देखिए इंपैथी और कंपैशन में डिफरेंस वो सी से स्टार्ट होता है ये ई से होता है एक डिफरेंस भी है कंपैशन इज इक्वल टू
empathy plus कितना बड़े बड़े बात आपको दिखाई अरे अच्छी बात नहीं है मैं आपकी हाथ आपको मैं आपकी नींद के ऊपर मेरे बात नहीं करता कोई बात नहीं देखो हम जानते हैं कि आपको टाइम करना आपको बता दिया आपको क्या करना है ये लेकिन यहाँ पर टाइम करना आपको कभी मुझे मालूम ये तो रिलैक्स करके आप मुझे लगा उसके बाद पूरा रिलैक्सेशन ये बता मैं आपको कहूँ सर इंपैथी बात नहीं क्या तो आपको कह रहा हूँ आदमी जो काम करता है इंपैथी का क्यों करता है ये याद रखिए मैं और बुक मदद जो बेस्ट हो सकता है इसीलिए मैं पेश को बहुत ज्यादा डेडलाइन स्पेशलिस्ट हूँ पेश को कहीं क्योंकि मुझे पता पेश को पेश करके इस तरह को कंप्लीट करोगे आप लेकिन स्टूडेंट को स्ट्रेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है और सर मैंने इसको लेवल भी इंपैथी आराम से बताया हमें भी बताया आपको भी बताया कुछ प्रैक्टिस जिले जिंदगी में और भी कर लें तो कोई उसके बाद वाला तो कैसे भी लगा इसको जल्दी बना के बता दूंगा इसे एक क्लास हो जाएगा empathy plus an active desire to alleviate the suffering of the target. Active desire. समझ आ रहा? उसमें पैसे बिताने के बाद sympathy वाले के पास गया, सर मुझे भूख लगी है, ये ले चले खा ले, आपने कहा मेरे को लगी है, अरे खट्टे क्या बोलूं? मरने से तो बेहतर है कि कुछ खा लेगा। अरे बाबू तुम्हें खट्टे को लगी, ये गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, खा ले। ये तो है हम sympathy वाले, empathy वाले आप कह रहे हो भूख लगी है, आपको बताना पड़ेगा, खा लिए, ओके। वो पूछेंगे उसको क्या खाना पसंद करो आपको सम्मान पूर्वक चाहिए कंपैशन में ये है कि कहने की जरूरत नहीं वो ये जानते हैं कि आप भूख आए हो रास्ते में आपने कुछ खाया हो तो आपके कहे तो यार आपको खिला सकते फर्क बस होती है चीज उतनी सम्मान से होती है इंपैथी में भी कंपैशन है बस इंपैथी में जरा सा इंडिकेशन है और कंपैशन में कोई इंडिकेशन इसलिए कंपैशन वालों का कॉम्प्लीमेंट होता है ये कंपैशन वालों का आइए समझ नहीं पता अभी बाकी two lines of compassion in the right before the second. So you're right. Compassion is the feeling of empathy for others. Compassion is the feeling of empathy for others. It is the emotion we feel in response to the suffering of others. मम्मा कहाँ जा रही हो? वॉक पे जा रही हो? तो उस चिड़िया को क्यों नहीं लेके जा रहे? घूमना फिरना हो जाता।
Compassion is the feeling of empathy for. ये उतनी सम्मान से होती है. Empathy में भी compassion है. बस empathy में जरा सा indication है और compassion में कोई indication नहीं. इसलिए compassion में लोगों को compliment मिलता है. ये वो सो देखो ये compassion वालों पर था. आइए सर समझ गए नहीं बात? सारी बातें यहाँ. Two lines of compassion in the right before we finish the chapter. So you write compassion is the feeling of empathy for others. Compassion is the feeling of empathy for others. Full stop. It is the emotion we feel in response to the suffering of others that motivates the desire to help. More involved than simple empathy. Compassion commonly gives rise to an active desire to alleviate the suffering of others. It shelters the distressed. It shelters the distressed. It is an active desire to alleviate the suffering of others. It shelters the distressed. It shelters the distressed. It is the basis for ahimsa. AHIMSA. It is the key component in what manifests in social context. Ahimsa. AHIMSA. It is the key component in what manifests in social context as altruism. Compassion includes not just a sensitivity to the distress of self and others, but also a commitment to try to do something about it and prevent it. Compassion requires number one, attentiveness to the needs of others. Number two, self-control. Number three, self-awareness. Number one, attentiveness to the needs of others. Number two, self-control. Number three, self-awareness. Number four, skillful action. Number five, use of reason. Number six, patience and tolerance. Number seven, non-judgmental acceptance of others. Number eight, a commitment, patience and tolerance.
Number 7, non-judgmental acceptance of others. Number 8, a commitment to be caring and supportive. And number 9, the ability to bear difficult emotions within ourselves and in others. And then the last line, you write of compassion. Compassion is required because it produces in the individual optimism, curiosity, agreeableness is required because it produces in the individual optimism, curiosity, agreeableness, A-G-R-E-E, agreeableness, wisdom, and the last point, sense of well-being. Sense of well-being. So this finishes our understanding of value system. Now what we take up next is the topic called as emotional intelligence. Read company question क्या question बताओ. Fraud, fraud or fraud. ये जो बता रहा है वो या जो सुन रहा है वो. जो इनका नहीं गिरा है, जो इनका नहीं गिरा है सब दूसरा अपनी बात है वो. आप मास्क थोड़ी देर पहन सकते हैं, मास्क हमेशा नहीं पहन सकते. अगर वो आपका असली चेहरा नहीं समझ आएगा, ये बता रहा हूँ, वो आ नहीं आ रहा है, समझ आ नहीं सकते. तभी तो हम कह रहे हैं जितनी ये कॉन्वेंट है, इम्पोस्टर है, इसे those who do it in some kind of deception are able to cheat people for the simple reason that they impress them only for a short duration, and in that short duration they are able to get your game. You can trust a person only when you have tested him across different situations, not like this. देखो एडमिनिस्ट्रेटर में तो क्या है, एक ओवरनाइट होगा, एडमिनिस्ट्रेटर will take charge. So first, जन अदालत jet he will have, will communicate to many people the kind of person he is. For example, you ask a question and I remark, oh, what a silly question. Now that indicates, my intersection for you. All this is noticed by the people. It is like this. So it is not very difficult to know. I tell you this. Why people are often cheated by others is because these people do not want other sympathy. They want their belief to be addressed by other person. ये प्रॉब्लम है. जैसे अब आपने किसी को पैसे दिए, उसने कहा कि मैं डबल दे दूंगा. आप सोचो ना यार बैंक में डबल नहीं हो रही, तो ये कैसे डबल कर देगा? मुझे इसका डबल देगा. तो सर सोचने वाली बात है. अगर ये इतना ही फाइनेंशियल रिजल्ट होता तो जो है सर कोई भी बैंक इसको हायर करता. आप समझिए बात. तो ये तो ऐसा ही है ना कि वो चलो रिकॉर्ड डाला. ये हमारी प्रॉब्लम ये है, हम भी तो अपने ग्रीड से काटते हैं. The problem is our greed. This is the problem. People will not be able to overcome their greed. This is not this. When you meet someone, you are never aware of the good fruits of the person. भाई आप भी तो सिखाओ अपनी लक्ष्य के. अगर वो लक्ष्य को बिगाड़े रखो तो धोखा ना हो. आपको समझना चाहिए. All that greediness is not good. ये समझिए आप बात. हर जगह की वस्तु उसको नहीं है. ये जो realization चलेगा, उसी का दिक्कत है. Emotional intelligence. Now you write what emotions are. अरे के पास होते बताइए जाते. आप ही को. So please write. Emotions are the personal experiences. Emotions are the personal experiences. देखो ये selective compassion वाला आदमी selective नहीं होगा. ये मैं समझा रहा हूँ. Empathy वाला आदमी selective नहीं होगा. जब आप selection से थोड़े ऊपर उठ जाओगे, तभी ये चीजें नजर आएंगी. समझ गए बात सर? देखिए आदमी प्रेफरेंसेस से तो कभी ऊपर नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके लिए प्रेफरेंसेस बहुत कम मायने रखते हैं. डिस्ट्रेस मित्र का हो या डिस्ट्रेस स्ट्रेंजर का हो, डिस्ट्रेस नहीं होगा. ये ऐसे अंडरस्टैंड करें. सेलेक्टिव आदमी होगा. तो मैं हाउ टू बी नॉन जेन्युइन इन लाइफ.
this person. Till that time, I have met this person 3 times. जैसे ही दिमाग कह रहा हूँ मुझे करने का अच्छा दे रहा आपने कुछ अभी रिजल्ट है माय जजमेंट इज रिजल्ट दिमाग नहीं और फिर एक बार मेरे भगवान भी बहुत जाना है तो हम तो हर आदमी को कुछ समझ रहे जब तक वो अपने को भगवान क्यों ना लगे आप मान लीजिए प्लीज अंडरस्टैंड लाइक दिस लेट इट प्रूव द पॉइंट इज दिस बट यू नो व्हाट पीपल based on their own emotion redressal by the other party develop their liking and disliking for us कुछ चीजें तुम आप देखिए a person with strong likes and dislikes will always be judged and once a person is mentally instable जैसे कोई आदमी कहता है ना लाइक यू तो आप समझ लेना या तो ये बेवकूफ है या मुझे बेवकूफ लगा है क्योंकि आई डोंट हैव सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ ये देखिए अब जब मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे अंदर कोई तो ऐसा आदमी तो है जो आप कैसे चले नाम जरूर मेरा आदमी ये देखिए आप तो मैं जब अंदर है ही कि आई लाइक यू मुझे तो लगता पागल है पर वो पागल नहीं है वो पागल बना रहा है आप सुनिए पर लोगों को खुशी होगी मैं भी पूछे वो तो मैं शायद कर रहा हूँ इमीडिएटली बोलो उन्हें भी नहीं हो एंड देन यू एम आई द बेस्ट ऑफ पर कोई आदमी चाहेगा अपना इस तरह से तिरस्कार करे तो इस टाइम को आनंद आ रहा है ना कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं आपको ये बोलो आदमी खुद अपनी मुश्किल कर रही है फिर कहता है कि दूसरों को एक बना के तुम बने तुम्हें बनाया नहीं है तुम कह रहे बनाओ मुझे बेवकूफ बनाओ और तुम समझा रहे ये ऐसा समझे ना बात emotions are the personal experiences that arise as a result of complex interplay among वो एक बेटा अंदर हो गया कोई जिंदगी में बहुत complex interplay among physiological, cognitive and situational variables and situational variables situational variables ठीक है सर ये तो इमोशन अब आते हैं साहब एक समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस भाई आपके अंदर इमोशन क्यों डेवलप हुए तो आप ये नंबर 1 इमोशंस प्रोवाइड individual the energy for action. Second, emotions ensure survival of the species. For example, emotions are generated in our parents be that born. Emotions will be generated inside of someone else will be born. Survival of the species. ये इमोशन का कमाल है. Emotions ensure survival of the species. For example, emotions are generated in our parents be that born. Emotions will be generated inside of someone else will be born. Survival of the species. ये इमोशन का कमाल है. जब आप बीमार हुए थे तब पिताजी जो आपको डॉक्टर साहब के पास ले गए थे नहीं तो ऑलरेडी होता नहीं हमारा तो 15 मिनट बचे एक घंटा मिला आएगा आपने बताया तो उसमें इमोशन गायब थे पिताजी ये अगर emotions when released provide relief. Emotions when released provide relief. Before they are not released, what happens? This should be there. When they are released, you come back to normal. And when you come back to normal, what do you get? Pleasure. सारी जिंदगी यही को है रिलीज एंड रिलीज वन पर्सनल एग्जाम्पल देखो जी आप क्लास खत्म हुई 1:30 बजे तब तक आपको भूख लग जाएगी डिसऑर्डर हो गया आपने खाना खाया रिलीफ आया प्लेजर दिस नो आई यू नेचुरल नेक्स्ट Before they are not released, what happens? This should be there. When they are released, you come back to normal.
सारी जिंदगी यही तो है, रिलीज है रिलीज। पर्सनल एग्जाम्पल देखो जी, आप क्लास खत्म होगी 1:30 बजे, तब तक आपको भूख लग जाएगी, डिश प्रिपेयर हो गया, आपने खाना खाया, रिलीफ आया, प्लेजर, दिस नॉट आई यू एक्चुअली लाइक सो। नेक्स्ट टू द राइट इमोशंस फैसिलिटेट social communication. Next, emotions. Emotions direct our attention, our attention to the important events in our environment. Direct our attention to important events in our environment. Next, emotions can vary in degree and direction. They can vary in degree and direction. Next, emotion facilitate social communication. Emotions facilitate ritual. कोई आपके घर में नहीं बोलता है, वो बोलता तो तुमसे। Emotions enable us to maintain our status. Emotions enable us to maintain our status and word of aggression. W-A-R-D. Word. O-F-F of aggression. Word of aggression. Next. Emotions are reaction to events. Next. All of us are born with the capacity to experience emotions. Next. Emotions facilitate our adjustment in our environment. These are the characteristics of emotions. Then we write the next paragraph. Earlier, it was thought. Next. Emotions facilitate our adjustment in our environment. These are the characteristics of emotions. Then we can write in the next paragraph. Earlier, it was thought that emotions make us inefficient, represent a sign of weakness, obstruct our reasoning, interfere with sound judgment, lead to arbitrary behavior, and inhibit the flow of objective data. After full stop. The researchers in modern neuroscience have however proved beyond doubt. Researchers in modern neuroscience have however proved beyond doubt that emotions number one, help to build trust. Second, facilitate creative expression. Third, motivate. Second, facilitate creative expression. And all are proved beyond doubt that emotions number one, help to build trust. Second, facilitate creative expression. Third, motivate us. Creative expression. Third, motivate us. Fourth, make us effective.
Number 5, represent the sign of strength. And not weakness. Next, help us arrive at a good judgment. Help us arrive at a good judgment. Next is activate ethical values. Next, provide vital information and feedback. And the next vital information, next is activate ethical values. Next, provide vital information and feedback. And the next is enhance our reasoning. And in the next paragraph you write, it is for this reason there has been resurgence of interest in the study of emotions. And this interest has further multiplied with the arrival of the concept of emotional intelligence provided to us has further multiplied with the arrival of the concept of has further multiplied with the arrival of the concept of emotional intelligence provided to us by Mayer and Salovey. These are the two. Mayer and Salovey. Why they don't understand us? Because I tell you, selfishness. When you become emotional for myself, that is why I said, when person says, I am a very sensitive person, it means I am a very selfish person. I am insensitive towards you, and sensitive towards myself. ये मतलब है। तो यार आप गुस्सा खा रहे हो, दूसरी पार्टी ने गुस्सा खा रही है, इमोशन दिखा रही है, फिर आवाज ऊंची कर रही है, मैं डर गया। ये provided to us by Mayer and Salovey. These are the people. And made popular by Daniel Goleman in his book Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ, in which he suggested, in which he provided evidence to prove emotional intelligence, why it can matter more than IQ, in which he suggested, in which he provided evidence to prove 80% of job success. देखो जी आप क्या मेरी बात मानो या मत मानो, आप कह रहे हैं क्वेश्चन बिना में रीटू पूछे, अरे मान कुछ बड़े आदमी क्या है, मैंने देखा है पाटा का पूरा लगा है आप जी 80% of job success. देखो जी आप क्या मेरी बात मानो या मत मानो, आप कह रहे हैं क्वेश्चन बिना में रीटू पूछे, अरे मान कुछ बड़े आदमी क्या है, मैंने देखा है पाटा का पूरा लगा है
आप चिंता नहीं करो, अभी मैं बताऊंगा ना, आप शांति रखो। मैंने क्या कहा, जिंदगी में पेशेंस और टॉलरेंस आगे जाता है। तो सब कुछ इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी धोखे देने की कैपेसिटी हो जाता है कि सबको मैं गलत दिखा रहा हूँ, गलत दिख रहा है, वो पास हो ये या तो ये मैं मेरे पास ये आप कुछ सही बता रहा हूँ। आपने माने 80% of job success is because of emotional intelligence and 20% of job success is because of intelligence. ये गवर्नमेंट साहब ने अपनी किताब में पता लगाया और हमें बताया। यस Why, sir, why people are becoming hungry? अच्छा लंच टाइम, आपका लंच टाइम है भैया, पूरी देर लंच हो गई ना, अभी तो 2-4 मिनट बैठे हैं, कमाल है भैया। और तुम तो ऑनलाइन कुछ भी बात करते हैं, ऑनलाइन वालों को लंच नहीं क्या करते। अब आप देखिए साहब, डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, 3 डेफिनेशन। एक बार सब खत्म, इनको लंच चाहिए, उसके बाद खत्म। नंबर 1, एक है साहब बहुत बड़े आदमी की, मेयर एंड स्टार हो गए। दूसरी उतने बड़े आदमी की, बोलो भाई, बोल मैन, बोल मैन। और तीसरी डेफिनेशन है बहुत नया आदमी की, लोकल मैन, यानी मेरी डेफिनेशन। इस आदमी का नाम नहीं होगा, समझ गए ना। मैंने तो ऐसे क्या है, वो 2 फेमस है सर, हम किस खेल की बोली है, इनके खेल की बोली है। और आपको अपने पिताजी माता जी की खेती पूरी है। ये देखिए, अब देखिए पहले लोकल मैन की जगह सर ऐसी पिकअप डेफिनेशन है कि आपको हर जगह नंबर मिलेगा। Emotional intelligence is the ability of the individual to reason with emotions and to use emotions in reasoning. इस डेफिनेशन में 2 पॉइंट है। Reason with emotions. For example, you find someone as attractive, or you tell the person I like you. So you must have a reason why you like it. Why do you like it? You just can't say I like you because I do not like it. That cannot be a statement I can do. I must know the reason. Say for example, I feel slightly afraid in your company. I must know the reason. Why do I feel afraid? So reason with emotions. And second, जो वो कहते हैं इमोशन कैसे करेगा बेटा? Use emotions in reason. देखो ये क्या बात है? Use emotions in reason. For most people, emotions are a bottleneck in the reasoning. For emotionally intelligent people, they are an asset. और फोटो दिखाता हूँ, देखो। परफॉर्मेंस एंड अवार्ड कार्ड, टॉप पे कौन है? ये बेस्ट डिसीजन लेते हैं। वेरी गुड एग्जांपल धोनी। प्लीज अंडरस्टैंड। ये कौन है? लो अराउजल वाले, समझ गए ना? और ये हाई अराउजल वाले। लो अराउजल में क्या होगा? लेथार्जी। हाई अराउजल में क्या होगा? पैनिक। दोनों लिखा। मॉडरेट अराउजल में आएगा ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। ऑप्टिमम परफॉर्मेंस ये वो बच्चे जो एग्जाम से 1 घंटे पहले भी इस तरह लिखे कहते हैं आधे घंटे पढ़ेंगे एग्जाम से, कोई जरूरत नहीं। पिताजी कह रहे एडमिट कार्ड रख दिया, पिताजी आप इनके बाबा पैनिक में क्या मानना है इडली। जो लोगों ने जो एग्जाम के 3 दिन पहले से ही सोए, समझ गए? तो पेपर में आती पैनिक में ये मॉडरेट अराउजल। किसी भी सर्च क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति टॉप पे है तो वो इंडिविजुअल है मॉडरेट अराउजल, नहीं तो टॉप पे जा सकते। धोनी की सक्सेस क्या करनी है? मॉडरेट अराउजल। मॉडरेट अराउजल मॉडरेट अराउजल होल्ड रखिए। लो अराउजल हाई अराउजल आउटकम फेमस इवन दैट वेरी टाइम इन बोथ केसेस यू विल हैव टू यूटिलाइज योर टाइम। प्लीज अंडरस्टैंड। अब बिफोर वी एंड टू बी लेट्स टाइम ऑफ दैट गो दैट इज
यहाँ पे लिख लो, पहले मेरा आंसर करो। Emotional ability, emotional intelligence is the ability to emotional intelligence. बेटा मेरा आंसर का डेफिनेशन है MAIER ऐसे एरो स्लैडो VEIE. Emotional intelligence is the ability to monitor one's own and others' feelings and emotions. The emotional ability, emotional intelligence is the ability to emotional intelligence. बेटा मेरा आंसर का डेफिनेशन है MAIER ऐसे एरो स्लैडो VEIE. Emotional intelligence is the ability to monitor one's own and others' feelings and emotions, comma, to discriminate among them, and to use this information to guide one's own thought and action. To guide one's own thought and action. Now Goldman's definition. GUIDMN. Why the one is the capacity. It is the capacity for recognizing our own feelings. It is the capacity for recognizing our own feelings and those of others. Comma, for motivating ourselves. For motivating ourselves and for managing it is the capacity for recognizing our own feelings and those of others. Comma, for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves and in our relationships. In ourselves and in our relationships. So this is where we stop. Other things in the next class.
Emotional intelligence we start with. Please tell me what we finished last. In emotional intelligence. अच्छा, 4 branches of emotional intelligence. 5. Emotional intelligence we start with. Please tell me what we finished last. In emotional intelligence. अच्छा, 4 branches of emotional intelligence. 5. Emotional intelligence we continue further. Model by Goldman. Model by Mayer and Salovey. We had stated. Now, Goldman's model. What Goldman has to say about emotional intelligence? Not much is left. Let us see what Goldman says. Goldman mentioned five components of emotional intelligence. 5 components. And these 5 components were self-awareness, the most important component, followed by this is what he stated as the most important. Second, and these 5 components were
self-awareness, the most important component, followed by this is what he stated as the most important. Second, self-motivation is the second component. Third component is self-regulation. Fourth component is empathy. And fifth component is social skills. These are 5 components. Total of 5 components. Now I'm going to have some insights on each. We start with self-awareness. It is knowledge about oneself. Knowledge about oneself. Now this knowledge is gathered by 2 methods. Self-observation. And the second method, social feedback. Feedback provided by us. You can know yourself only two ways. Number 1, you observe yourself. Number 2, you get feedback from us. This knowledge about yourself is likely to enable the person to get information about his strengths, weaknesses, opportunities and threats. That is what it does. You get information about your strengths, weaknesses, opportunities and threats. वैसे ऐसी information बहुत कम लोगों के पास होती है. Information you get about your strengths, weaknesses, opportunities and threats. Now which in turn will result in what? Once you have this information about your strengths, weaknesses, opportunities and threats, it will result in realistic goal setting. Goal setting जो है ना सब realistic हो. Realistic goal setting. हमारी आपकी बीमारी है कि unrealistic हो जाती है goal setting. Now when goal setting is realistic, it will mean more often than not, goals set shall be achieved. You will have history of goal setting, goal realization with you. Now this in turn will result in what? It will give individual, number 1, taste of success. जीत का स्वाद. आप भले जीतो, जीत का स्वाद में भी आते हैं. ये बात बड़ी सब स्वाद तो बढ़िया होंगे तो एक्शन बिल्कुल है. ये सब नंबर 1 taste of success. दूसरा क्या होगा इसमें? Person will also develop high self-efficacy. Self-efficacy refers to the trust individual has on himself, that he will be able to overcome the obstacles and reach his goals. Efficacy is this. जो आपको विश्वास है कि आपके और आपके गोल के बीच में जो भी अवरोधक है, उनके ऊपर विजय पाकर मैं अपना गोल जो है उसे अचीव कर दूंगा. ये बात है. और तीसरी बात इसके साथ खास होगी जो होगी ये, इंडिविजुअल विल बी एबल टू मेंटेन पॉजिटिव गोल डिस्क्रिपेंसी. पॉजिटिव गोल डिस्क्रिपेंसी का मतलब है द नेक्स्ट गोल व्हिच आई हैव सेट इज ओवर एंड अबव माय लास्ट गोल. समझिए ना? कैप्चर्ड इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन हु सेड आई वॉक स्लोली बट आई वॉक फॉरवर्ड. देखो ये जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट है. अगर आपने सीढ़ियां जो है हमेशा ऊपर की तरफ ली है. लोग क्या करते हैं पहले ये वाला गोल सेट करेंगे, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये जाने. अरे कुछ तो मिले. ऐसे लेटू आदमी कौन है? जो लेटू वो है जो अपने बारे में ज्ञान नहीं रखते. भाई जो ज्ञानी आदमी है वो ऊपर चले गए ना, वो तो यहाँ पे.
बेसिकली ये क्या कह रहा है सर कि आप अकेले कसूरवार नहीं हो, जो गलत गोल सेट हो रहे हैं उसमें माँ बाप भी कसूरवार है। आप देखिए सारी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। नॉलेज अबाउट माई सेल्फ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सोशल फीडबैक। अब सर इसमें क्या चाहिए? इसमें हमें चाहिए ऑब्जेक्टिविटी, जो कि निर्मित ऐसे लेटू आदमी कौन है? ये लेटू वो है जो अपने बारे में ज्ञान नहीं रखते। भाई जो ज्ञानी आदमी है वो ऊपर कह रहे हैं, वो तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या कह रहा है सर कि आप अकेले कसूरवार नहीं हो, जो गलत गोल सेट हो रहे हैं उसमें माँ बाप भी कसूरवार है। आप देखिए सारी कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। नॉलेज अबाउट माई सेल्फ, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सोशल फीडबैक। अब सर इसमें क्या चाहिए? इसमें हमें चाहिए ऑब्जेक्टिविटी, जो कि निर्मित वो जब तक समाज में रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपने ऐसे स्लोगन पढ़े, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। इस चक्कर में कई बार रिस्क लिया आपने तो रास्ता नहीं मिला। देखिए इस तरह की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है पर प्रैक्टिकल नहीं है। भाई आपके अंदर विल कितनी भी हो, जब खोपड़े में मसाला ही नहीं होगा तो विल क्या करेगा? पहले अपना मसाला तो देखो कि मेरे पास जो मसाला है कितना उत्तम है या कितना सस्ता है। देखो परमात्मा ने कुछ आदमियों को बड़े उत्तम मसाले से नवाजा है, कुछ को बड़ा निम्न दर्जे का मसाला दिया है। अब साहब निम्न दर्जे के मसाले के बाद आप थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते, ये बात सच है। तो आप लोग मसाला क्या करवाए? अब पेरेंट्स भी डिनाई मोड में आते नहीं तू सब कुछ कर सकता है। देखिए आप याद रखिए सर, बबूल के पेड़ में आम नहीं लटक सकते। आप समझिए, मैं आज भी पेंसिल बात बता रहा हूं और वो ये है कि चिल्ड्रंस IQ रिसेंबल देयर पेरेंट्स IQ. To expect that children will be very different from the IQ of their parents implies that they are not their children. If there is an IQ difference huge, then serious question is whose? What is this? So you must understand this. तो सर जब पापा जो है बड़ी मुश्किल से पास में मालूम, तो आप उम्मीद करो कि आप जो है नए आयाम बना दोगे, वो पॉसिबल नहीं है। ये रियलाइजेशन होना चाहिए। पर क्या पर मैं तो पीछे बोलना चाहता हूँ। देखिए सर प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि मेरी IQ कम है, प्रॉब्लम इसमें है कि मेरी EQ कम है, इमोशनल क्वोशेंट, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है। क्योंकि दो तीन चीजें बड़ी क्लियर है। हाई इंटेलिजेंस डज नॉट मीन हाई लेवल ऑफ हैप्पीनेस। नंबर 1, इंटेलिजेंस cannot guarantee you happiness. Intelligence also does not ensure job success. Please understand. And high level of intelligence also does not guarantee that you will be very liked person among your mates. That's also the truth. Please understand. Who will be a person who will be liked? One who is aware about his strengths, limitations, opportunities and threats. He will be the person who will be liked. Because he will not have unnecessary expectations from himself and from others. So the key to success in life lies in realistic goal setting. Now I will give you a practical example in your life also. See, every day you set a goal, like this which I shall be able to accomplish by the day's end. Now what happens is, when you set a goal of covering this one syllabus of polity, and you fail badly to cover, say for example, you are not even able to cover half of it, it provides a kind of setback to you. And regular setback of this nature eventually shall lead to depression. Therefore, we should have a clear notion that we are preparing for civil services with the kind of capability level that we possess. What type of duration I shall need to master the challenge posed by the examination and research. There are people who have fair idea about it. There are people who have misplaced notions. And to have that fair idea, it is very important that you must not overly trust the feedback provided by others, must also develop an astute sense of self-judgment. After all, most important thing in life is that most important evaluation should come from inside, not from outside. The point is this.
So this is first criteria. Now this will result in what? Knowledge about strengths, realistic goal setting, what shall be achieved, taste of success, high self-efficacy, and positive goal discrepancy. And all this will result in the second factor, which is called as self-motivation. This will be self-motivation. देखिए अवेयरनेस से ही मोटिवेशन बनेगा. आपको बताऊं कई लोग होते हैं वो मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं उसका कोई फायदा नहीं. Most important mainsprings of motivation are self-produced. Please understand. बीमारी का एक golden rule है सर. While doctor may have more knowledge about the disease, but it is the patient who knows his body the best. Doctor does not know your body. He has checked many bodies, he has clear idea of the disease. But you understand your body the best. So become your own doctor. That is very important. How? By making an effort to develop an understanding of yourself. For example, spend some time with yourself, called as me time. There you must understand that you know what are the life goals, what are your occupational goals, why you have set these occupational goals, in the light of temperament, character, etc. which you have. Are these occupational goals meaningful? How you define success in this life? What is your definition of success? When you objective, does it suit the kind of temperament which you have? All these kind of things you must put in mind. That is very important. And self-awareness eventually will lead to self-motivation. Now motivation is the energizer of behavior. It is the energizer of behavior. That is what? Does it suit the kind of temperament which you have? All these kind of things you must put in mind. That is very important. And self-awareness eventually will lead to self-motivation. Now motivation of temperament, character, etc. which you have. Are these occupational goals meaningful? How you define success in this life? Is your definition of success very objective? Does it suit the kind of temperament which you have? All these kind of things you must put in mind. That is very important. And self-awareness eventually will lead to self-motivation. Now motivation is what? Motivation is the energizer of behavior. It is the energizer of behavior. This is motivation. Energizer of behavior. मैंने क्या बोला बेटा IQ does not determine success. लेकिन मैंने क्या बोला कि IQ पहले फेमस लाइन वो IQ gets you selected, EQ gets you promoted. सिलेक्शन के लिए IQ जरूरी हो सकती है, आप समझिए बात. पर सवाल ये EQ का. और आपको एक बात और people with very high EQ will not have very good IQ. Because of all observation, understanding the self is not an easy task. You just imagine how difficult it is to know your own emotions. फिर लोग क्या मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. बेकार है जानता है, अपने को जानता नहीं दूसरे को क्या जानेगा. बार बार बोले जानू अपने को जान बेटा जान, दूसरे को मत को तुम नहीं जान. ये बेकार बात है. ये देखो मोटिवेशन इज द एनर्जाइजर ऑफ बिहेवियर. आगे देखिए सर, मोटिवेशन refers to push and pull forces that result in persistent goal-directed behavior. Push and pull forces that result in persistent goal-directed behavior. Push and pull forces. I am hungry, I want food, I push towards food. I have had my meals, I am completely full, but I see as I was crossing the road an ice cream parlor. I am pulled towards it. You know, कुछ ना कुछ फैक्टर होना चाहिए लाइफ में सस्टेन मोटिवेशन. The parent should encourage you to go to the classroom and teacher should have fully effect for you to be eager to study and come to the classroom. Again, push and pull forces that lead to persistent goal-directed behavior. It prevents the individual from being overly disappointed by occasional failures. Overly disappointed by occasional failures. देखो failure तो जीवन में हर एक आएंगे.
but you don't get disappointed. Motivation will prevent. Only disappointed from occasional failures. And develop in the individual courage. And explore and experiment with the novel things present in the world around it. Explore and experiment with the novel things present in the world around it. In the world around you, there are many novel things. You explore and experiment. That is what motivation does. Explore and experiment with the novel things in the world around you, and not getting disappointed by occasional failures. That is why motivation is important. Motivation produces goal commitment. And develops in the individual tenacity to fight various adversities. Tenacity to fight various adversities. भाई जीवन में कई बार सब चैलेंज आते हैं. आप चैलेंज को आपने विजय पानी के लिए आपका नाम तो विजय होना चाहिए, साथ में मोटिवेशन भी होना चाहिए विजय के पास. तो ये सब दिस इज व्हाट आवर अंडरस्टैंडिंग. हाउ टू इनकलकेट सेल्फ मोटिवेशन. देखो जी, पहले तो ये बहुत अच्छा है. मैंने आपको क्या बोला? दोबारा नहीं आया, नहीं ना? आजकल तो 18 लाख में आते हैं. ये देखिए, इन्होंने पूछा भाई सेल्फ मोटिवेशन कैसा है. मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, और वो ये है, just as when you have dialogue with others, if others say some good things about you, you feel positive and happy about it. Same way, you have persistent dialogue with yourself. And if you keep telling yourself negative things, you cannot stay positive. Very important. That is why I have suggested to you many times the importance of smiling behavior. Wherever possible, smile, because sir, you do not know how challenges in the environment may take your smile away. भाई देखो, ऐसा चांस तो बहुत है कि आपकी खुशी छिन जाएगी, आपकी हंसी बंद हो जाएगी. जिसकी खुशी छिनी, उसकी हंसी गई. देखिए जो ओकेजन है, पर जो न्यूट्रल ओकेजन है उनमें को मत पूछ लो. ये पॉइंट है. सुबह उठते ही सर आप ब्रश करते हो, कुछ हो जाते हो. इस तरह के ब्रश वाले बर्बाद है. ठीक है, ताकि जो है जहां परमात्मा ने लचीलापन दिया है उसका इस्तेमाल करो. देखो इवेंचुअली तो इलास्टिसिटी जी खत्म हो जाती है. आप अपने शरीर को देखो, पहले आप सिर्फ जमीन में लगा लेते, आप कभी घुटनों तक नहीं लेता. ये सब तो इसलिए जो मौका मिला है उसमें हासिल लोग दिस इज हाउ इट इज. दैट इज हाउ यू कैन. मैंने आपको बताया सब एक कनेक्शन है. अगर मैं गोल सेट करता हूं, अचीव करता हूं, तो छोटी सी बात, आपने गोल सेट किया कि मैं इतना पढ़ूंगा, आप कंप्लीट नहीं कर रहे. रोज का आपका काम है कि जितना आप सेट करते हो उतना कंप्लीट नहीं करते. ये घटिया है. बिकॉज यू सी, if you have set a goal, that means you are fighting more than what you can achieve. Please fight that much which you can achieve and you will divide. So goal setting becomes a key. Then only you will be motivated. And also don't take pride in the success which you get, even in the endeavors which otherwise may seem to you as very small. जैसे आप कहते हैं ना, इसको पॉजिटिव बात करनी है, ये कौन सी खुशी की बात है. अब जैसे एक बार आपके जो बंजरा टेस्ट किया था उससे बड़े अच्छे नंबर आ गए, तो आप कह रहे और टाइम तो नहीं आए, इसमें क्या ऐसी बड़ी खुशी है. अरे जब है तो ये हो. So when you are finding a reason for happiness, accept the fact. If suppose in quality test you got a very good score, now you must take pride that my preparation was already doing the right action and I am doing the right. Rather than saying no, why did I get a very small center? There may be other institutes also where people are taking the test. They may be scoring more than you. Now this type of attitude is not good. While I am not saying that live in a flu's paradise, but at least take some credit for good work you have done. Please understand like this. No need to do propaganda about it. If you done good work, there is a reason to be happy. Please understand. You see, ultimately people who are
more precise. Cause-effect relationships are generally happier than those whose cause-effect relationship has got no proper association. That is how it is. What caused the action and what was the outcome of that? I was said, we have knowledge about it. This is what the idea is. Now we go to the third one, and that is called as self-regulation. That is even more important than the second one. But no doubt about it, the most important is self-awareness. Self-regulation. How to regulate oneself? Self-regulation is ability to delay gratifications. Delay gratifications. And not succumb to temptations. Not succumb to temptations. Delay gratifications and not succumb to temptations. This is self-regulation. You are also an example of self-regulation only. Every night you deliberately consume less food so that you can stay hungry and stay awake. It is an example of self-regulation. You have cut down all kind of enjoyment in your life in order to prepare for this examination. Example of self-regulation only. This is the way it is. Some people have higher self-regulation, so they can practice this kind of self-control for very long duration. Other people have relatively less. After every 5 or 6 days, they have temptation to look here and there. That is how it is. It's about self-regulation, not succumb to temptations. और देखिए ये तैयारी के दौरान रेलिवेंट ये चीजें जिंदगी भर के लिए रेलिवेंट है. When you become IAS officer also, it is equally relevant. Now this is self-regulation. Individuals with high self-regulation are tolerant. They are patient. And are able to recognize and respect individual differences. ये खास बात है. भाई जब मैं अपनी इमोशन पे कंट्रोल पाऊंगा तभी तो दूसरे की जजमेंट को पकड़ पाऊंगा. The point is this. They are just and fair in their dealing with us. Just and fair. In their dealing with us. Prejudice quotient बहुत कम होता है इनमें. देखिए विदाउट प्रेजुडिस तो परमात्मा ही हो सकता है, बट इंसान कुछ परमात्मा के करीब होते हैं. Yet prejudice quotient is very less. This is the picture. Jealousy, hate, contempt, greed, these are negative emotions. They are present in everyone, but in some individuals they are very less. These are people who are self-regulated. They are able to create work climate that enhances worker satisfaction and productivity. Worker satisfaction and productivity. Self-regulation. Very important thing. Now we go to number 4. Empathy. Already you know what empathy is in quite a depth. So empathy is the ability to understand others' feelings and re-experience them in oneself. Ability to understand others' feelings and
and we experience that in oneself. That is empathy. Empathy allows the individual to understand and appreciate others' perspective. Understand others' perspective. Empathy along with self-regulation. Empathy along with self-regulation facilitates the individual to create conditions that minimize infighting. Infighting means fighting within the group. Role and duty. समझेंगे role and duty? जो role को लेके confusion होता है. And role conflict. ये empathy का सवाल है. देखो ये empathy और self-regulation से एक चीज अचीव होगी. Most importantly. And what is that? That is effective communication. देखो ये सारी झगड़े की जड़ क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग। और मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों पैदा होती है? मिसकम्युनिकेशन। आप सोच रहे हो मिसकम्युनिकेशन सोर्स है। अब उस कम्युनिकेशन एरर को हमें रिमूव करना है। कैसे करेंगे? जब दूसरे का पर्सपेक्टिव मैं लूंगा, तभी तो मिसकम्युनिकेशन कम हो सकता है। तभी तो दिखाई ये इनफाइटिंग रिड्यूस होगी। सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। Very important for effective communication is that you and me are able to remove, as I said earlier in persuasion, psychological barriers that are present between us. And these psychological barriers are possible to be removed only when empathy and self-regulation are there. Very important. That we are then able to remove these barriers. Now you say it is easier said than done. It is tough to practice and make oneself as such. देखो ये टफ ना होता तो हर आदमी के पास ये बात होती, दुनिया में अमन होता, वो नहीं है तभी तो इतनी मुश्किल है। लेकिन सबसे पहली बात है आदमी कन्विंस हो जाए ना, उसको ये चीज चाहिए। असल प्रॉब्लम क्या है? मैं बताता हूँ। आप कॉन्शियसली तो कन्विंस हो कि मुझे बुरा नहीं बनना, मुझे दूसरे के साथ बुराई नहीं करनी, पर सबकॉन्शियसली कन्विंस करनी है। ये कॉन्शियस लेवल पे तो आपकी फिर भी मान लेता है। वो जब तक आपकी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग नहीं हो, तब तक ये चीजें नहीं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ऑल ऑफ अस वांट टू स्टे ऑनेस्ट। अब सब देखिए, I am honest, but people in my surrounding are dishonest, right? And I fret and fume every day that you know I am honest, but what did I get from my honesty? There was nothing in this honesty. I am a foolish person. My father gave me these values. I regret why he cultivated these values in me. He should have made me the same as that of that is what others individuals around me practice, etc., etc. My wife and children also do not promote my honesty. इस तरह की बातें आदमी कर सकता है। ये रीजन क्या है? ये बोलने का कि उसने ऑनेस्टी कॉन्शियस लेवल पे तो मान ली, पर सबकॉन्शियस भी उसको प्रोग्राम नहीं कर पाया। देखो सबकॉन्शियस के अगर रिप्रोग्राम हो जाए तो आप बोलोगे भाई मैं ईमानदार हूं बाय चॉइस, किसी के कंपल्शन से नहीं हूं। मैं ईमानदार इसलिए हूं कि मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। मैं ईमानदार इसलिए हूं मुझे ईमानदारी में विश्वास है। आप समझे? मुझे ईमानदारी से ही जीना है। मेरी लाइफ का ये है गोल है। इसलिए मेरे आसपास के लोग क्या करते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कल कर गया उसका लड़का बड़ी कार में घूम के फ्रॉड कर रहा अपनी बाप की जो इलीगली कमाएंगे। मेरा लड़का गया पापा आपने तो चलेगा नहीं। देखिए इससे मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ। जो मेरे पास था मैंने खुद ना खाते अपने बेटे को खिलाया। इतना तो मैं कर सकता हूँ। पर अब ये चाहे मेरे से कि मैं अनैतिक तरीके से पैसे लिया और फिर इनके लिए कुछ करूँ, ये मैं इस बात में नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ जीवन में प्रॉब्लम
मैं पब्लिक सर्विस में जा रहा हूँ, मुझे मिलेगा रिकॉग्निशन एक्नॉलेजमेंट, हो सकता है वही मिले भाई, पब्लिक का जजमेंट है, पब्लिक कोई सैलरी यहाँ तो बचा रहा है नहीं। अब सर मुझे पता है भाई सिविल सर्वेंट की तनख्वाह ज़्यादा नहीं होगी, तो मुझे अपने उन दोस्तों से कंपैरिजन नहीं करना है जिन्होंने एमबीए कर कर बड़े उच्च पद प्राप्त कर लिया प्राइवेट कंपनी में, वो पैसा कमाए, क्योंकि ये उनकी वो से मेरी तो नहीं। अगर मुझे ऐसा करना तो मैं प्राइवेट कंपनी करूँगा, सरकारी कंपनी को प्राइवेट करूँगा, आप समझिए, तो मैं क्लियर करूँ ये अनफॉर्चुनेटली कई लोग के अंदर नहीं है। आप देखिए सर, इसीलिए कहूँ मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये क्लियरली जवाब दें कि मुझे क्या करना। आप समझिए बात भाई, जीवन में नियम है, यू कैन नॉट हैव केक एंड ईट इट टू, 3-4 5 काम एक साथ हो सकते। अगर आपने केक खाई हुई है तो आप किसको खिला सकते, नहीं खाया तो किसको दे सकते, ये रिक्वायरमेंट है, ये सिविल सर्विस में। अब क्लैरिटी को देगा क्यों फिर देने क्या, अरे मैं आईएएस तो बन गया पर मुझे ना टैक्स काटा भाई काटा मिल गया, मैं तो बर्बाद हो गया, अब सारी जिंदगी वही काटूंगा। अरे तुमने पता है ऑल इंडिया सर्विस है, कुछ गिने चुने लोगों को मिलती है, हजारों लाखों आदमी अप्लाई करते हैं, 25-30 आदमी आईएएस बनते हैं। तो सर अब इस बात पर क्लैरिटी तो रखे ना, इसी को मैं कहता हूं विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन आल्सो। आई एम सपोज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, आई नो दैट सीट्स आर अवेलेबल फॉर मी, आई हैव टू कॉम्पीट इन दैट, I will have to see my mental power and see whether with that power can I figure in those 20-30 seats which are there or not. Now if I know very well that there is a reservation and that reservation will mean that more than 50% of the seats will be given to the reserved section, I will have to bear it. Or if I am so much against it, then probably I will not appear in the examination. I will appear in that examination where there is no reservation. I will very much to answer. Understand like this. You will be more at peace with yourself. But people I see are people with confused priorities. That is my concern. अब जैसे एक पॉलिसी है, अगर आपकी पॉलिसी है, I will speak something which is for the benefit of the individual in my opinion. I will not speak something which may appeal to the masses and make me very popular among the masses and make me kind of a local hero. I am very clear regarding my position. I also understand that if I tell people that please set your goals realistically, there are not many people who will appreciate it. They will say, you know, this talk disappoints me. I have come here with great enthusiasm and zest to become IAS officer. He is trying to discourage me by saying that you please examine your capacities and then decide the vote. क्योंकि सर मैं वो डॉक्टर हूँ जो स्टीरॉइड में इंजेक्शन नहीं देता हूँ, स्टीरॉइड बीमारी को नहीं करता, वो बीमारी को दबा देता और बात कोई बीमारी चल के आती है तो आपको डरने की कगार में जाता है। भाई मैं मेरा धर्म है डॉक्टर नहीं समझे स्टीरॉइड नहीं खिलाऊंगा। अब आप डॉक्टर साहब आपको जाते ही वो बड़े वाले डॉक्टर तो उसे दवाई दी और मेरी बीमारी है, मुझे पता है ये इंसान आदमी है, ये खाली में खेलने को तैयार है, मैं इसे रोकने को तैयार हूँ, बुरा नहीं करता हूँ, लेकिन ये मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है। भाई अगर कोई छलांग मारने को तैयार है ठीक है मैं उसको अब उसके बाद मुझे धक्का लेके मारी देगा तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं रोकने का भरसक प्रयास करूँ। अब इसमें मेरी पोजीशन तो क्लियर है ना सर, लाइफ कल को on in the last leg of my life, I will not have that regret that I did not try to prevent individuals from falling down. I tried my level best, but if they still wanted to fall down, I would not have done anything. The point is this way if you understand things, you will have less confusion in your mind. The real problem is this. I tell you, starting from IIT JEE preparation, NEET preparation to civil service preparation, unfortunately, media communicates to people that everything is achievable. Which is not true. Yes, things will be achievable if goal setting is realistic. Media is to encourage people to set realistic goals. Know yourself and then accordingly set your goals. Any person advocating that generally will not be more than the value society. Because he is trying to discourage people from being over-ambitious. And this is very, very much required if you have to prevent the massive disappointment that is likely to come in time to come. Yes. देखिए तेंजिंग नॉर्गे और एडवर्ड हिलारी माउंट एवरेस्ट में चढ़ गए, हम लोग जानते हैं, पर उनसे पहले कई लोगों ने चढ़ने का प्रयास किया और वो स्वर्गवासी हो गए। ये तो बात है सर, तो आप वो आदमी को देखिए कैसे मैं चढ़ जाऊंगा, आप समझिए बात, मैं ये नहीं कह रहा आप ऑफ में आए, अरे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ने से पहले अपने लोकल पहाड़ी पर चढ़ के देख लें, अगर उनको उस पहाड़ी में चढ़ने में दिक्कत है तो माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ूंगा, समझिए बात, ये नहीं लगी सर, पर मीडिया क्या करेगी, इट विल सेल द स्टोरीज, दिस बॉय father rickshaw puller, he did not take any coaching, became IAS. अब आपको यहाँ टेंशन होगा, फिर आपको पता चला ये कैसे
This world will never be a fair place. जैसे कई लोगों से सुना है, अरे हमने अच्छे कर्म किए, हमें बीमारी नहीं होती। Cancer can knock the door of any person, no matter how good his karma are. Go and see Mr. Parikh. Excellent person. Died of cancer. There are many excellent persons of this nature. So I want to say here is that it is not like this. That these diseases will come only to bad people. That is our imagination. Example of how incorrect our judgments are. That is why he said, we see the world the way we are and not the way the world is. Let us now take a pledge to make an effort to see the world the way it is. It may hurt you, but it will serve you positively in long run. The point is this. देखो जी, आप केवल मेंटली किसी समय करने में इग्नोर नहीं, मैं कहता हूँ जो आदमी आपको इग्नोर करने के लिए तैयार है, उसकी इग्नोरेंस आप प्राप्त करो। मैं बार-बार आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा परिवार वो है जो कम से कम मेरी बात सुनने को तैयार है। मैं कहता हूँ आप मानो ना मानो आपकी चॉइस, पर आप सुन लो। ये पहले सब अब आदमी सुनने को तैयार नहीं आपकी बात, तो उसको बताने का चेष्टा भी करनी चाहिए। मैं तो सुनने को तैयार उसको बात नहीं सुन रहा, पर ऐसा नहीं है सर, क्योंकि आपकी बातें कम है, कुछ ना कुछ कदरदान जीवन में जरूर मिले और आपसे जरूर कहेंगे कि सर आपने बात की बताई, ऐसा कहूँ किसान इससे अच्छा कि जो है काम किसी व्यक्ति से करनी चाहिए। कि मुझे कहते काम ना करें, इतना लोग कहते कई साल बाद मिलेंगे कि सर आपने पहले मुझे आपकी बात आई लेकिन आपको तो करेगा कि हम खाना जाने की डायबिटीज से करती, तो सर ये भी बहुत बड़ी चीज है। कहने का मतलब ये है, दिस इज व्हाट आई एम समझ रहे हो? देखिए बात बदल नहीं, अगर आप इग्नोरेंस को बोलो, मैं बार-बार आईएएस बनने के बाद जब अपनी आप कॉपी रखते हुए मिलेंगे तो एथिक्स की कॉपी लास्ट में एक बार रीजन देके इतना दिखाएगा और कहना बेटा इसको तुम भी पढ़ो। ये होता है, बट दिस इज नॉट टू से दैट योर कॉपीज ऑफ ऑलरेडी और मी आर नॉट इम्पोर्टेंट। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उस तरह से बात को सोच रहे हैं मेरी कॉपी मांग लेना ताकि समझ आ जाए, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो आप? यस, नो मुझे पता सोशल स्किल्स refers to those skills that facilitate. Last we had 3 definitions. You have not done मेरे आंसर में कोई बात नहीं, आप कर लेंगे, बोल देंगे, बात कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? उस स्वेटर में उल्टा पहनो, सीधा पहनो, लेकर सीखेंगे। वो मैंने नहीं किया। अरे नहीं जब मुझे तो 2 मिनट लगेंगे यार, मैं क्या बोलूँ, क्या फर्क पड़ता है? Social skills refer to those skills that facilitate management of human relationships. Now, what are the skills needed for management of human relationships? Number 1, P&T. पेशेंस एंड टॉलरेंस सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है सर। आपकी लाइफ जन्नत में जन्नत अगर पीटी आइटम आपके सामने, अगर पीटी नहीं है तो फिर पिके। तो पहले आप किसी से मिलने से पहले कॉफी दोबारा किए, क्या तुम पीटी हो? वो कहीं होटल क्या बोला पीटी हो? नहीं, पीटी पेशेंस एंड टॉलरेंस। मजाक की बात है सर। आप भी बता रहा देखिए बोला जाता है बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन and behind every successful woman there is a man. Gender equality. So what I want to say is this: ये क्यों बोला जाता है? No professional success can come without presence of peace and hope. I tell you this: if you go to office with this fear that what might happen at home when you are in office, so you will not be able to produce your best outcome. The point is this. That is the reason. तुम्हारे चेहरे में शरारत नजर आ रही है, बताओ क्या चाहते हो? कोई बात नहीं, तुम अपने परिवार से ही बोल रहे हो तो इसका मतलब उसके कान में कुछ तुम बोलना चाहते हो। ये देखो पेशेंस एंड टॉलरेंस होगा तभी कहते हैं। सेकंड, सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सारी ह्यूमर की एक बड़ी क्वालिटी होती है कि रिश्ते इंटरव्यू बन जाते हैं इससे। दूसरा, जिन लोगों के साथ आपने मिलकर खुशी बांटी हो, अगर कोई गलती भी हो जाए तो वो आपको आसानी से माफ कर देंगे। Because you have given moments to them to smile. That is why humor is very important. It reduces anxiety level in the environment. Otherwise, there are plenty of reasons for heightened anxiety present in our environment. The point is this: और humor की एक requirement है sir. You can have, and humor is never at the expense of others. I tell you, a person with genuine sense of humor will always have high regard for others and will not try to belittle others in order to produce humor. Because humor rests on one basic premise, and that is my astute observation and my ability to laugh at things which seem to be irrelevant to most. The point is this: please understand, sense of humor. Third, very important quality is this:
tactfulness. Tactfulness. इसका मतलब ये सब ability to recognize the demands of the social environment and act accordingly. What are the demands of the environment and act accordingly? That is it. Ability to strike effective communication, that is communicability, is yet another requirement for any effective human relationship management. Communicability. Social memory. Memory of all important names, faces, places, etc. is social memory. देखो, what is something which every person values? The most important thing, his name or her name. Number one. Number two, sir, there are events in your life which are important to you. If my conversation centers around those events, you feel recognized and valued as a human. देखिए, मैंने आपको कोई बात बताई, आपको लगा यार ये आदमी देखो मेरी इसके दिमाग में थी ये बात, मैंने अपने आप ही भूल गई, ये तो पराया था फिर भी याद रखा है. Social memory, very very effective. Though in the process of communicability, listening is also an important part, but he will mention it as a separate quality, and that is effective listening. That is very very important quality. Agreeableness. Agreeableness का मतलब है we look for compromise, we look for solutions which can benefit both of us. Rather than pushing my agenda, I also want to cater to your interest in doing things. Openness. Very great quality. I am receptive to feedback. अरे दूसरी बात सुनने को तैयार हूं. And the last quality. This is also
इसका मतलब है we look for compromise, we look for solutions which can benefit both us. Rather than pushing my agenda, I also want to cater to your interest in doing things. Openness, very great quality. I am receptive to feedback. अरे दूसरी बात सुनने को तैयार हूं. And the last quality. This is also very critical to good relationship. Conscientiousness. मैंने आपको बताया था, it implies duty mobility. Duty mobility. ये हो गया सर. अब आप कह रहे हो कि हमने वो नहीं किया था. तेरा मैं मेरे सर, तो मैंने तो 4 पॉइंट बताई उसकी. मेरे सर में पड़ा. पहली बार ये थी साहब. पता नहीं आप कह रहे हो, मैं मान लेता हूँ कि इसके बाद ये भी ना 4 ब्रांच, तो 4 लो जी. या इवेंट्स, पहला आइडेंटिफिकेशन, परसेप्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस. देखिए 2 मॉडल आए. दिस इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल टू गुड रिलेशनशिप. Compromise, we look for solutions which can benefit both of us. Rather than pushing my agenda, I also want to cater to your interest in doing things. Openness, very great quality. I am receptive to feedback. अरे दूसरी बात सुनने को तैयार हूं. And the last quality. This is also very critical to good relationship. Conscientiousness. मैंने आपको बताया था, it implies duty mobility. Duty mobility. ये हो गया सर. अब आप कह रहे हो कि हमने वो नहीं किया था. तेरा मैं मेरे सर, तो मैंने तो 4 पॉइंट बताई उसकी. मेरे सर में पड़ी. पहली बार ये थी साहब. पता नहीं आप कह रहे हो, तो मैं मान लेता हूँ किया. जब इसके बाद ये भी था ना 4 ब्रांच, तो 4 लो जी. या इवेंट्स, पहला आइडेंटिफिकेशन, परसेप्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस. देखिए 2 मॉडल आए. एक मॉडल था गोलमैन का, दूसरा मॉडल है मेरे सर्वे. मेरे सर्वे जो है वो प्रोपाउंडर है कॉन्सेप्ट के. उन्होंने 4 ब्रांच ढूंढी, मतलब 4 ब्रांच का मतलब 4 कंपोनेंट है. पहला है आइडेंटिफिकेशन, परसेप्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस. मतलब क्या है कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी है वो अपने चेहरे से आपको अपनी फीलिंग बता देते हैं और आपके चेहरे से पहचान जाते हैं कि आपके अंदर क्या है. ये है इमोशनल. टैक्टफुलनेस एम्पैथी से थोड़ा अलग है, क्योंकि टैक्टफुलनेस का मतलब ये है कि सिचुएशन क्या डिमांड करती है. अब जैसे आप फ्यूडल सेरेमनी में चले गए, नीला पजामा पहनिए और पीली टी शर्ट पहनिए, चमक जाएगी बात. आप सोच लिया अजीब हो गया, फटाफट आप कोने में गए, एक को पैसे दिए, पजामा, वो पजामा लाया, काले को आपने ये नीले को सफेद कर दिया, नीचे भी सफेद ऊपर भी सफेद, पैंट में पहुंचे. ये गुडनेस है. आप देखिए साहब, the person was in deep distress because of the loss of near neighbor. You were running short of words as to what should you say to console him. So what you did? You went there, you saw one person gently holding the hand and then moving his head in a horizontal position for 1 minute. एंड आपने टाइम हो गया कि कितनी देर तक हमारा है. देखिए आप समझ गए, यहाँ पर हैंड होल्डिंग नहीं चलेगी,
कुछ कहना नहीं. Then you saw whether the hand was head of the person of same gender or opposite gender, or both. You found that no same gender person. You also did. And you left. तो खुशाली ध्यान ना दे. ये है. This is called as intelligence. So tactfulness है. तब लोग कह रहे हैं सर identification. मैं पहचान जाऊँ अपने तरफ से मुझे देना. Perception and expression of emotions. Some people are very expressionless. You don't find a lot of comfort with them. Please understand. And in this regard, women are more gifted than men. Most men find it very difficult to have expression on their face. अरे मत कर बेटा, बहुत ऊपर गया, नीचे रहा, बहुत ऊपर गया. ये एक्सप्रेशन नहीं बात है साहब. ये दूसरा पॉइंट देखिए. इन्हें बता साहब. सेकंड पॉइंट. Understanding. Of emotions. I must understand what emotions are generated. And interestingly, not just in myself, but also in your good self. That is how it is. Management of emotion. Management का मतलब है to turn negative emotions into positive. सबसे बड़ा आर्ट है साहब. Negative emotions into positive. कभी-कभी पॉजिटिव को भी नेगेटिव करना होता है. जैसे बच्चे की किसी बात पे हौसला है. जैसे अब अंकल ने कहा कि आपकी माँ से कि ये बिस्किट बहुत अच्छे हो गए. बेटा बोला हाँ माँ ने बोला था अंकल को वही दीजिए. अंकल को वही खिलाना. इसलिए अंकल को वही लाया. और गुस्सा है. चिंटू ऐसे नहीं करना. इसका कुछ कहना मुश्किल है. लेकिन आप बस अब क्या करें साहब. वही इज्जत की आपकी छोड़ेंगे. लेकिन हम गुस्सा दिखाएंगे. तो ये तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गए. बात को सर आपने सीरियसनेस दिखाई बच्चे को. बोल दिया क्या बोला मम्मी. क्योंकि ध्यान ये कि देख बेटा उसमें बात क्या है. वैसे तो देखिए किसी आदमी के आगे बिस्किट रखने में आपको सोचना नहीं चाहिए कितने रखेंगे और कमर कितने खाता है. ये बहुत सस्ता कैलकुलेशन है. कुछ लोग इस बात का ध्यान रखते हैं. इसके आगे 5 है तो एक ही बेटा है. मुझे अपने घर से भूखे आते. ये सोचना नहीं चाहिए. मैं कहता हूँ टाइगर हो सस्ते वाला अगर कोई टेंशन है. लेकिन सब ये ना सोचे खा लेते हैं. क्योंकि देखिए कोई आदमी आपके घर में भोजन कर रहा है. ये परमात्मा की दया है मेरे साथ. इसलिए मैं आपको कहता हूँ सर परसेप्शन का खेल है साहब. Whenever you have a cup of coffee or lunch or dinner with someone, don't think who shall pay. The very fact that the other person was kind enough to spare his time to have lunch and dinner with you is his gift towards you, and you must appreciate it. The point is this. Please understand like this. It is this type of understanding that should go. This thought, you know, how much money I am spending, for what duration he will stay in my house, etc. are the things we should not cross away. As a human being, guided by selfish interest, these thoughts may cross us. But you have to make a conscious effort not to allow these thoughts to cross away. जैसे ऐसा नहीं है. एक बार होता है सर आदमी खुद ही थक जाता है. काम करते करते तो सोचता है यार नहीं चली जाए तो अच्छा है. आप समझ रहे हो ना. लेकिन मैं कह रहा हूं आप एफर्ट कीजिए कि वो थॉट ना जाए आपके दिमाग. ये तो एफर्ट कर सकता है. ये मतलब management of emotions, particularly negative to positive. And the fourth is emotional facilitation of thought. Emotional facilitation of thought. ये जो इमोशनल फैसिलिटेशन ऑफ थॉट है, ये भी मैंने आपको बताया था, टू यूज इमोशंस टू मेक योर थिंकिंग बेटर. दैट इज बिकॉज यू सी टू थिंक व्हाट यू नीड एनर्जी. फ्रॉम वेयर यू गेट दैट एनर्जी? फ्रॉम योर इमोशंस. नहीं फूड तो सर आप बहुत नीचे वाली बात कर रहे हैं. अब आपसे मैं पूछूं कि आपके पास सबसे बढ़िया ऑर्गन क्या है? आप बोल मेरा पेट है. वो नीचे दर्जे की बात करें. ये तो छोड़े पेट रहेंगे. ऐसी बात कर रहे हो. अरे सबसे बढ़िया ऑर्गन ऊपर है. ब्रेन. वो कह रहा है एनर्जी ऊपर से मिली. ये देखो क्योंकि ये फिजिकल से ऊपर नहीं सोच पा रहा. मेंटल भी नहीं खेल पा रही है. ये कह रहा है फिजिकल भी कुछ. ये सब ऐसा है इमोशन. और ये जो चारों फैक्टर है ये है इन वन सेल्फ एंड एज वेल एज इन अदर्स. है भैया. These are in oneself as well as others. तो नहीं सोचता. मेंटल में नहीं खेल पाएगी.
Yes, sir. ऐसा था इमोशन, और ये जो चारों फैक्टर है ये है इन वन सेल्फ एंड एज वेल एज इन अदर्स बोथ. These are in oneself as well as others. Now what we take up next is the last portion, and that is a brief history of emotional intelligence in governance and the utility of emotional intelligence in a brief history of emotional intelligence in governance and the utility of emotional intelligence in governance. एग्रीबलनेस का मतलब होता है कि मैं जो है आपके साथ एग्री करता हूँ. टेंथफुलनेस का मतलब है कि मैं जो है डिमांड क्या है उसके अनुसार एक्ट करूँ. जरूरी नहीं उसमें एग्रीमेंट हो जाएगा. भाई देखो ऐसे कोई इंटरकनेक्टेड नहीं. एग्रीबलनेस के लिए इम्पैथी चाहिए और टेंथफुलनेस के लिए, पर टेंथफुलनेस वाला आदमी बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मौके पे क्या डिपार्टमेंट है वो पता लगा ले और अकॉर्डिंग रिएक्ट कर ले. ये समझ गए? समझ गए मतलब आप थोड़े चालाक हो. आपको पता नहीं सिचुएशन यहाँ पे है. ये स्थान है, पूजा का स्थान है. वैसे तो मैं कभी स्टाइल जोड़ता नहीं, पर ये परमात्मा है. अगर मुझे वो नहीं करता करते मेरा जोड़ दो. ये तो टैक्टफुलनेस है. हमारे जितने नेता वो टैक्टफुलनेस में आइए, लेकिन एग्री वो थोड़ी है. टैक्टफुलनेस तो बहुत आई है वो. आप देखिए what the situation demands, they are able to act according to that, but they are not any empathy. Yeah. Brief history देखिए सर. हिस्ट्री स्टार्ट होती है फ्रॉम टू पीपल. F.W. Taylor and Max Weber. And both these people advocated the idea that man is a machine. Now, because man is a machine, emotions have no place in machine operation. Take the idea that man is a machine. Now, because man is a machine, emotions have no place in machine operation. There is no place for emotions in machine operation. But machine को emotion थोड़ी ना चाहिए. And therefore they promoted the idea of dehumanization of work. You must take human element out of the work. Dehumanization of work. And impersonalization of work. Because they believed that the presence of emotions in work settings will promote bias
and partisan behaviors. Yes, मतलब जब जब इमोशन होंगे तब तक बायस आएगा, इसलिए हमने इमोशन हटा देने बात से ये बात थी सर, इस तरह की इन्होंने बातें रखी क्योंकि तब ये माना जाता था कि इमोशन सारा बॉटल है इन इफेक्टिव जजमेंट, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इमोशन सारा अब बॉटल। F.W. Taylor gave scientific management principles which were based on the idea of elimination of time and motion waste. Time and motion waste. Eliminate time and waste of time and waste of motion. Well, using these ideas, Taylor was able to increase job productivity, no doubt. Productivity to increase होगी, but at the same time, it made the workers robotic and work mechanical. Workers robotic and work mechanical. Made the workers robotic and work mechanical. ठीक है सर? Which in longer run increased job dissatisfaction, which eventually brought the productivity down. Which eventually brought the productivity down. Productivity के रीजन क्योंकि आप डिसैटिस्फाई कर लोगों को। अब जैसे ये तो कुछ ऐसे है, मैं आपको बताऊं और बिल्कुल अल्टीमेट सीरियसनेस से 1 मिनट समय बिल्कुल इधर सुधर रहा हूं, इंफॉर्मेशन एंड मोर इंफॉर्मेशन। तो सर हो सकता है 12 क्लास 13 क्लास की जगह 11 क्लास में मतलब समाप्त हो जाए, लेकिन सर एवरी क्लास विल बी अ वेरी हैवी क्लास। आप देखिए ना, लर्निंग के अंदर पूरा जॉइनिंग होना चाहिए और फिर लर्निंग का जो मेजर यूज है वो है नॉट जस्ट फॉर पासिंग एग्जामिनेशन, which of course is the major aim, but the greater aim is application in real life। भाई आप केवल एग्जाम पास करो, उसके बाद कोई फायदा नहीं, वो चीजें चाहिए सर। तो इसलिए क्या है, ये प्रोडक्टिविटी गिविंग और वर्कर यू नो दे रिपोर्टेड व्हाट मोनोटोनी, बोर्डम एंड फैटिग। इन्होंने कहा यार लोग परेशान हुए काम में, मन ही नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, आज ही बैठ तो बैठ 100%। जब मोनोटोनी होगी तो क्रिएटिविटी खत्म। भाई क्रिएटिविटी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? स्पेस। अगर मैं आपकी स्पेस ही खत्म कर दूंगा तो क्रिएटिविटी कहां होगी? ये तो क्या है, टेलर ने क्या किया, रूटनाइजेशन। इसी रूटनाइजेशन ऑफ व्हाट, एक सोशियोलॉजी वाले जो लोग हैं ना, इसी में कहता हूं, देखो ऐसे हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, हमेशा वही कर सकता हूं। एक कॉन्सेप्ट है मैकडोनल्डाइजेशन, सोशियोलॉजी वाले जानते हो कॉन्सेप्ट। अब मैकडोनल्डाइजेशन में क्या है साहब, बर्गर बराबर साइज का है, टिक्की उतनी लगेगी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, लेकिन उससे क्या होता है, बर्गर को 2 मिनट में बन जाता है, लेकिन जिंदगी में पर्सनल टच खत्म हो जाता है। भाई नॉर्मल होटल में वेटर आ रहा है, आप देखिए ऐसे खड़ा आपको लगेगा कोई तो जब खाने लगाया ना वो क्या सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, हमारे पास ये दाल होती है बड़ी शानदार, मैं स्पेशल तड़का वाली लगा के रखूंगा आपके। अब आपको पता है क्यों है कि जब आप बता रहे साहब मैं स्पेशल तड़का दूंगा आपके। अब देखिए सर, यू फील टच्ड बाय दैट रिस्पांस। मैं तो ये कहते हैं कमेंट बेंच भी ऐसे बनाते हैं, आदमी जल जाए पीछे से। आपने बर्गर है पीठ में हो गया, जल्दी खाना खाओगे। तो जिंदगी में कई बार चीजें बहुत स्टैंडर्डाइज करने की वजह से भी पर्सनल टच हो जाता है, इसे कहते हैं मैकडोनल्डाइजेशन। पर्सनल टच हो गई है, टेलर ने यही काम किया ना, मैकडोनल्डाइजेशन किया, पर्सनल टच छुड़वा दिया। यू आर रोबोटिक लाइक अ रोबोट विल वर्क, हैंड अप, पिक अप द बॉटल, बैग, पुट इट इन द रैक। और सबको उतना ही आगे लेकर है, इसलिए ऐसे करके टेलर भाई पीट रहा है उसको।
आप समझे ना सर? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये टीचिंग में पॉसिबल। कई लोग ये कहते हैं साहब टीचिंग बड़ी बोरिंग रहती है, कई साल से आप एक समान पढ़ा रहे हो तो बोर भी होते। अरे समान तो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने वाले तो नया समान लेके आ गए। अरे देखिए आप ये देखिए ये खास बात है। अब आप देखिए उनका मेंटल स्ट्रक्चर अलग है, समझना अलग, सोच अलग, एक नए परिवेश में आ रहे हैं तो पढ़ाने में अलग तो लगेगा। आप समझिए बात। और हमारी नॉलेज में रिपीट होगी सर, तो कैसे कोई टीचर कह सकता है कि मुझे बोरिंग लग रहा है? देखिए बस इनपुट गलत है ना, वो मेंटल में नहीं चल रहा है। आगे बोले नहीं, अब उसका देखो इमोशनल इंटेलिजेंस समय के साथ होती है। आज आप जजमेंट कर सकते हैं, उस जमाने में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। आप ये समझिए ना, अब ऐसे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दशरथ जी से क्वेश्चन नहीं किया कि आप जो है अपनी वाइफ के कहने में जन्नत क्यों नहीं रहे, और सीता मैया उनके साथ जन्नत चली गई। आज की कोई और नहीं भाई से जन्नत जा रहा है। आप सोचो ना क्या वो प्रैक्टिस है इसके बारे में? कोई मानेगा, और उन जमाने में भी नहीं माना होगा। आप समझिए ये तो कॉन्टेक्स्ट है ना, चेंज हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस तो चेंज होती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो ये कहानी हमारी हो गई टेलर साहब की। अब आज दूसरे लेवल इन्होंने बात की ब्यूरोक्रेसी, and they said that in bureaucratic work there should not be any place for emotions. अब इन्होंने कहा साहब ऐसा होगा तो क्या होगा? There will be bureaucratic efficiency because no bias, no input, no partiality. If there are no emotions, then one must observe was rather than bureaucratic. And they said that in bureaucratic work, दूसरे लेवल इमोशनल इंटेलिजेंस तो चेंज होती है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो ये
आज की कोई वोट नहीं भाई उसे जनने जा रहा है। आप सोचो ना क्या वो कटी है इसके बारे में, वो भी मानेगा और तुम जमाने में भी नहीं माना होगा। आप समझिए, ये तो कॉन्टेक्स्ट है ना, चेंज हो जाता है साहब, इमोशनल इंटेलिजेंस भी चेंज होती है। प्लीज अंडरस्टैंड इट। तो ये कहानी हमारी हो गई टेलर साहब की। अब आप जनने जा रहा है। आप सोचो ना क्या वो कटी है इसके बारे में, वो भी मानेगा और तुम जमाने में भी नहीं माना होगा। आप समझिए, ये तो कॉन्टेक्स्ट है ना, चेंज हो जाता है साहब, इमोशनल इंटेलिजेंस भी चेंज होती है। प्लीज अंडरस्टैंड इट। तो ये कहानी हमारी हो गई टेलर साहब की। अब आप दूसरे जगह इन्होंने बात की ब्यूरोक्रेसी। तो ये कहानी हमारी हो गई टेलर साहब की। अब आप दूसरे जगह इन्होंने बात की ब्यूरोक्रेसी। And they said that in bureaucratic work, there should not be any place for emotions. अब इन्होंने कहा साहब ऐसा,
There should not be any place for emotions. अब इन्होंने कहा साहब गलत, इमोशनल इंटेलिजेंस तो चेंज होती है, प्लीज अंडरस्टैंड इट। तो ये कहानी हमारी हुई टेलर साहब की। अब आज दूसरे लेवल, इन्होंने बात की ब्यूरोक्रेसी, and they said that in bureaucratic work there should not be any place for emotions. अब इन्होंने कहा साहब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? There will be bureaucratic efficiency because no bias, no partiality. If there are no emotions, but what was observed was rather than bureaucratic efficiency, there resulted bureaucratic ये apathy. Efficiency तो आई नहीं, apathy जो हुआ। तो यार इन्होंने कहा पागल कहना कुछ ऐसा कर रहा है। उसके बाद नया एक प्रयोग हुआ, आप उसको बचाएं। इसके बाद कुछ नई डेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट था इनके नाम पे, इमोशंस। अब इन्होंने कहा साहब ऐसा होगा तो क्या होगा? There will be bureaucratic efficiency because no bias, no partiality. If there are no emotions, but what was observed was rather than bureaucratic efficiency, there resulted bureaucratic ये apathy. Efficiency तो आई नहीं, apathy होगा नहीं। तो यार इन्होंने कहा पागल कहना कुछ ऐसा कर रहा है। उसके बाद नया एक प्रयोग हुआ, आप उसको बचाएं। इसके बाद कुछ नई डेवलपमेंट, नया डेवलपमेंट था इनके नाम पे, Elton Mayer et al. The famous Hawthorne studies. Done in Western Electric Company, USA. Mayer is the father of his children and human relations movement in industry. मतलब बड़े बड़े वर्ड अगर सामने पड़ जाए एग्जाम में, देखो जी अंदर कोई नहीं पड़ता, ऊपर से देता और नंबर मिल जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आंसर राइटिंग में एक चीज का ध्यान रखना, हेडिंग बड़ा कैची होना चाहिए। अगर हेडिंग से सारी बातें एग्जिबिट हो रही हैं तो बहुत कम एग्जामिनर है जो अंदर उसके इंफॉर्मेशन को जांचेंगे। अगर हेडिंग उसको आइडिया लग गया, बच्चे ने हेडिंग सही लिखा है तो उसको आइडिया है कि भैया बात सही क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग। अब हुआ क्या था देखिए इस एक्सपेरिमेंट में, they wanted to study how working conditions influence productivity. That is what they wanted to study. कोई बात नहीं उसका। देखो जी नारायण मूर्ति जी क्यों बोल रहे हैं, भगवान जानता है 70 घंटे अगर आदमी काम करेगा तो फिर भगवान का प्यार हो जाएगा। अरे और काम भी करने। अब देखो जी एक बात होती है ना, मैं आपको बताऊं क्या है कि हिंदुस्तान में, मैं आपको बताता हूँ ये स्टेटमेंट क्यों हुआ मिस्टर नारायण मूर्ति ने, हिंदुस्तान में 70 घंटे काम कह दो तो भी वो 35 घंटे करेगा। चक्कर ये है, इसलिए वो कहते हैं 70 घंटे इसको ऑफिस में बिठाए रखो ताकि 35 को करे। ये है प्रॉब्लम। यहाँ का आदमी में सब देखिए आपको बताता हूँ, चाइना एक बड़ा ही ऑथोरिटेरियन कंट्री है। अमेरिका की चाइना से कोई दोस्ती मोहब्बत रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिकन इंडस्ट्री चाइनीज आती है क्योंकि सब जितने लोग हमारे भी जानकार चाइनीज इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुकात रहा है वो ये बोलते हैं एक तो चाइना में क्लियरेंस बड़ी जल्दी मिलते हैं और वर्क का जो है सब क्वालिटी कंट्रोल बहुत जबरदस्त है। देखिए आप एक गलत फहमी भी ना दिए, चाइनीज माल देखिए चाइनीज गुड्स आर एक्सेलेंट, दोज व्हिच कम टू इंडिया आर बेटर because we want those goods. It's not about the prejudice. It is not about Chinese goods being poor. It is our choice very cheap. Let us be very clear about it. China produces different goods for different countries. Chinese goods which go in US are quite different than the Chinese goods that come in India. And they train their people to work very hard. All industries whom I know who have had business with China tell me that what an average male worker in India does, more than that, twice the amount of work than him.
not present at all. So let us admit these things. These are very important things to be understood and appreciated. So don't just condemn China. I know, let me tell you, China is far, far ahead of India, both in terms of economy and in terms of technology and defense infrastructure also. They are far ahead of India. Let us be very, open in the admission of this fact. The only reason why war against India and China is never going to happen in future because they may grab or try to grab some territory of India, which actually is of no use to them as well. Okay, is because of the great trade relationship you have. It is the only reason. Otherwise, they have to another war. The point is this, and probably another reason, we are also now having nuclear arsenal. That could be another factor that may get out. That is the only reason, sir. They have more to lose if the war happens than us. We will lose people, they will lose infrastructure for which they already lost people to create it. The point is this. So, they wanted to study Anton Mayer et al. How working conditions influence productivity, and they took light intensity as independent variable. I. Independent variable is the variable which you manipulate. The outcome of this manipulation is dependent variable. DV. जो मैं मैनिपुलेट करता हूं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो उस मैनिपुलेशन का नतीजा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. समझ गए बात सर? नतीजा क्या था? This. So they wanted to study Anton Mayer et al. How working conditions influence productivity, and they took light intensity as independent variable. I. Independent variable is the variable which you manipulate. The outcome of this manipulation is dependent variable. DV. जो मैं manipulate करता हूं वो independent variable है. How working conditions influence productivity, and they took light intensity as independent variable. I. Independent variable is the variable which you manipulate. The outcome of this manipulation is dependent variable. DV. जो मैं मैनिपुलेट करता हूं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो उस मैनिपुलेशन का नतीजा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. समझ गए बात सर? नतीजा क्या था? प्रोडक्टिविटी. ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल. अब क्या था साहब? देखिए, लाइट इंटेंसिटी पुअर, प्रोडक्टिविटी लो. समझ आ रही बात? कोई दिक्कत नहीं. लाइट इंटेंसिटी इंप्रूव्ड, productivity also became better. ये भी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं? Light intensity further improved. Productivity also became further better. It's further better. Light intensity reached optimal. Productivity again got raised further. जहां तक तो बात समझ में आ रही है, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंप्रूव हो रही है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती जा रही है. पर अब कुछ नया कहानी. After having reached optimum, light intensity again was turned suboptimal, but productivity continued to rise. ये बात समझिए सर. देखिए यहां तक तो स्टोरी बिल्कुल क्लियर रहती है. जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बेटर हो रही थी, प्रोडक्टिविटी बेटर हो रही थी. लाइट इंटेंसिटी इज द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन. क्या वहां पर लाइटिंग कंडीशंस प्रॉपर है या नहीं है? दैट इज लाइट इंटेंसिटी. नहीं समझ में आ रहा? बेटा नहीं समझ में आया नहीं आ रहा. पहले मैंने 10 वाट का बल्ब जलाया, मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, प्रोडक्टिविटी कम थी. फिर 10 का मैंने 20 वाट किया, प्रोडक्टिविटी बेटर हो गई. 20 का 30 किया, बेटर हो गई. 30 से 50 किया, बेटर हो गई. 100 वाट का किया, बेस्ट हो गई. उसके बाद 100 के बाद दोबारा 50 पे जाया, प्रोडक्टिविटी फर्दर इंक्रीज हो रही है. 50 से 40 किया और इंक्रीज हो रही है. 40 से बिल्कुल 30 कर दिया और इंक्रीज हो रही है. वो पता कब इंक्रीज हुई? जब बिल्कुल पिच डार्क हो गया. Only when there was pitch dark, when you could not see anything, then only productivity decreased. अब इस एक्सपेरिमेंट को देखकर आप बेटा क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? क्या जवाब दिखाओगे इसके? सर देखो जी, अगर आप निकालना चाहो निकालो, वरना मैं तो आपके निचोड़ निकाल देंगे. इसका मतलब है कुछ ऐसा.
coming for 10 days holiday. You are working much again. She said, I'm so happy. Then you said, my captain has agreed to give me fortnight leave. She said, I'm so happy. Fortnight was increased to 1 month. She was further happy. 1 month to 5 months. Even more happy. Then came the time to leave. She was ecstatic. मैं enjoy. And she क्या हुआ? देखो मैं समय बढ़ा रहा था. तुम खुश होती जा रही थी. समझ में आया. अब जब मैं जाने के लिए आ गया हूँ, तुम और खुश हो. इसका मतलब क्या है? बेटा अपने जरूर से बताओ. इसका मतलब है कोई और है. यही बात है. और वो कोई और को कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. देखिए अब तुम मैं तो आपके निचोड़ निकाल देंगे. इसका मतलब है कुछ ऐसा. You told your sweetheart, I'm coming for 10 days holiday. You are working much again. She said, I'm so happy. Then you said, my captain has agreed to give me fortnight leave. She said, I'm so happy. Fortnight was increased to 1 month. She was further happy. 1 month to 5 months. Even more happy. Then came the time to leave. She was ecstatic. मैं enjoy. And she क्या हुआ? देखो मैं समय बढ़ा रहा था. तुम खुश होती जा रही थी. समझ में आया. अब जब मैं जाने के लिए आ गया हूँ, तुम और खुश हो. इसका मतलब क्या है? बेटा अपने जरूर से बताओ. इसका मतलब तुम खुश होती जा रही हो. समझ में आया. अब जब मैं जाने के लिए आ गया हूं, तुम और खुश हो. इसका मतलब क्या है? बेटा अपने जरूर से बताओ. इसका मतलब है कोई और है. यही बात है. और वो कोई और को कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. देखिए ये आईडी था. इस आईडी के मैनिपुलेशन का उपयोग करके समझ गए सवाल. लेकिन जब आईडी इंक्रीज हो रहा है, डिमी इंक्रीज हो रहा है, बात समझ में आ रही है. लेकिन एक टाइम के बाद आईडी हो गया कम और डिमी जा रहा है बढ़. तो इसका मतलब रिश्ते में प्रोडक्टिविटी वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट इंटेंसिटी अलोन. देयर मस्ट हैव बीन अदर फैक्टर्स आल्सो. एंड व्हाट वर दोस फैक्टर्स? दोस फैक्टर्स वर दिस वाज फैक्टर बीइंग ऑब्जर्व्ड. मुझे कोई दिख रहा है. वो कैसा? देख समझना. Why is this amazing experiment? Workers were a small group. Small group is characterized by we people in small group have very trusting relationships with one another. And the wicked movie. Interestingly, this small group also had great relationship with their supervisor. And supervisor had told them that someone from other organization has come to see them work. देखो भाई आप अपने घर में सोचो ना, जब कोई रिश्तेदार आने वाला होता है उस दिन घर की साफ सफाई ज्यादा होती नहीं होती. आदमी करता है साफ नॉर्मल में उसको पता नहीं कपड़े बताइए ना, ये गलत बात है. पर नॉर्मली घर की साफ सफाई ज्यादा होती है. आप समझिए किसी से मिलने जा रहा पहली बार, बढ़िया कपड़े पहन के जाओगे, बातें भी अच्छी करोगे. आपकी आदत है हाथ धोने के बाद आप सब का इस्तेमाल करते हो. उस दिन कसम खा दी as you are how to utter it. Look at that. Why? Because you want to create favorable impression. सर देखिए गलती किस वक्त था. तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिष्ठा गिरने देंगे. लोग बाहर से आगे बढ़ेंगे. उनके आगे चाहे कितनी तकलीफ हो, प्रोडक्शन को कम नहीं करेंगे. दैट वाज इट. समझ गए मतलब? तो जिंदगी में क्या है इससे पता चल रहा है. It is not about working conditions alone. Most importantly, it is about the relationship between the members in the group. Like
relationship. Please understand. Governance is also a relationship between those who govern and those who are governed. And if this relationship has weak feeling, people will be ready to undergo any trouble. They are ready to go under any trouble, but not display any resentment and work committedly for the growth of the nation. The point is this. For the fundamentals of the importance of human relations in the industry. So governance is also a relationship. Human relationships are DNA of governance. Human relationships are DNA of governance. All good governance is about how skillfully government can manage the relationship between them and those whom they govern. And for that, element of trust needs to be generated. The point is this. So it's not about working conditions. You can see this way, sir. Today we have, lives of all of us, more number of gadgets, more, I would say, quality lifestyle, different variety of cuisines. But we are more unhappy than our parents. This is called as paradox of affluence. Paradox of affluence. People are affluent, but people are unhappy. The point is that because the trust is missing. When that trust is missing, there's a problem. You see, ultimately courts have to intervene and tell that you see those who give you money, please disclose the detail about it. See the irony? This should be from the side of the government itself. But that is what they will never do because it suits them. It suits their what is called as electoral objectives. This is the idea. So ultimately, this study highlighted to us the importance of valuing human relationships. And for that, you need emotional intelligence. So it highlighted that all administrators should be one with high emotional intelligence. This is what is highlighted. Now, तो relationship का शुरू से ना optimal value क्या करने का करना है? भाई small group से ही relationship start हो गया ना? वो optimal के बाद कितना ऐसा कौन सा रिश्ता रहेगा यार? नहीं ना डबल रिश्ता. इसके बाद थोड़ा डबल होता है. अरे घर के मेंबर अगर आपस में लड़ जाए तो आप कहोगे कि मेरा रिश्ता आ जाएगा मैं क्या नहीं? मैं तो दिमाग को क्या छोड़ जाके ना बढ़ाया तेरे रिश्ता को वो भी देखिए मेरा ये थोड़ी होता है. बीइंग ऑब्जर्व करने को ट्रिगर का काम किया. रिलेशनशिप तो पहले था और रिलेशनशिप क्यों बन पाया? क्योंकि स्मॉल ग्रुप था और वी फील लाइक ये मतलब आई बोले तो मैं यार ऐसी बात कर रहे हैं डार्लिंग. आप देखो ये कह रहा पहले इंटरप्रेट करते यार रातों रात थोड़ी ना हो जाएगी फीलिंग. कल रात की मेरा सुबह की फीलिंग ऐसे थोड़ी ना होता है. ये तो कई दिनों रात का कमाल है कि फीलिंग दबा हो रही है. ये थोड़ी ना सर कि फीलिंग ऐसी होगी तब मिले फीलिंग नहीं तो है भी नहीं ऐसा नहीं होगा. लंबा समय के साथ काम करने के बाद फीलिंग नहीं ये नहीं है सर. और इस फीलिंग में वो सुपरवाइजर को नहीं बना है. उसके बाद बिना नहीं कर सकते. अब सुपरवाइजर कौन है? एक तरह से सरकार है. लग आता है मैं ये मतलब है समझ गए आप? This is why human relation movement. The point is this. So now we embark upon the last part. What is the utility of emotional intelligence and governance through life development? Point number 1. The display of point number 1. The display of emotional intelligence. The point is this. So now we embark upon the last part. What is the utility of emotional intelligence and governance through life development? Point number 1. The display of point number 1. The display of emotional intelligence by the leaders and administrators create more friendly work climate which in turn enhances organizational performance and productivity. Which in turn enhances organizational performance and productivity. Second, the display of emotional intelligence by leaders and organizational performance and productivity
which in turn enhances organizational performance and productivity. Second, the display of emotional intelligence by leaders and public functionaries reduces role ambiguity, role conflict, and as well as interpersonal, intra-group and intergroup conflicts. Next point. Display of emotional intelligence by leaders enhances group dynamics and intergroup conflicts. Next point. Display of emotional intelligence by leaders enhances group dynamics in the terms of cooperation, collaboration, and building bonds. Dynamics in the terms of cooperation, collaboration, and building bonds. Next, emotional intelligence improves social capital, which refers to the bonds of mutual respect and care. Emotional intelligence improves social capital, which refers to the bonds of mutual respect and care. Mutual respect and care among the members of the collective. Next point. Leaders with emotional intelligence generate more effective communication structures. Within the organization. Which in turn facilitates the creation of more efficient organizational climate. Next, leaders with emotional intelligence can easily become a change catalyst and are able to lose win-win model, WIN, -win model for negotiations. Next point, leaders with emotional intelligence can do better time management, multitasking, and look at the things from holistic perspective. And the last point we write,
leaders with emotional intelligence and look at the things from holistic perspective. Look at the things from holistic perspective. And the last point you can write. Leaders with emotional intelligence can make sense of ambiguous and contradictory messages. Ambiguous and contradictory messages, and recognize the importance of different elements. Recognize the importance of different elements in the situation. So this completes our understanding of emotional intelligence, but before I say goodbye to you, this is one word, one term which you need to know, and different importance of, and recognize the importance of different elements. Recognize the importance of different elements in the situation. So this completes our understanding of emotional intelligence, but before I say goodbye to you, this is one word, one term with the importance of, and recognize the importance of different elements. Recognize the importance of different elements in the situation. So this completes our understanding of emotional intelligence, but before I say goodbye to you, this is one word, one term which you need to know, and that is, sometimes we use the word emotional intelligence, and then there is another word, emotional quotient. वैसे तो देखोगे इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आपके एग्जाम में नहीं होंगे, पर वैसे आपको मैं समझा देता हूं मतलब क्या है. When we talk of emotional intelligence, it is actually some kind of innate ability. और जो इमोशनल क्वेश्चन है, that is the measure of the degree of emotional intelligence reflected in behavior. Yes, sir. And for emotional intelligence to be nearly completely reflected in behavior, what is important? Is this. What is the critical determinant for EI to be manifested in EQ? Socialization. If this socialization is positive, then there is very high likelihood that whatever innate capability the person had gets reflected in his behavior. समझिए ना आपके positive socialization की बात. हैं बहुत ज़्यादा डरे नहीं दिखता पेज का है. नहीं वहाँ वो उसमें तो नहीं था, मंगा दिए. वो अलग चीज़ थी, मम्मा समझ नहीं आई. किताबें थी. What is the critical determinant for EI to be manifested in EQ? Socialization. If this socialization is positive, then there is very high likelihood that whatever innate capability the person had gets reflected in his behavior. But there are positive socialization is right. If socialization is negative, then it could be that a person has high emotional intelligence, but his EQ display is poor. क्योंकि बच्चे का confidence poor है ना, socialization poor है, उसका EQ में restriction poor. Yes, this is the understanding between the two. In present times, what we measure is EQ. Because it is the EQ that is the reflection of the extent to which EI has been shown in behavior. The point is, so on this note, I end, and I wish you all the best, and a very successful journey, and I hope you will make good use of most of it. Thank you.
प्रिंट आउट निकाला होगा ना? दिनेश भैया, भैया मेरे एग्स प्लीज फ्राई कर देना।
आ गया मैं